हो गया ना? हो गया? अब ये दबाना याद रखना। अच्छा 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 जवाब। देखिए ना, बस 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 Very good morning. Very good morning. Very, very good morning to one and all. I request all to please keep your phone on silent mode. We will begin shortly.
Recording in progress. We warmly welcome our guests. Please be seated. A very good morning to this August assembly. In honor of Sri Aurobindo's 150th birth anniversary, Indus Institute of Management Studies, IIMS, Indus University, along with Gujarat Sahitya Academy-Gandhinagar, today takes pride and privilege to host National Conference on Thoughts of Sri Aurobindo on Education and Nationality. We have with us our dignitaries, Sri Ashwini Kumar, IAS Principal Secretary, Sports, Youth and Cultural Activities Department, Gujarat Government, who will be joining us on a virtual mode. Dr. Ritu Bhandari and Dr. Nagesh Bhandari, Presidential Secretariat, Indus University. Professor Dr. Sandeep Chakravarti, Executive President, Indus University. Professor Dr. Ved Vyas Dwivedi, Executive Vice President, Indus University. Dr. R.K. Singh, Registrar, Indus University. And Professor Dr. Jayendra Singh Jadhav, Member Secretary, Gujarat Sahitya Academy, Gandhinagar. I extend a warm welcome to each one of you. I also extend a gracious welcome to our dignitaries of the dais, directors, HODs, academicians from all over India who are here with us, and many more who have joined us on an online mode. Guests from industry, faculty members and staff from Indus University, media representatives, and dear students. We are here today to learn, imbibe, and empower ourselves with the ideology of Sri Aurobindo. Let us begin this noble initiative by lighting the lamp and invoking the blessings of Goddess Saraswati. I request all the esteemed dignitaries on the dais to please join us for lighting the lamp. Request all to please stand and take a prayerful posture. Thank you. We have with us Dr. Sandeep Chakravarti,
Executive President, Indus University. A brief introduction of his, a PhD in Power Systems, ME in Software Engineering from Birla Institute of Technology, Mestra, and gold medalist in BE Electrical and Electronics Engineering. Sir is also an able academician and administrator. I call upon Dr. Chakravarti to deliver the welcome. Thank you, ma'am. Dignitaries, our Honorable Presidential Secretary, Dr. Nationality and Dr. Madam, Dr. Jayendra Singh, CJ from Gujarat Sahitya Academy, Registrar Dr. R.K. Singh, Executive Vice President, Professor Dr. Ji, all the dignitaries of the dais, Mr. Rashmi Kumar Ji, Principal Secretary, Government of Gujarat, who is joining us virtually. I would say all the invitees, all those who have participated and is presenting papers out here, faculty, staff members, all other guests who are joining us today, and my dear students. And I also welcome the persons from press and media. It's really an honor today for us to host this particular event on the birth anniversary of Sri Aurobindo and the national conference on the theme Thoughts of Sri Aurobindo on Education and Nationality. It's also an honor that Gujarat Sahitya Academy has jointly given this particular opportunity to host this particular conference here in the venue of Indus University, and they have participated with us, or they have joined hands with us. So on that particular occasion, I would like to extend my sincere thanks and gratitude to Jayendra for giving us this particular opportunity and making us a proud member of yours and jointly giving us this particular platform to host this and to see and to propagate the views and the philosophy of Sri Aurobindo to the young minds who are sitting out here and also those who are joining us virtually through the media of YouTube. It has always been the aim and focus of the university to bring before the youth, to bring before the students, to bring before the nation the rich heritage, culture, and the value system that India and the Indians have. And so this, we have been doing it from way back in 2015 through our Center for Indian Studies under the Indus Institute of Special Studies. In fact, it would be wrong to say we are doing it from 2015. We are doing it way before 2015, right from 2004, under the various, I would say, heads. We have been doing it under the head of Rudre Academy in 2004 and then in 2009 with the initiative of India Inspires and from 2015 from the Center for Indian Studies. So when it was not openly spoken about, when it was not that easy to bring this particular thought process, when it was not that important, or when it was not spoken, I would say, in the education line, right from that time, the visionary leaders of Indus University has been working in this particular platform and has been trying and seeing how this particular thought process, how this particular rich cultural values, ethos that the Indians and the Indian civilization has, can be made aware and can be made, can be brought in front of the students and to the young minds. And that shows the visionary leadership that Indus University holds. They have been working on articles, they have been working on the videography, they have been working on the biography, they have been working on documentary, they have been taking up courses. And if you visit the site of the Center for Indian Studies, we are proud to say that as of now, you will be seeing a lot of online courses being floated on these particular various aspects. We have videos of eminent speakers and scholars talking about this. We also have articles, we also are participating and educating the young minds, and not only the young minds, but also those particular people in similar thought process. We are trying to handle them and bring them to this particular level, or try to enrich them with whatever we have learned through various programs in form of a faculty development program or in form of a seminars, workshop.
And therefore, it is an honor for us that today we are here again to add one more such initiative with this particular practice, like a conference of this particular process. I would also like to welcome all those who have shown interest and all those like-minded people who have a similar interest in this. And I'm sure that in this particular span of the entire day events that we have, starting from the keynote speaker to the various plenary events and the presentations, the day will end with much more fulfilling and I would say satisfying thoughts to all of you. A lot of pain has been taken care by the Institute of Management Studies of Indus University in organizing this particular conference. You can also see, I take this particular opportunity and the platform to also see or to also tell you or to enlighten you about the journey that Indus University has taken in this particular short span of time, which will give you an idea about the energetic and the enthusiastic team members that we have, and the reason why we are so much proud in hosting this and welcoming all those particular dignitaries who have associated with us from different corners, not only from educational institutes, but from government sectors, government offices, as well as from industry experts. We have started our journey way back. If I talk about the vision of the technical education was dreamt of by our presidential secretariat way back in 2006 when we started our only one institute, that is the Indus Institute of Technology and Engineering, and 6 departments with a strength of 60 each. So if you see today, as we stand in 2023, we have 10 institutes, 101 programs, and the strength have manifold increase from 60 to around 6,000 plus. So that has been a journey that speaks about the visionary leadership of both this particular presidential secretariat present with us, Dr. Nagesh Bhandari and Dr. Bhandari ma'am. That speaks about the team spirit that Indus University have, that speaks about the dedication, that speaks about the commitment, that speaks about the trust and the faith that any one of you holding any such functions, any such programs can have on us, and we are duty bound to take it to the conclusion with the right spirit. With this particular commitment, with this particular statement, I welcome all of you to this particular conference, and I wish all of you a very enriching outcome at the end of the day. And I'm sure that with all these particular efforts that our team of IIMS along with the various members of Indus University we have taken up out here will be really inspiring you, and you will be really remembering this particular day as a memorable day in your times to come. I wish all the team members the very best, and I wish a grand success to this particular event. I once more thank all those particular dignitaries who have come out here, have taken up this particular time from their busy schedule and have been a part of this particular event. Thank you for visiting Indus University. Thank you for being a part of this particular program, and I wish and I sincerely hope that you will give us many such options in future times to come, so as to collaborate in different forms with all of you in different forms, and please be with us and take the benefit of the Center for Indian Studies we have. We are ready. We are here to share with us all that we have got, all that we have learned, and we are here to give this particular benefit of thought to all those who want it. And we want to take this particular journey ahead of the Center for Indian Studies through you, through the people, through to the masses, so that at the end we can give certain things to the society, through the society to the state of Gujarat, and through the state of Gujarat to the nation building. With this, I welcome all of you once more, and I congratulate all the members who have joined us for this particular conference. Thank you very much. Thank you, Dr. Sandeep Chakravarti, for the wonderful insight. Now we move on to the felicitation of guests. I take the pleasure of introducing Dr. Ritu Bhandari, Presidential Secretariat, Indus University. Having a keen interest in human psychology, ma'am has studied and is trained in management. She is a mentor for each family member of Indus University, has initiated high moral measures for all. She believes in building high standard of education and discipline to foster our country's quality and cultural life.
Her academic profile, rich experience, and personal attributes offer 360 degrees development to both professionals and students. I request Professor Dr. Sandeep Chakravarti, Executive President, Indus University, to felicitate Dr. Ritu Bhandari, Presidential Secretariat, Indus University, with a sampling. Thank you, ma'am and sir. Let me introduce our. Okay. We will give a small pause to the felicitation ceremony as we have been joined by our guests. And now that's a very much awaited moment for us. Sri Ashwini Kumarji, IAS Principal Secretary, Sports, Youth and Cultural Activities Department, Government of Gujarat, has joined us online. He was unable to join due to last minute commitments. So he's there online. And sir. Everybody, yeah, good morning. Yeah. Awaaz chalu chhe ne? Yes. Yeah, good morning. I can hear you very clearly. Yeah. Very good morning, sir. Sir, we would like you to address our gathering. All the dignitaries on the dais and off the dais, this is indeed my privilege and pleasure to address this august gathering, which has been convened by Indus University, one of the leading institute on the study of Indian values, Indian ethos, and I would like to congratulate you on organizing this workshop. The nation is celebrating 150th anniversary of Maharshi Aurobindo, and the nation is also celebrating 75th year of its independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav. As we all know, Sri Aurobindo was a thinker, a philosopher, a spiritual person, as well as a nationalist. His life can be divided into 3-4 major time periods. One, when he was studying and he was kind of initiated into Western thinking, Western thoughts. Second, when he came back, mostly he spent his time in Vadodara for about 13 years or so. He contributed to the development of the state also. And the Gujarat state got enriched by thoughts of Sri Aurobindo. He was a very, very nationalist kind of person through his writings. As we all know, he contributed to the freedom movement during that time between 1893 to 1906, I think. Then he moved to Kolkata for some time, and then a turn came to his life when he totally shifted towards spirituality. But that was not one go, means he was shifting between nationalism and spiritual realm, and his life was full of love and kind of affection for the nation. He visualized nation not as a part of land or maybe a geographical phenomena, but as a living being, Ma Bharti, Ma Bharat Mata. And we can learn a lot from his teachings, from what he has written. And I'm happy indeed that in Gujarat, where Sri Aurobindo spent a considerable period of his life, and when he was very active and actively writing on freedom movement, actively writing against the British colonial rule, and was experimenting with some religious and spiritual things also, which later on developed during his stay at Pondicherry. The conference is being organized in Gujarat, the National Conference, to commemorate his 150th birth anniversary as part of the initiative
taken by Ministry of Culture under the leadership of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi. So I wish all the success to the national conference. I understand that so many dignitaries are going to participate from across the country in this national conference. They will certainly contribute and they will certainly deliberate on the thinking and philosophy of Sri Aurobindo. So I wish all the success to the conference, and I thank you once again for inviting me as one of the speakers in the conference. I'm extremely sorry that I have not been able to join you in person because of the commitments. March ending commitments are there. Vidhan Sabha is also in session, and Madhavpur Mela, which celebrates the kind of integration of the country between Gujarat and northeastern states, that is also going to commence from 30th of March. So due to all these things, I am not able to join you personally, but I wish you all the success and all the good luck for the success of the conference. Thank you so much for listening to me patiently. Thank you. Thank you. Thank you, Ashwini Kumarji. We understand that you could not join us, but in the near future, we would love to see you at Indus University and address us. Thank you very much for the insights on Sri Aurobindo ji. And I'm sure this will motivate all our participants, especially our students. Thank you very much, sir. We continue. We continue with the felicitation ceremony. Let me introduce our Presidential Secretary, Dr. Nagesh Bhandari ji. Dr. Nagesh Bhandari is a famous orthopedic spine surgeon having spine surgery fellowship from Germany. Sir is a sportsperson too, with expertise in shooting, horse riding, and karate. He has keen interest in aviation and is also a trained pilot. Dr. Bhandari has contributed in the field of research at national and international levels. He is actively involved in various educational activities as trustee at Sanskar Dham and founder director at Ahmedabad Aviation Aeronautics Limited Flying Training Institute, Western India Institute of Aeronautics. I request Professor Dr. Sandeep Chakravarti, Executive President, Indus University, to felicitate Honorable Presidential Secretary Dr. Nagesh Bhandari ji with a sapling. Thank you. I request Professor Dr. R.K. Singh, Registrar, Indus University, and Conference Director of today's National Conference, to welcome Professor Dr. Sandeep Chakravarti, Executive President, Indus University, to the faculty. Thank you. I also request Professor Dr. R.K. Singh, Registrar, Indus University, to welcome Professor Dr. Ved Vyas Dwivedi, sir, Executive Vice President, Indus University, with a sapling. Ved Vyas Dwivedi ji is an epitome of research. Sir is an avid researcher and a regular research reviewer with contribution of several research papers in national and international journals. Welcome, sir. I request Dr. R.K. Shah, Conference Secretary of today's National Conference, to welcome Dr. R.K. Singh, sir. Dr. R.K. Singh, sir, has around 3 decades of rich experience and has held top management and administrative positions. We welcome you, sir. I also request Professor Dr. R.K. Shah, Conference Secretary of today's National Conference, to felicitate Professor Dr. Jain Singh Tadar, Member Secretary, Gujarat Sahitya Academy, with a memento and a shirt. Thank you, sir. We also have dignitaries of the dais
who have graced this occasion with their presence. We would like to welcome each one of them. I request Dr. R.K. Shah, Conference Secretary of today's National Conference, Indus University, to do the honors. We welcome Principal Dr. P.R. Patel, OSD Admin Finance. Okay. Dr. Parth Modi ji, OSD IT. Okay. Dr. Vivek Joshi, OSD Shore. Dr. Mansi Ma'am, Joint CEO Scope. Dr. Hemendra Shah, State Nodal Officer, AISHE. Dr. Mahesh Patel, OSD FDP. Dr. Parth Raval, OSD. Dr. Vimal Prajapati, Deputy Director. Dr. Hina Ben Patel, from Mahila Arts College, Kadi. Thank you, Dr. Adesha. Now, I request Dr. Neerav Verma, HOD, IIMS, Indus Institute of Management Studies, to do the honor. Dr. K.V. Parmar, Government Arts Science College, Bavla. Dr. Soda sir. Okay. Dr. Vinod Prajapati ji, Gujarat Commerce College. Dr. Bhalodia sir, Gujarat Arts and Commerce College. Okay. Dr. Praveen Patel, yes. Government College. Principal Dr. Sam Matthew, from Arts and Commerce College, Ahmedabad. Dr. Sagar Dave, Government College, Meerut. Dharmesh Chandra-ji, OSD Gujarat University. Dr. K.V. Vyas, Vice Chancellor, Sabarmati University. We welcome you, sir. Sir is the keynote speaker for the next session too. Dr. Jyoti Ma'am from Sabarmati University. Thank you, Dr. Neerav Verma, sir. Next, I would like to request Dr. Ishmael Singh ji, Director, IITE, Indus University, to do the honors, please. Dr. Kalikar sir from Karnavati University. Dr. K.R.K. GTU, Gujarat Technological University. Dr. Pankaj Rai Patel from Gujarat Technological University.
Professor Sharad Joshi, Chairman, Aurobindo Center, Vadodara. Narayan Madhuji, Additional Commissioner. Dr. Girish Thakurji. We welcome you. Mahanto Sarji. Okay. Sri Vaghela Ji, President, Neelkant International School, Saran. Thank you very much, Teresa. Thank you, Dr. Thank you, Arkesha sir. Now I call upon Professor Dr. Jayendra Singh Jadavji, Member Secretary, Gujarat Sahitya Academy-Gandhinagar, and Conference Director of today's National Conference, to speak on the concept of today's National Conference. Sir, please. संपृक्तौ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वर. Respected Dr. Nagesh Bhandari ji, Dr. Ritu Bhandari ji, President Secretary of Indus University, our Principal Secretary would have left this meeting before some few minutes, Sri Ashwini Kumar ji, Sri Vedvyas ji, Sri R.K. Singh Sarak, Sri R.K. Shah sir, Sharad Bhai Joshi ji, गिरीश ठाकर जी एवं शिक्षा विभाग से हमारे यहाँ पधारे सब अधिकारीगण, हमारे मित्रगण. भंडारी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग की मीटिंग जो होती है तब भी इतने ऑर्गेनाइजर्स एक साथ वहाँ उपस्थित नहीं होते. इतने ऑफिसर सब यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं और शिक्षा के लोग कुछ सीखने के लिए और सुनने के लिए आए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है. तो आज के कॉन्फ्रेंस की उपलब्धि ये है कि शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण हमारे सम्मुख उपस्थित हैं. श्री शरद भाई जोशी जी बहुत बड़ी ऑथोरिटी है, वो अरबिंदो सोसाइटी बड़ौदा के प्रेसिडेंट है. गिरीश ठाकर जी भी हमारे सामने बहुत बड़े संस्कृत के स्कॉलर हैं, न ही केवल गुजरात में लेकिन पूरे भारत में उनका नाम है. ऐसे हमें विद्वान वक्ता आज हमें प्राप्त हुए हैं. पहले तो मैं इंडस यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ. पहले भी मैं 2-3 बार यहाँ पे आया हूँ. यहाँ का वातावरण देखकर बहुत आनंद लगता है. एक बहुत अच्छे पश्चिमी अमेरिकन चिंतक थे जॉन मैक्सवेल, उनका एक विधान है यूनिवर्सिटी के बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगता है. उन्होंने लिखा है कि देयर इज नथिंग ब्यूटीफुल इन दिस वर्ल्ड अदर देन यूनिवर्सिटी. इस विश्व में विश्वविद्यालय से अधिक कोई दूसरी सुंदर चीज मुझे लगती ही नहीं है. तो जब इंडस यूनिवर्सिटी में आते हैं तब हमें ये अनुभूति होती है कि इस विश्व में इस विश्वविद्यालय से अधिक कोई सुंदर चीज हो ही नहीं सकती. इतना अच्छा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट यहाँ पे खड़ा किया गया है. भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान प्रणाली, उसको बच्चों के अंदर मूल्यों का सृजन करने के लिए, उनमें समाहित करने के लिए यह विश्वविद्यालय अविरत प्रयासरत है. वो जानकर हमें बहुत आनंद होता है. हमारे साथ के भी व्यास साहब भी हैं, वो भी बहुत अच्छे चिंतक है, शिक्षाविद है. उनका भी मैं साहित्य अकेडमी और इंडस यूनिवर्सिटी की ओर से स्वागत करता हूँ. संस्कृत में एक श्लोक है कि अमंत्रम अक्षरो नास्ति नास्ति मूलो अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक. अमंत्रम अक्षरो नास्ति,
कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है कि जिसमें मंत्र होने की ताकत नहीं। अमंत्रम अक्षरो नास्ति नास्ति मूलो अनौषधम। कोई भी मूल ऐसा नहीं है वनस्पति का कि जिसमें औषध होने की ताकत नहीं है। योग्य पुरुषो नास्ति। इस दुनिया में कोई भी आदमी बेकार नहीं है, सब काम के हैं। कुछ न कुछ तो किसी में है, लेकिन योजक तत्र दुर्लभ। योजक इनिशिएट करने वाला दुर्लभ होता है। इंडस यूनिवर्सिटी जब शाह साहब हमारे साथ बात करते हैं, हर रोज नए नए कार्यक्रम करते हैं। मुझे लगता है ठाकर साहब कि आप संस्कृत वाले इस श्लोक में सुधार करें और इसमें रखिए योजक अत्र सुलभ। ऐसे योजक यहाँ पे हैं कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए, भारतीय मूल्यों के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए वो काम करने के लिए आगे आए हैं। इसलिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हम इंडस यूनिवर्सिटी के साथ महान तपस्वी, साधक, योगी, क्रांतिकारी, क्या क्या कहे श्री अरविंद के आगे क्या विशेषण लगा। तो गुजराती में एक बहुत अच्छा शेर है महेश भाई कि विशेषणोना वंशे तारी आगळ पाछळ। विशेषणोना वंश પણ એ વંશી એ રૂડા નથી લાગતા। એ તો એવી પર્સનાલિટી છે કે એમના લીધે વિશેષણો શોભી ઉઠે છે। तो श्री अरविंद को क्रांतिकारी कहें, उनको साहित्यकार कहें, उनको फिलोसोफर कहें, कि उनको मीमांसक कहें, उनको कवि कहें, उनको शिक्षाविद कहें, उनको राजनीतिज्ञ कहें, एक महान तपस्वी साधक कहें, क्या क्या कहें। एक ही जीवन में कितना कितने कार्य उन्होंने किए। I have not seen such a multifaceted personality across world. इतने मल्टीफेसिटेड पर्सनालिटी वो साहित्य में गए, तो साहित्य में भी उत्तम कविताएं उन्होंने। यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस रखने का पहला जो आयाम है वो इसलिए रचा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी अभी आई है। जब शाह साहब यहाँ पे आए सरकार में से निवृत्त होकर, तो उनको था निवृत्त नहीं होना है, प्रवृत्त ही रहना है। तो यहाँ पे इंडस यूनिवर्सिटी में आए, तब से वो मुझे बोल रहे थे कि इंडस के लिए हमें कुछ करना है, आप सोचिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो वो एक बार बैठने के लिए आए थे उसी विषय में से। हमको तो सरकार में से मैंडेट था कि श्री अरविंदो के जीवन के ऊपर आपको कुछ करना है और युवाओं के सम्मुख श्री अरविंद को हम कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। आज ये 115 बर्थ एनिवर्सरी है। देखिए 150 सालों के बाद भी श्री अरविंद इतने ही रिलेवेंट हैं वो तब थे, इतने ही उनके जो विचार है वो नूतन है। और आप देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये अमृत काल चल रहा है, और अमृत काल ऐसे ही नहीं चल रहा। देखिए 150वीं जन्म जयंती अभी चल रही है, अभी आजादी के 75 साल हुए हैं, अभी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती हम मना रहे हैं। ऐसे बहुत सारे संयोग आज बने हैं। तो इसलिए मैं प्रारंभ में ही कहना चाहता हूं कि श्री अरविंद ने जो स्वप्न देखा था कि भारत माता जगत जननी बनेगी, भारत माता विश्व गुरु बनेगी, यह स्वप्न अभी साकार होने के लिए जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि 1947 में जब भारत आजाद हुआ, श्री अरविंद का जन्मदिन भी 15 अगस्त है, 15 अगस्त 1872, और भारत भी 15 अगस्त को ही स्वतंत्र हुआ। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तब ऑल इंडिया रेडियो को उन्होंने संदेश दिया था, और उस संदेश में कहा था कि भारत का 15 अगस्त को आजाद होना और मेरा जन्मदिन 15 अगस्त होना एक संयोग मात्र नहीं है, लेकिन ईश्वर ने मेरे कार्य पर मोहर दी है कि हम जो कर रहे हैं वो सही रास्ते पर जा रहे हैं। हम जो विराट दिव्य कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर ईश्वर ने मोहर मारी, ऐसा उन्होंने तब कहा था। आज भी ये संयोग है कि 150, 75, 125 ना, ये संयोग नहीं है। हमें भी लगता है कि विधाता की कोई बहुत बड़ी योजना है कि 2047 जब भारत अपने स्वतंत्रता के 100 साल मना रहा होगा, तब वो विश्व गुरु के शिखर पर विराजमान होगा। तो यह संकल्प उन्होंने जो सोचा था वो उसको पुनरुच्चार करने के लिए यह कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। शिक्षा में उनका दर्शन बहुत गहराई वाला है, आज भी इतना रिलेवेंट है। उन्होंने जो जो लिखा अगर वो शिक्षा में समाहित किया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा दिव्यतम वातावरण शिक्षा के अंदर हम सृजित कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
आई है, उसमें श्री अरविंद के बहुत सारे विचारों को समाहित किया गया है। हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि स्वतंत्र भारत में पहली ऐसी शिक्षा नीति है कि जो भारत केंद्रित शिक्षा नीति। आप सब युवा यहाँ उपस्थित है। जब कोई युवाओं को, मैं भी प्राध्यापक हूँ, तो मैं जब युवाओं को पूछता हूँ कि एमबीए करके क्या करोगे, एमबीए करके, एमकॉम करके कहाँ जाओगे, कहते हैं कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, ब्रिटेन जाना है। अब जाइए, कोई बात नहीं। श्री अरविंद तो जब 7 साल के थे तभी वो इंग्लैंड चले गए थे। उनके पिताजी कहते थे कि उनके ऊपर भारतीय संस्कृति का प्रभाव न पड़े, उसका बराबर ध्यान रखा जाए। उनको इंग्लैंड भेजा गया। एक पादरी थे ड्रूएट नाम के, उनके वहां उन्होंने पढ़ाई की। लेकिन देखिए, कैम्ब्रिज में पढ़ने के बाद भी श्री अरविंद को कौन पुकार रहा है? श्री अरविंद कहते हैं मुझे मातृभूमि पुकार रही है। तो ये मातृभूमि पुकारने की जो बात है, कैम्ब्रिज में पढ़ने के बाद भी, अगर देखो कैम्ब्रिज में वो पढ़े थे, इतने स्कॉलर थे कि 3-3 कक्षाओं में एक साथ उनको प्रमोशन दिया गया था। स्कॉलरशिप उनको मिलती थी कैम्ब्रिज की, इतने स्कॉलर थे। जब उन्होंने एक निबंध लिखा था तो उसके विषय में इंग्लैंड के बहुत बड़े साहित्यकार और प्रोफेसर ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। ऐसे विद्वान थे। फिर भी जब पढ़कर पढ़ाई पूरी होने आई, आईसीएस की परीक्षा दी, जिसको आप आज आईएएस कहते हैं। बहुत ज्यादा सिविल सर्विस के एस्पिरेंट है हमारे पास। आज का यूथ, उनको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, कोई आपत्ति नहीं है उसमें, बनना चाहिए, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। उन्होंने भी पिताजी की इच्छा अनुसार आईसीएस की जो परीक्षा थी वो पास की। लेकिन घुड़सवारी की जो परीक्षा थी, उन्होंने सोचा कि अगर वो पास कर लेंगे तो आईसीएस बनना पड़ेगा। और आईसीएस बनना यानी क्या? अंग्रेजों की नौकरी करनी। और नौकरी करनी यानी क्या? अंग्रेजों की गुलामी करनी। और ऐसे अंग्रेज जो मेरी भारत माता के सीने पर बैठकर उनके रक्त पिपासु बने हैं, ऐसे अंग्रेजों की नौकरी तो मैं कदापि नहीं करूंगा। और घुड़सवारी की उन्होंने परीक्षा न दी और आईसीएस न बने। और उन्होंने कहा, उनके पिताजी के एक मित्र थे वहां इंग्लैंड में, उनको कहा कि मुझे तो भारत जाना है, आप ऐसी कुछ व्यवस्था कीजिए कि जिससे मैं भारत वापस जा रहा हूं। मुझे लगता है कि मेरी मातृभूमि मुझे पुकार रही है। और बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव थे, वो रत्न पारखू थे, बहुत वो भी दीर्घदृष्टा थे। उन्होंने श्री अरविंद की शक्तियों को पहचान लिया और वो उनको यहाँ बड़ौदा ले आए। और गुजरात का ऐसा सौभाग्य है कि श्री अरविंद 13 साल तक बड़ौदा में, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य। जब वो आए, योग भी उन्होंने यहाँ पे सीखा। क्रांति के विषय में इंदु प्रकाश में उन्होंने लिखने की शुरुआत की। इतना तेजाब लिखते थे। इंदु प्रकाश को भी वार्निंग दी गई कि ऐसे लेखकों को रखेंगे तो आपको वारंट दिया जाएगा, आपको पकड़ लेंगे। लेकिन वो मातृभूमि के प्रति उनका जो समर्पण था, उनका भाव था, वो क्या कहते हैं? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पहला जो शब्द है वो राष्ट्रीय है। और राष्ट्रीयता के जो उद्घोषक हैं, भारतीय राष्ट्रीयता के पुनर्घोषक, उद्घोषक, उसको मैं श्री अरविंद कहता हूं। ये राष्ट्रीयता क्या है? उन्होंने कहा है कि भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, यहाँ पे नदी है, पर्वत है, जमीन है, उससे भारत नहीं बनता है। भारत तो एक सजीव है। भारत के लोग जो है वो भारत के कोष हैं। इसलिए भारत तो जीवंत राष्ट्र है। भारत माता जीवंत है। जैसे अटल जी ने कहा था, भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। तो हिमालय उसका किरीट है, पश्चिम और पूर्व घाट उसकी 2 जंघाएं, ऐसा उन्होंने कहा था। तो ऐसे ही श्री अरविंद ने उस बात को कहा है। ये राष्ट्रीय क्या है? देखिए, फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम को हम बहुत उनकी प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छी है। अमेरिका और बहुत लोगों ने उनके ऊपर स्टडी भी किया है। फिनलैंड के लोगों को जब पूछा गया कि आपकी शिक्षा नीति में ऐसा क्या है कि लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, तो उन्होंने एक ही वाक्य में उत्तर दिया कि हमारे यहाँ एजुकेशन चार्टर है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा एजुकेशन चार्टर है। और हमारे एजुकेशन चार्टर का पहला स्टेटमेंट है, अवर एजुकेशन सिस्टम इज नेशनल सेंट्रिक। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो हमारे राष्ट्र के आधारित है, राष्ट्र के ऊपर निर्मित है। नेशनल सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम। तो ये राष्ट्रीय है, क्या है?
सभी लोगों ने कहा, श्री अरविंदो ने भी कहा था कि जो जो शिक्षा है वो राष्ट्रीय होनी चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा की बात उन्होंने की है। और नॉलेज है वो यूनिवर्सल है। शिक्षा यानी क्या? केवल सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का संकलन नहीं, मनुष्य के मस्तिष्क का, आत्मा का विकास करना है, यही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था, मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन व्हिच इज ऑलरेडी इन अ मैन, दिस इज एन एजुकेशन, वही बात श्री अरविंद ने भी कही। मैं अक्सर कहता हूं विवेक भाई, जब ये राष्ट्रीय क्यों है? नॉलेज इज यूनिवर्सल। आप जाइए, पानी का अणुसूत्र जो है, पानी की फॉर्मूला, वैज्ञानिक फॉर्मूला, वो H2O है। आप भारत में जाएंगे तो भी H2O है, आप फ्रेंच भाषा में बोलेंगे तो भी वो H2O होगा, अंग्रेजी में बोलेंगे, जर्मन में बोलेंगे, सभी जगह वो H2O ही है, क्योंकि इट इज प्रिंसिपल बेस्ड फॉर्मूला। वो नॉलेज है, वो वैश्विक है, यूनिवर्सल है। लेकिन शिक्षा क्या है? तो पानी हमारे लिए भी H2O है, लेकिन क्या गंगा का पानी हमारे लिए एकमात्र H2O है? केवल H2O है? नहीं, गंगा का पानी मेरे लिए H2O से बहुत अधिक है, मेरे लिए कुछ और है, मेरे लिए मेरी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ एक अभिन्न अंग है। इसीलिए मरते समय किसी के मुंह में हम गंगा जल डालते हैं, यह राष्ट्रीयता है। तो ऐसी राष्ट्रीयता की बात उन्होंने की, राष्ट्रीय शिक्षा की बात की। मातृभाषा में उन्होंने कहा, देखिए वो तो मातृभाषा पढ़े ही है, यहाँ पे उनको अंग्रेजी ही सिखाई गई थी, घर में भी अंग्रेजी सिखाने वाली एक बहन को रखा गया था पिताजी के द्वारा। वहां गए, बंगाली तो सीखी नहीं, बंगाली आती नहीं, यहाँ आके बंगाली सीखे, यहाँ आके गुजराती सीखे, उनको फ्रेंच भी आती थी, उनको अंग्रेजी भी आती थी, कितनी सारी लैटिन भी आती थी। इतनी भाषाओं के जानने के बाद उन्होंने कहा कि मातृभाषा से अधिक सबल शिक्षा का कोई माध्यम नहीं होगा, नहीं हो सकता। तो यह मातृभाषा की बात उन्होंने कही। और देखिए यहाँ आकर कई रचनाएं भी उन्हें संस्कृत में भी लिखा। इतने मुझे श्री अरविंद का आभार इसलिए व्यक्त करना चाहिए भारत के ऊपर, एक अति मनस का विराट दर्शन तो उन्होंने दिया ही दिया, लेकिन हमारे जो स्क्रिप्चर्स थे उनको ऑथेंटिक रूप में ट्रांसलेट करने का श्रेय भी श्री अरविंद को जाए। उन्होंने महाभारत के ऊपर भी लिखा, उन्होंने रामायण के ऊपर भी लिखा, ऐसे ऐसे विषयों के ऊपर लिखा। सावित्री उनका बहुत बड़ा महाकाव्य है, इस जगत का सर्वोत्तम आविष्कार उसको हम कह सकते हैं, साहित्य जगत का सर्वोत्तम आविष्कार वो सावित्री है। तो ऐसे श्री अरविंद ने इंटीग्रल एजुकेशन की बात की। उन्होंने कहा है कि फिजिकल डेवलपमेंट, वाइटल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। आज देखिए हम वापस आ रहे हैं, हमारी जो आंखें थी अब तक वेस्टर्न, प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी जिन्होंने 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति घड़ी थी, उन्होंने कहा था कि आज भी भारतीय शिक्षा व्यवस्था का गुरुत्व केंद्र है वो तो यूरोप ही। इसीलिए मैकोले जो यहाँ लेके आए, श्री अरविंद के छात्र उनको बहुत पूछते थे, कौन थे उनके छात्र? कन्हैयालाल मुंशी उनके छात्र थे, हमारे वल्लभ विद्यानगर के स्वप्नद्रष्टा भाई का उनके छात्र थे, ऐसे ऐसे उनके छात्रों थे। उन्होंने पूछा कि मुझे अंग्रेजी में रुचि है, तो अंग्रेजी में अच्छा लिखने के लिए मैकोले पढ़ना चाहिए, मैं मैकोले को पढ़ूं? श्री अरविंद ने कहा कि आप मैकोले को मत पढ़िए, आप अगर आप में मौलिकता लानी है तो आप स्वयं को पढ़िए, आप मौलिक रहिए, आप किसी की परछाई मत बनिए, आप स्वयं, आप खुद अपने जैसे रहिए। ऐसे उन्होंने बात की। तो हमारे यहाँ भी अभी उन्होंने कहा नथिंग कैन बी टॉट, कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति यही बात करती है। अब हम व्हाट टू लर्न नहीं सिखाएंगे, हाउ टू लर्न सिखाएंगे, हाउ टू लर्न, कैसे सीखा जा सकता है। बस इसी विषयों के ऊपर, इंटीग्रल एजुकेशन की बात करने के ऊपर, मातृभाषा में शिक्षा की बात करने के लिए, समग्र विकास, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया है। दूसरा उद्देश्य यह है कि ऐसे इतने सारे छात्र यहाँ पे उपस्थित है, इन छात्र हमारे ऊपर, हमें गौरव होना चाहिए कि हम किसके वंशज हैं, हमारे पिता कौन है? तो हमारे पिता श्री अरविंद है, हमारे पिता श्री विवेकानंद है, हमारे पिता श्री मदन मोहन मालवीय है। ऐसे चिंतक इस भारत को प्राप्त हुए हैं, उनके प्रति हम गौरव कर सके, उनका गौरव कर सके, और हमारे आत्मसम्मान में अभिवृद्धि हो,
इसलिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। आजकल शिक्षा में जहां जहां हम जाते हैं सभी जगह पे शिकायतें बहुत हैं कि आज ये नहीं है, आज वो नहीं है। हमें फरियाद नहीं करनी है। आज हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे कि श्री अरविंद के चिंतन को लेकर हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं है उसका चिंतन यहाँ नहीं करना है। वो हम सबको पता है, क्योंकि समस्याओं के लिए बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंसेस आयोजित होती है। यह समस्याओं को सुनने के लिए आयोजन नहीं हुआ, यह तो समाधान की ओर आगे बढ़ने के लिए इस आयोजन को हमने किया है। इसलिए हम समाधान वाली बात करें। मैं दुष्यंत कुमार की पंक्तियों को कहकर मेरी बात यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। एक बात है कि अगर हमें तेजस्वी, ओजस्वी, नचिकेता, ध्रुव और प्रहलाद का निर्माण करना है तो हमें वापस शिक्षा व्यवस्था में श्री अरविंद की पास जाना पड़ेगा, के पास जाना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। तभी हम ऐसे छात्रों का निर्माण कर पाएंगे, उनमें समग्र विकास की जो प्रक्रिया है उसको देख पाएंगे। दुष्यंत कुमार कहते हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, कोशिश यही है कि सूरत बदलनी चाहिए। शिक्षा की सूरत को खूबसूरत बनाने के लिए आइए हम सब आगे बढ़े। गीता में भी भगवान ने कहा है, नहीं ज्ञाने में सदृशम पवित्र में विद्यते। ऐसे पवित्र ज्ञान परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए आइए एक कदम आगे चले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ इंडस यूनिवर्सिटी ने मुझे बोलने का मौका दिया, आने का सौभाग्य प्रदान किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय। थैंक यू जयेंद्र सिंह यादव जी। इंडस विश्वविद्यालय में हम सब की ये कोशिश रहती है सर कि हम भारतीय मूल्यों को सीखें और सिखाएं। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम महर्षि श्री औरोबिंदो जी की विचारधारा और मूल्यों को और अधिक सीखना चाहते हैं। And indeed, sir, you rightly said, we are really blessed to have so many dignitaries today in this for this national conference. Thank you very much, sir. Now I request Dr. Ved Vyas Dwivedi, Executive Vice President, Indus University, to speak a few words. ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जन ओम तपः सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। प्रांगण में स्वागत है। 28,601 दिन, लगभग 78 साल 3 महीने। हम में से सभी इस यात्रा पर चल चुके हैं। कोई 14 साल कुछ भी हासिल नहीं होता है। अगर हमें सिद्ध करना है, प्राप्त करना है, तो उसे जीवन में उतारना पड़ेगा। क्या साथ करेंगे? श्री अरविंदो 28,000 दिन में से आपको जान के आश्चर्य होगा 7,666 दिन, 7,666 डेज ध्यान से है। जागृत ध्यान का अर्थ है, देखो ध्यान से पढ़ाई करना, क्या उस ध्यान पर हमने, चेतना का अर्थ है कि जिसने श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में उतार लिया। मैंने प्रारंभ पूर्ण गायत्री मंत्र से इसलिए किया कि श्री अरविंदो पूर्ण गायत्री साधक है। उनकी आध्यात्मिक चेतना जब वो 5 दिसंबर को इस पृथ्वी को छोड़ करके गए
6 से 7 दिन तक उनके शरीर से वह आध्यात्मिक चेतना ऐसे ज्योति के रूप में, जिस व्यक्तित्व ने, जब उनके दोस्त लेले ने उनको कहा कि राजनीति से आप निवृत्त हो जाएं और ध्यान में अपने जीवन को प्रवृत्त करें, उस समय उन्होंने 9 भाषाओं पे सिद्धि हासिल की थी। 9 भाषा पे सिद्धि हासिल करने का अर्थ क्या होता है? यह कोई शरीर से संभव नहीं है, ये किसी और शरीर की बात है। मैं आज बात कर रहा था, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक जागृत जाता है, समुद्र चोर है। एक बच्चा समुद्र की लहर में फंस जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, मां लिखती है रेत पर, समुद्र हत्यारा है। एक मछुआरा बहुत सारी मछलियां पकड़, हम सबके समुद्र अलग अलग है। कोई समुद्र में एक हाथ अंदर जाता है तो कोई 1 फीट पानी में खड़ा है, अंततः समुद्र हमारा एक ही है। इस सिद्धांत को जीवन में उतारने का जिसने कार्य चरितार्थ किया, उस व्यक्तित्व का नाम, उस महापुरुष का नाम कुछ अंग्रेजी में लिखा है, क्योंकि वो तो हर एक भाषा के विद्वान थे, किंतु मुझे अंग्रेजी में बोलने की अनुमति नहीं। आर.के. शाह साहब ने मुझे आदेश दिया कि आपको अंग्रेजी का एक शब्द भी उपयोग नहीं करना है। मैं उनका बहुत ही सम्मान करता हूं कि ध्यान में थे, बहुत सारे विचार उनके ऊपर आक्रमण कर रहे थे, बहुत सारे विचार आक्रमण कर रहे थे। विचारों, उस दिन मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि विचार अंदर से नहीं बाहर से आते हैं। प्रश्न ये उठता है कि बाहर के विचार की शक्ति को रोकने के लिए अंदर की शक्ति उससे भी ज्यादा प्रभावशाली होनी चाहिए। यह को कहां से प्राप्त हो? एक बार उनके भाई बीमार पड़ गए, बहुत सारी औषधियों का सहारा लिया गया, किंतु वो ठीक ना हो रहे थे। तभी एक नागा साधु उनके यहाँ आते हैं और एक कटोरे पानी में कुछ मंत्र अभिभूत करते हैं और वह जल उनके भाई को पिलाया जाता है, चाहे वो भक्ति योग हो, कर्म योग हो, ज्ञान योग। श्री अरविंदो ध्यान के तो परमपिता हैं। ऊर्जा, ज्ञान, डिटैचमेंट, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, ध्यान, मनन, चिंतन परंपरा के वाहक, हमारे पूर्ण आदर्श। हम श्रीमद् भगवद गीता के 27वें श्लोक 13वें अध्याय से कहा, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यतस्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। इसलिए विद्यार्थियों, आपको कदापि यह नहीं विचार करना है कि ये हमारे सीनियर हैं तो शायद ज्ञान में हमसे ज्यादा है। मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् देत्रयं त्यजेत्। लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, LAG, और हमारे पास भी LEG है, उसमें से E है ना, वो ईगो है। लस्ट, ईगो एंड ग्रीड, और उन्होंने लस्ट, एंगर एंड उन्होंने तो लैग से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने बंगाली कविता में लिखा, नमस्कार। किसको नमस्कार किया? श्री अरविंदो को। क्यों? क्योंकि श्री अरविंदो ने टैगोर को एक ज्ञान दिया, और वो क्या ज्ञान था? श्लोक नंबर 47 फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता, दूसरे धर्म में प्रयाण मत करो। क्यों? ऐसा क्यों कहा? वो पूर्ण रूप से सनातन धर्म और हिंदू धर्म के हिंदुत्व के वाहक थे। ज्ञान की त्रिवेदी संगम का हमें संदेश देते हैं। मैं और अधिक समय न लेकर, क्योंकि 35 का टारगेट दिया गया था, 35 ही हो रहा है, मैं श्री अरविंदो के ऊपर एक बहुत ही अच्छी कविता किसी वाराणसी के एक छोटे से बच्चे ने लिखी थी, मैं आपको सुनाता हूँ। हमारी अपनी संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, शुद्ध ज्ञान, सहिष्णु और महर्षि श्री अरविंद भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग के परम चिंतक है श्री अरविंदो। इन्हीं शब्दों के साथ हमें क्या ग्रहण करना और क्या नहीं ग्रहण करना। ऐसा कहते हैं कि अगर मक्खी चाय में गिर जाए तो हम चाय फेंक देते हैं, लेकिन उल्टा भी होता है। अगर मक्खी घी में गिरे, क्या हम उस ऊर्जा को फेंकना चाहते हैं?
उस ऊर्जा को क्या हम सजोना नहीं चाहते, जिसे पा करके, जिसे प्राप्त करने के लिए, अथवा जिसे प्राप्त करके श्री अरविंदो समझ में नहीं आएगा, सुन लेने से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि शब्द वेव्स हैं, वो निकल जाएंगे। और जैसे ही हम उसे आत्मसात करेंगे, जीवन में उतारेंगे। कभी श्री अरविंदो ने पैंट नहीं पहना, कभी नहीं पहना, अरविंदो हो गए। कहने का अर्थ ये कि शाम तक उसका पालन करें। कम से कम एक विचार को ले लीजिए श्री अरविंदो के, एक केवल मात्र, जैसा अभी जयेंद्र जी ने बताया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 20, उस आध्यात्मिक चेतना को नमन, उनको प्रणाम कि वे हमें ऐसी हमेशा शक्ति देते रहें कि हमें कभी किसी से सहयोग प्राप्त करने की याचना न करनी पड़े, हम सदैव ही रहें। धन्यवाद। Thank you, Dr. Devdyas ji, for letting us know more about Maharshi Aurobindo ji. Thank you very much to all the dignitaries on the dais. Volunteers, please guide. We will begin with the keynote lecture. Keynote lecture session. Distinguished guests at the start and Secretary Aurobindo Foundation, Tamil Nadu. We also have Dr. K.B. Vyas, Vice Chancellor, Aurobindo University, who's joined us, and Dr. N.M. Khandelwal, retired director and a very senior academician who will be joining us online. A brief introduction of Dr. Jayanti Raviji, a scientist, civil servant, performing vocalist, and from Harvard University, and a PhD specializing in technology-enhanced education, conceptualizing a multiversity from MS University, Vadodara. Having authored books, case studies, newspaper articles, published papers in international journals, she has also guided doctoral students and has been a visiting faculty at Harvard University. She has authored several books, including Sanity and Sanitation, published by Penguin, Symphony of Fraternity, collector of Panchmahal, director of NAC in the Prime Minister's office, in addition to Principal Secretary and Commissioner, Rural Development, Gujarat. She has championed the Swachh Bharat Mission for Rural Sanitation during her tenure as Principal Secretary. Health, Gujarat's handling and response to COVID had been appreciated and documented by WHO, along with II, evaluated by NIDI-IO, and the United Nations had dramatically improved from the 17th rank nationally in 2021. She currently works at the Aurobindo Foundation as the secretary. She is a devotee of Mother and Sri Aurobindo and has closely worked and been mentored by Professor Kirit Joshi. Her multidisciplinary, innovative, creative approach with sensitivity and a raised consciousness to problem solving has provided results and outcomes that have successfully worked across various sectors and organizations. With complete faith in the Mother and Sri Aurobindo, joining us online. Ma'am, are you able to hear us? Yes, namaste to all of you. Am I audible to you? Yes, ma'am. Namaste, ma'am. Namaste. Ma'am, here in the auditorium, we have Dr. Ritu Bhandari and Dr. Nagesh Bhandari, Presidential Secretariat, Indus University. And we have our seniors also, Dr. Sandeep Chakravarti, Executive President, and Dr. Devdyas Ji, Executive Vice President, along with Registrar Sir Dr. R.K. Singh and other officials also. Ma'am, our Presidential Secretariat would like to talk to you also. ये देखते हैं कि हम उस दिन हमने जो आपको वायदा किया था उसका आज हम पूरा करने में सक्षम हुए और हम चाहते हैं कि आपके इस प्रकार से हमेशा सहयोग रहे तो हम आगे और बढ़ते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। Thank you, ma'am. Thank you.
Ma'am, now we would request you to deliver the keynote address. Namaste. Dr. Nagesh ji and his entire team at Indus University, मुझे अनहद आनंद खुशी महसूस हो रही है कि ये यूनिवर्सिटी जिसके हम कह सकते हैं कि थोड़ा इसका जब बीजारोपण हो रहा था उसमें मेरा भी स्तर पर पहुंच गए हैं आप और बहुत सुंदर उम्दा काम कर रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है. आई एम डिलाइटेड that you're also specially organizing a program today on the 150th birth anniversary of Sri Aurobindo, because ये भी पूरे भारत के लिए जब आज़ादी का 75वां सालगिरह भी मनाया जा रहा है और श्री अरविंद दोनों के जन्मदिन 15 अगस्त को ही है. ये कोई एक कोइंसिडेंस मात्र नहीं है, इसका एक बहुत ही गहरा एक राज भी है, इसका एक रहस्य भी है, महत्व आध्यात्मिक महत्व भी है. तो ऑन दैट ओकेजन मेरा आप सबको तहे दिल से नमन. बहुत ही एक सरल इनकी गायत्री है जिसमें वो कहते हैं, आह्वान करते हैं, आवाहन के सत्य हमारे जितने भी परिमाण हैं, all the dimensions of our being, may they be percolated by the truth. That is the essence of this. So I would like to begin with this recitation of the Sri Aurobindo Gayatri. तत्सवितुर्वरं दीपं येन दीपयेत् सत्येन दीपयेत्. ॐ तत्सवितुर्वरं दीपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्न सत्येन दीपयेत् सत्ये. On education and nationalism, जैसा कि मैंने बताया और मैं चाहती हूँ कि आज आई एम एबल टू रीच ऑल ऑफ यू थ्रू दिस, सो आई विल ट्राई टू यूज अ कॉम्बिनेशन अंग्रेजी और हिंदी, थोड़ा हो सके तो गुजराती भी मैं बीच में बोलने की कोशिश करूंगी जिससे कि हम सब इन बातों को अच्छी तरह से समझ सके. और गुजरात में रहते हुए मैं कह सकती हूँ कि मैं भी गुजराती बन गई हूँ और पूरे भारत वर्ष में इतने साल अलग अलग, मेरा जन्म भी बिहार तब और अब जो झारखंड कहलाता है वहाँ के रांची में हुआ था, पंजाब, महाराष्ट्र, अलग अलग समाज के लिए, लाइफ के लिए ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुई है. और आज मैं चाहूंगी कि इस साल जो हमारे लिए बहुत ही एक महत्व का 150वीं सालगिरह है महर्षि अरविंद की, और इस साल का जो पूरा इसका उत्सव जो मनाया जा रहा है उनकी जन्म जयंती का, इसकी जो हाई लेवल कमेटी है इसमें हम जिसे हम 5 ड्रीम्स, 5 सपनों के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, ये स्पीच उन्होंने खुद लिखा था उस दिन और इसको ऑल इंडिया रेडियो तिरुचिरापल्ली के स्टेशन से इसकी एक ब्रॉडकास्ट, एक मुक्त और एकत्रित भारत, और उसमें उन्होंने बिल्कुल एक बड़े श्रद्धा के साथ और बिल्कुल निश्चित तौर से उन्होंने एक घोषणा की है, और भारत का जो बंटवारा भी हुआ है ये सदैव नहीं रहेगा, और जल्द ही सर्जन्स के बारे में भी कहा है. पूरी एशिया के जितने भी देश हैं उन सब का जो योगदान आध्यात्मिक उन्नति, विश्व की उन्नति में जो है उसका भी उन्होंने महत्व दिया है. उसके बाद उन्होंने एक जो ब्राइटर नोबल, एक आध्यात्मिक भेंट, उपकार जो पूरे विश्व को से देना है, इंडिया स्पिरिचुअल गिफ्ट टू द वर्ल्ड. उनकी जो पूरी, पहले अरविंदो घोष थे, वैसे एक ही व्यक्ति हैं क्योंकि इन सब में एक लिखा है, और कहते हैं कि ये जब अभी जो मनुष्य का जो स्वरूप है, जैसे अभी मेरे पहले के वक्ता जिन्होंने कहा ईगो की बात की, कि हम लोग ज्यादातर हमारे मेंटल लेवल, इंटेलेक्चुअल प्लेन, जिससे कि हम
तर्क विवाद, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर अगेंस्ट, रीजनिंग करके किसी भी एक बात को उसका तोलना मापना करते हैं. We try to argue about the pros and cons, but most of our engagement is from an intellectual dimension. But Sri Aurobindo said कि हमारी जो consciousness, चेतना के स्तर में बहुत बड़ा एक जंप, एक कूद आएगा जो नई उत्क्रांति होगी. And with that, we will be dictated not by the divisive force of ego, but by the force of love, the force of consciousness which tends to unite us and not based on divisions and distinctions. So that these सिर्फ एक साल के लिए नहीं, 3 साल के लिए होता है, खास करके भारत भर में कर रहे हैं. और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी काफी महत्व श्री अरबिंदो के टीचिंग्स, उनकी जो पॉइंट से उस पर देता है. ये हमारे सबके लिए बहुत ही एक गौरव की बात है. Now coming to the fact of what Sri Aurobindo said about education, क्योंकि आज का conference है, it is about education. I thought we would start with some of the basic principles that he gives about Dr. Ghosh in India. And Dr. Ghosh was somebody who did not रखा था, और बिल्कुल वो 7 साल के थे तब उनको इंग्लैंड भेजा गया, बिकॉज उनकी इच्छा थी कि बिल्कुल भारतीयता की छाया तक उन पर न पड़े, दैट उन पर कोई भी उसका प्रदूषण न हो, ये एक विचार से. और उन्होंने अपने बेटे के लिए बहुत ही बेहतरीन एक भविष्य हो इन इंग्लैंड. एंड थ्रू आउट हिज यंग ईयर्स एज वेल, बहुत ही उनके जो पोएम्स, उनकी जो पढ़ाई में भी वो हर चीज में उत्कृष्ट प्रस्तुति उनकी होती थी. कविता हो, भाषाओं पर उनका जो प्रभुत्व था, हर दायरे से देखा ताना जे बीज छे इंग्लैंड માં જ એમની અંદર ધીમે ધીમે પ્રકટ થવા માંડ્યા. એમને એક બહુ જ એક સિક્રેટ રેવોલ્યુશનરી ગ્રુપ એક્નિઝમ ઉપર અને એમના વિરુદ્ધમાં એમને ખંડન કરતા ઘણા બધા એમને ટોક્સ પણ આપ્યા. અને ઘણા બધાને આશ્ચર્ય પણ થશે આપણને જાણીને કે ખરેખર બ્રિટિશ ગવર્મેન્ટ ના બ્લેક લિસ્ટમાં ત્યારે પણ એ આવી ગયા હતા. બીજી એક અગત્યની વાત કે એ જમાનામાં આજે પણ પ્રદર્શન કર્યું અને એકદમ સરસ રીતે ઉત્તીર્ણ થયા. અને છેલ્લે જે ઘોડસવારીનું જે પરીક્ષા હતું, ટેસ્ટિંગ, એની અંદર he decided not to appear, એટલે એમાંથી ગેરહાજર રહ્યા, ગયા જ નહીં, કેમ કે અંદરથી એમને બિલકુલ સ્વીકૃત ન હતું કે હું એક ગુલામી કરું. અને એવા એક બ્રિટિશર્સ જે આપણા ઓળખતા હતા, એમની તેજસ્વિતા, એમનું જે વર્ચસ્વ પ્રભુત્વ હતું. And he actually offered him to come and teach in the college there and teach the young students, which was also a though it was short-lived, given that the publishers got into trouble given the very, very provocative nature of his writing against the British authorities back then in a magazine called Hindu Prakash. And there he had decided that I have to really give a shake up to the 200-year-old colonial mind and mindset with a complete freedom. And in fact, he spoke about full freedom for India and so on. He, way back in 1904, he said that we will not compromise for anything except full Swaraj, complete independence for India, which by the Congress. So 26 years later, similarly, he also wanted the common people, the entire public, Janta, to get organized. So these were the strategies that he had. Construction of a modern India, Sri Aurobindo played a very important boycott, passive resistance. उन्होंने कहा कि एक शांत बहिष्कार થવું જોઈએ, આપણે બધા જ સ્વદેશી goods જે છે એનો પ્રચાર કરવો જોઈએ. He wanted these to be popularized. What were the tenets of his philosophy when it came to education? I will quote him. He spoke about 3 very important basic principles which are supremely relevant even today. The first principle, I quote, he says, of true teaching is that nothing can be taught. The teacher is not an instructor or taskmaster. He's actually had to help the inner being of the child to shine out, the psychic being of the child, which even as Swami Vivekananda had said before, that education is nothing but the manifestation of the divinity already present in human beings. So Sri Aurobindo goes on to say the teacher's business is that જે આપણે
સામાન્ય રીતે માનવામાં આવતું હતું કે નાના બાળકો માટે આ સિદ્ધાંત લાગુ ન પડે અને એને જાતે જ્યારે એડોલસન્ટ થાય, એડલ્ટ થાય, પુખ્ત વયના થાય ત્યારે એની રીતે બધું સમજી શકે, ગ્રહણ કરી શકે. કોઈ પણ વાત હોય તો એના મગજ હોય, ગર્ભ અવસ્થામાં જ્યારે માં હોય ત્યારે પણ એ બાળકના વિકાસ માટે આ બધા પ્રિન્સિપલ્સ અહેમિયત લાગે છે. It is by thought, by placing the right situation context in terms of experiences, cognition in the form of stimulation for various senses, smells, sounds, to diminish or increase the amount of help and guidance necessary. It does not change its nature. Divinity within the psychic being, therefore, had to be given all the necessary bhava varan, the environment. The second principle that he said is that the mind has to be consulted in its own growth. The idea of hammering a child into the shape desired by its parents or teacher is a barbarous and ignorant. This is extremely dangerous. એમને કહ્યું કે રાષ્ટ્ર માટે પણ એક નુકસાન છે અને એક અત્યાચાર છે. He says this is based to the nation. It loses the benefit of the best that a man could have given it and is forced to accept instead something find it. So as good teachers, as good parents, and as people in community, in society, our job is to find the talent, the inherent potential in a child, develop it and use it. And the chief aim of education, Sri Aurobindo says, should be to help the growing soul, the being within, to draw out that in itself which is best and make it perfect for a noble use. And he says that basically once the sattva, the soul within is actually emerging, once it blossoms, every other knowledge becomes visible to it. It'll come out automatically with almost little or no effort, because then the child जो suddenly उनको अपने माँ बाप और घर, अपनी जो एक सांस्कृतिक एक वातावरण था वहां से निकाल कर उनका जो एक ट्रांसप्लांट एक विदेश परदेश में एक बहुत ही एक फॉरेन लैंड में उनका जो एक उनको ट्रांसप्लांट किया गया था, उसकी वजह से ये फिर से कहते हैं यहाँ पर दैट वो जिस वातावरण में, जिस माहौल में बच्चा बड़ा हुआ है, उसी को रिस्पेक्ट करते हुए, उसको आदर करते हुए हमें आगे उसे ले जाना चाहिए. कहते हैं द बेसिस ऑफ मैन्स नेचर is almost always in addition to his soul's past, his heredity, his surroundings, his nationality, his country, the soil ropan karna ho, then it should not, it may seem to belong to another age and clime. Let them be free to follow their bent, but the majority languish, become empty, become artificial, if artificially molded into an alien form. And he says the past is our foundation. हमारी जो भूतकाल है या हमारे जो हमें जो संस्कार मिले हैं बचपन से, वो हमारा एक फाउंडेशन है. दैट इज द बेसिस. द प्रेजेंट, आवर मटेरियल, अभी जो प्रेजेंट है, जो हम एंड સરળ ભાષામાં કહીએ તો એમને એ પણ કહ્યું છે શિક્ષણ એટલે તમસ, જે 3 ગુણ છે તમસનું વિસર્જન. જે પણ महर्षि अरविंद उनके जो 5 ड्रीम्स हैं उसमें खास उन्होंने जो लास्ट 3 ड्रीम्स की बात की, इंडियाज स्पिरिचुअल गिफ्ट टू द वर्ल्ड. तो ये जो एक इंटरनेशनल कल्चरल टाउनशिप है, इसमें 60 कंट्रीज, 60 देश के लोग यहाँ रहते हैं और हमारी इच्छा है कि और कर रहे हैं कलेक्टिवली. और इस चीज में हम चाहते हैं कि इफ देयर इज अ वे टू एक्चुअली एंश्योर दैट the people from Indus University, if we can have volunteers from here come there, participate in this, be a part of this wonderful experiment. It's, as the 3 dreams mentioned, it is India's spiritual gift to the world, a small prototype of about 50,000. Currently, we have about 3,000 people. Modern art in New York, the whole township. And in fact, any of the 1960s and 70s में लिखा था that this town on a particular road called the Crown, जिसे हम उसका अनुवाद किरीट करके कह सकते हैं, क्राउन, कि इसमें ओनली ई मोबिलिटी रहेगी. उन दिनों दिस वाज मच बिफोर एलॉन मस्क वाज बोर्न. टेस्ला का शायद नाम कुछ नामो निशान नहीं था, पर उतनी उनकी दीर्घ दृष्टा मां के पास था कि उन्होंने लिखा है अपने हाथ से
के 15 किलोमीटर पर आवर की गति से ही जाएंगे, ई व्हीकल्स जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इस तरह से परिकल्पना, इंटेलेक्ट, and said that beyond a point we have to go beyond the mind to something that he referred to as the super mind, beyond the mind. And there, the supramental consciousness, he says, is what would then be the main character of the new species that would evolve. And Aurobindo is actually what Sri Aurobindo wrote about. Aapko swagat karna chahti hu. And I will also end with something related to his whole concept of nationalism and nationality. And before that, I would also like to say something, as I'm repeating what if the patriotism is based on an ideology, it becomes nationalism. तो ये अंतर दिख रहा है ना, जब हम अपने देश को, अपना देश है इसीलिए उसे प्यार करते हैं, that is patriotism. उसमें शायद एक तरह से थोड़ा उसमें एक कमी हमें नजर आती है. There is a bit of hollowness in it. I just love it because it's my country. But the second उपयोग कर सकते हैं तो फिर हम nationalism से उठ के internationalism पर जाते हैं. और भारत, अब जो हम वाकई सुनते हैं कि एक विश्व गुरु भारत जिस एक पॉइंट पर अभी पहुंचा है, ऐतिहासिक उसके जर्नी, जब सामान्य तौर पर किसी की शादी होती है तो जो लड़का है वो अपनी प्रियतमा है, उसको शादी के पहले कैसा चिट्ठी लिखता है, What is it that you have in mind? शायद उसमें अच्छे मीठे शब्द होंगे कुछ वगैरह. उन्होंने उनकी 3 पागलपन, 3 मैडनेसेस के बारे में लिखा है कि मेरे पास मैं 3 पागलपन से व्यथित हूँ, पीड़ित हूँ. That God has given me belongs to him. I have the right to spend only so much as is necessary for the maintenance of the family and on what is absolutely needed. So he says all of him, all that he has, all that he does, and all that at your lotus feet. It becomes a great way to start a day and remember this through the day. The second madness, Sri Aurobindo writes, has recently taken hold of me. It is this: by any means, I must have the direct experience of God. The religion of today, that is uttering the name to tread it. Hindu Dharma asserts that the path is there within one's own body, in one's mind. It has also given the methods to be followed to tread that path. I have begun to observe them. And हम सब जानते हैं कि इसके 1903 से 1910 तक, और उस 7 साल में भी 1 साल वो पूरे अलीपुर जेल में थे. उनको अंडर ट्रायल प्रिजनर के तौर पर रखा गया था वहां, और वहां उन्हें एक बहुत ही सुंदर एक अनुभव हुआ, एक एक्सपीरियंस, जिसे कृष्णा काली के साथ का एक अनुभव वो लिखते हैं. उन्हें हर चीज में और सनातन धर्म का जो सही मतलब है, अर्थ है, उसका भी उन्हें एहसास, समझ, जीवित व्यक्तियों हैं, वस्तुएं हैं, और जिसमें जीव नहीं भी होता, वहां बाकी उनके जो फेलो प्रिजनर्स हैं, उनके साथ जो बाकी भी कैदी है, उन सब में उन्हें वासुदेव श्री कृष्ण भगवान प्रत्यक्ष देखने को मिले, उन्हें दिखाई देते हैं, जैसे ये सब वही हैं. So this is the same madness that we know Ramakrishna was experiencing and his own disciple. दिव्य चेतना को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसे खींच के इस जमीन में, इस जीवन में लाना, उसके बारे में लोगों ने नहीं लिखा था कि हम लीन हो जाएं उसमें. लेकिन श्री अरबिंदो सीख दूसरा एक ऐसा रास्ता कि प्रॉफिट, ये सब भी अच्छे, with a raised consciousness, the impact of that is much, much better. And finally, we end with the third madness, a very powerful one. Whereas the third madness is this, whereas others regard the country as an inert piece of matter and know it as the plains, the fields, the forests, the mountains, and the rivers, I know my country as the mother. I worship her and adore her accordingly. तो उनके लिए भारत मात्र एक जमीन नहीं थी, जीती जागती माँ थी, और कहते हैं मैं उसकी उपासना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, and adore her, उसको बिल्कुल मैं चाहता हूँ. What would a son do when a demon, एक राक्षस,
sitting on his mother's breast, prepares to drink her blood, would he sit down, content to take his meals, or go on enjoying himself in the company of his wife and children? Or would he rather run to the rescue of his mother? I know I have the strength to uplift this fallen race, not a physical strength. I'm not going to fight with a sword or a gun, but with the power of knowledge. The force of the Kshatriya is not only the force, there is also the force of the Brahmin. Kyunki he says something very interesting. Even about the Varna, he uses the word Chatur Vyuha. He talks of all the four aspects of the mother, the divine Maheshwari, which is about knowledge, divine Kali, which is about courage and force, power. He talks about divine Saraswati, which is about harmony and so on, attributed to the Vaishya community. And he also talks of divine Saraswati, which is about perfection in doing work with your hands, with any kind of work that is done with complete perfection. So he talks about the force of the Kshatriya and the force of the Brahmin, which is founded on power and knowledge. This is not a new feeling. I quote Sri Aurobindo in me, not of recent origin. I was born with it. It is in my very marrow. God sent me to the earth to accomplish this great mission. So once again, on this note, drawing inspiration from what Sri Aurobindo has said, उनकी जो प्रेरणादायी, उनके जो लिखे हुए शब्द हैं, बहुत सारी कृतियां उन्होंने लिखी हैं, मैं आप सबसे तहे दिल धन्यवाद व्यक्त करते हुए आप सबका स्वागत करती हूँ, खास करके भंडारी जी and your entire team to come to Auroville, for your students to come here, be with us as volunteers, be a part of this experience. We are also in the process of cleaning up the place and bringing it back on the track in which Mother and Sri Aurobindo had envisioned and wanted it to be. So I'm very happy that Aaj, on this 150th birth anniversary of Sri Aurobindo, you along with the Gujarat Sahitya Academy are organizing this conference. My best wishes. And I want to, every child, every person, because all of us, Auroville talks of a youth that never ages. हम सब माँ की दृष्टि, माँ के संतान हैं. हम सब, we are all young people, mentally, physically, in our psychic being. Of course, we are eternal beings. और अगर हम सब हमेशा इन शब्दों से ताकत लेके, प्रेरणा लेके अपने देश के लिए, समग्र विश्व के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व त्याग करें, लेकिन इस त्याग का मतलब नहीं है कि एक आश्रम में जाके बैठें, लेकिन हम इनके जो भी चुनौतियां हैं इसमें सफलतापूर्वक अपना योगदान दे, तो जो हम सही अर्थ में भारत के विश्व गुरु की दिशा में, जब अब पूरा देश उस दिशा में जब हम लोग जा रहे हैं, तो उसमें हमारा भी एक बहुत ही महत्व का योगदान हो सकता है. थैंक यू वेरी मच. नमस्ते. Thank you very much, ma'am. Thank you for the invitation. We would love to have you with us at Indus University on your next visit to Gujarat. It was an absolute pleasure to hear you. We are thankful to Dr. R.K. Shah, who actually coordinated, and thank you to you for accepting our invitation on behalf of Indus University and Gujarat Sahitya Academy. Thank you for taking us through the life of Sri Aurobindo ji and sharing his principles and tenets on education and nationality. Let the power of knowledge guide us always, ma'am. Thank you very much. We'll move on with the session. I request Professor Dr. Jayendra ji, Member Secretary, he wants to make an announcement. Thank you. There is one invitation from Gujarat Sahitya Academy. श्री अरविंद के विषय में हम इस पूरा दिन चिंतन मनन करने वाले हैं. तो श्री अरविंद के जीवन के ऊपर एक बहुत बड़ा मल्टीमीडिया शो, डांस एंड ड्रामा वाला, वो हम पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में 2 दिन के बाद 30 मार्च को करने के लिए जा रहे हैं. 30 मार्च को पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में रात को 8 बजे रामनवमी के दिन इस श्लोक को रखा गया है. अगर आप श्री अरविंद के जीवन को, उनके चिंतन को समझना चाहते हैं, तो आप सभी को हार्दिक निमंत्रण है.
दूसरा कि मैं बाहर गया तो एक तो अध्यापक मिले कि इसके रिलेटेड लिटरेचर कहाँ से मिल सकता है। हमारा तो काम ही है कि लिटरेचर जो है उसको भारतीय भाषाओं में अनुवाद करवाना है। श्री अरविंद का जो टीचिंग है, इट इज ऑल टीचिंग इट इज इन इंग्लिश, राइट। सो हमने श्री अरविंद के जीवन के ऊपर 2 पुस्तक जो है उसका अनुवाद करवाया है और गुजरात की 25,000 स्कूलों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। श्री अरविंद का जीवन दर्शन ऐसा एक टाइटल है और स्वातंत्र संग्राम के पथ सर्जक श्री अरविंद ज्योतिबेन थानकी के दोनों पुस्तक गुजरात की 25,000 स्कूल्स में गुजरात साहित्य अकादमी ने वो बांटे हैं। उसके बाद हम उसके ऊपर वक्तृत्व स्पर्धा कर रहे हैं और उनके जो विजेता है उनको हम, जैसे मैडम ने बताया, ऑरोविल्डो की विजिट के लिए उन सब युवाओं को हम ले जाएंगे। तो बस आप सभी को निवेदन है कि आप सब उस कार्यक्रम में आइए। थैंक यू वेरी मच। For the invitation. We move on to the next keynote lecture. We have with us Professor Dr. K.V. Vyasji, Vice Chancellor, Aurobindo University, Gujarat. Sir has rich experience in education field. He has been teacher for 25 years and has been in administrative positions like principal, A2B, and campus director. We welcome you, sir, for the keynote lecture. Namaskar. Good afternoon, all of you. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Guruve. આજના National Conference Thoughts of Sri Aurobindo on Education and Nationality, organized by Indus University. I have pleasure to get invitation and to attend this program, and I congratulate all the Dr. Nagesh Pandari, Dr. Rijuji Pandari, and all the trustees and all the dignitaries who were on the stage. My topic is for Sri Aurobindo and his philosophy on education. सबसे पहले महर्षि अरविंद का जो जीवन था वो कौन थे? तो वो संत थे, कवि थे, तत्ववेत्ता थे. He was a philosopher, केरवणिका, एजुकेशनिस्ट, जिनका जन्म 15 अगस्त 1872 में हुआ कलकत्ता में. अरविंदो का जो अर्थ है कमल, गुजराती में એને कमल, એમના નામ સાથે એમનો જે તાદાત્મ્ય છે, કમળ એક ભગવાનની પૂજામાં જેનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. એમના પિતાજી ડોક્ટર કૃષ્ણધામ ઘોષ એ પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ, વેસ્ટર્ન કલ્ચર. His father was belonged to the Western culture, and he was interested to make Sri Aurobindo also in the Western culture. At the age of 7, he was sent to England to get the Western knowledge, Western culture. At that, up to 14 years of his stay, he got MA degree in English, Greek, Latin, and in 1890 he was also successful in the ICS examination. मेरे आगे जो 2 वक्ता जो यहाँ उपस्थित थे और डॉक्टर जयंती रेवेमिना, उन्होंने काफी हमें बैकग्राउंड
महर्षि अरविंद के लिए ज्ञान हमको दिया है। तो आगे कुछ मुझे एक्सप्लेन उनकी लाइफ के बारे में करने की जरूरत नहीं लगती है, as the time is limited. Therefore, I will give the brief information for his life also. In the exam of ICS, he was not successful in the horse riding. He didn't appear. सर ने जो बताया कि जो पाश्चात्य जो ब्रिटिशर थे उनके अंडर में कोई जॉब करना, गुलामी करना उनके ब्लड में नहीं था। आज के जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चों को अपना जो दिमाग है, अपनी जो फिलोसफी है, वो बच्चों पर सपोज करते हैं, वही एक प्रोफॉर्मा में डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन the children are not successful in their life after that in that atmosphere of the family. हम देखते हैं, આપણે જોઈએ છે કે અત્યારે ઘણા લોકો વિદેશ જવા માટે કેટલું કામ પણ કરે છે, કેટલા કરોડો રૂપિયા ખર્ચે છે, ત્યાં જઈ શકતા નથી, અમેરિકા જવા માટે, કેનેડા જવા માટે, બીજે જાય, શા માટે? તો એ આજના નવી પેઢી માટે, નવી જનરેશન માટે આજના જે મેઇન આપણા જે ઋષિ છે, આપણા જે ગુરુ છે મહર્ષિ અરવિંદ, એ આપણને ઘણું બધું શીખવે છે. From his life we will have to learn up to the life. From today he is very very important. આજનો દિવસ એ નવી પેઢી માટે, વિદ્યાર્થીઓ માટે, તમામના માટે એક ચિંતન મનનનો વિષય છે. અને પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ છોડીને જે ભારત માતા માટે, ભારતના માટે, એક માતૃભૂમિ માટે જેમને સમર્પણ કર્યું લાઈફને, એમાંથી જ એમની લાઈફમાંથી આપણને ઘણું બધું શીખવાની જરૂર છે. After coming back to India, બરોડામાં મહારાજા સયાજીરાવ કેમ્પસમાં એમને સારું એવું યોગદાન એજ્યુકેશન ફિલ્ડમાં આપ્યું. મહર્ષિ અરવિંદની ફિલોસોફી એ વધારે અગત્યનું એ છે કે તેઓ એક ગ્રેટ યોગી હતા, ગ્રેટ ફિલોસોફર હતા, એમિનન્ટ એજ્યુકેશનિસ્ટ હતા. અને વધારે અગત્યનું એ છે આધ્યાત્મિક ઉન્નતિના માર્ગે રિલિજિયસ જ્ઞાન, યોગની તાલીમ અને બ્રહ્મચર્ય એ એમના જીવનના પાયાના ત્રણ અગત્યના માઇલસ્ટોન હતા. According to Aurobindo, real education is that which provides a free and creative environment to the child by developing his interest, creativity, mental, moral and aesthetic senses. મહર્ષિ અરવિંદના જે કેટલાક પોઈન્ટ્સ છે એમના કહેવા પ્રમાણે એજ્યુકેશનની અંદર એજ્યુકેશન should be child centered. હાલના આપણે વર્તમાન સમયમાં જોઈએ છે તો જે પ્રાચીન સંસ્કૃતિ, ધર્મનું શિક્ષણ, સંસ્કૃતિનું શિક્ષણ આપનારી જે સંસ્થાઓ છે એ ધીમે ધીમે આપણી આજુબાજુ નજર કરીએ તો લુપ્ત થતી જાય છે. એક ઇંગ્લિશ મીડિયમનું કલ્ચર વધારે ને વધારે ડેવલપ થઈ રહ્યું છે. કેજી થી માંડીને ઠેક સુધી ઇંગ્લિશ મીડિયમને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે. માતા પિતા ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણેલા ના હોય છતાં પણ પોતાના બાળકોને તેઓ ઇંગ્લિશ મીડિયમ પર ભાર આપે છે. એનઈપી 2020માં વધારે મહત્વ મધર ટંગને આપવામાં આવ્યું છે. માતૃભાષા દ્વારા શિક્ષણ in our higher education, in medical education and engineering education also, Narendra Modi ji has implemented that
All the medical education also will be provided in Gujarati also, mother tongue. Therefore, the best doctors will be available in the society. So in the sense, the true education will be given in mother tongue only. There should be perfect liberty for the child, which is not available today. Education should be related to the life of a child. Education should be according to the mental aptitude. Very, very important point is this, mental aptitude. We don't see in our child, in our children, we don't try to understand the mental aptitude, abilities. वो क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, वो हम सोचते नहीं है अपने बच्चों के लिए. वो हमारी लाइफ की करुणता है. And psychological needs of the child. Education should be imparted through the medium of mother tongue. Very, very important. जो अभी बहुत सालों के बाद हमें ज्ञान हुआ कि मदर टंग is very important. Education should bring out the latent power of a child. जो आंतरिक शक्ति है, जो आत्मा के साथ परमात्मा का संबंध है, उसका जो ज्ञान है और उसकी जो एबिलिटीज है, उसको डेवलप करना जरूरी है. एजुकेशन शुड हेल्प to achieve the physical purification of the child. Education should develop consciousness. What is consciousness? हम जानते हैं, हम सही मार्ग पर यदि काम करते हैं तो there is no problem. लेकिन यदि हम कुछ गलत रास्ते से जाना चाहते हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं, तो हमारी अंतरात्मा की आवाज आती है कि दिस इज नॉट द राइट वे फॉर मी. मैं जो ये कर रहा हूं वो गलत है. आपको ऐसी अंतरात्मा की आवाज मिलती है, फिर भी यू डोंट हियर द वॉइस ऑफ योर कॉन्शियस. तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. एजुकेशन शुड डेवलप कॉन्शियसनेस. अंतरात्मा की आवाज सब लोग सुनेंगे, सब लोग अपना जीवन वही तरीके से अपनाएंगे, तो मुझे लगता है देयर विल बी नो क्राइम इन द सोसाइटी. जो क्राइम अभी बढ़ रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को जितना ज्यादा काम करना पड़ता है, देयर विल बी नो क्राइम. एजुकेशन शुड ट्रेन द सेंसेस ऑफ द चाइल्ड. द बेसिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन शुड बी brahmacharya. Brahmacharya is also very important. Education should develop the sound substances of the individual. Education should develop all faculties of the child in order to make him a complete man. संपूर्णता, अपूर्णता में से संपूर्णता तक ले जाने की जो जरूरत है, अभी NEP 2020 में all the skill development, holistic development, वो अब हम ऐड कर रहे हैं, तो ये जरूरी है. Education should develop all the faculties of the child in order to make him a complete man. Complete man बनाना बच्चों को जरूरी है. Religious education should be a part of education to prevent corruption in the country. आज की सबसे बड़ी समस्या करप्शन है, क्राइम है. वो एजुकेशन से ही सॉल्व हो सकती है. जो नई जनरेशन है उसको ये रिलीजियस एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन जो इंक्लूड करना जरूरी है, वो अभी हम कर रहे हैं. तो संपूर्ण विश्व गुरु के अंदर भारत की जो प्रतिभा है वो डेवलप हो जाएगी. Education should create dynamic citizens so that they may be able to face the present challenges and meet the needs of the modern complex life with very, very flexible mode. Now, education should be given by the curriculum. अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, ये भी महर्षि अरविंद ने हमको बताया है.
there are 5 principles of curriculum construction. Number 1, curriculum must be interesting to the child. बच्चों को उसमें अच्छी तरह से इंटरेस्ट होना चाहिए. Number 2, curriculum should include all subjects and activities which promote mental and spiritual development. Number 3, the subjects of a curriculum should be able to motivate the child to learn. हमें उसको सपोज नहीं करना है कि भाई आप पढ़ना बैठ जाओ, लेकिन अंदर से उसको प्रेरणा होनी चाहिए भाई आई शुड लर्न. वो जब अंदर से जोत जलेगी तो बच्चे को हमें कुछ भी बताने या फोर्स करने या कोई पनिशमेंट देने की घर में जरूर नहीं पड़ेगी. Number 4, curriculum should activate the creative potentialities of the child in order to develop him into a real man. देखो आज की सबसे बड़ी समस्या, हमें रियल मैन अनुभव बहुत कम होते हैं. रियल, who is a real person? A real person is that who guide us, who help us, who motivate us in all the circumstances. जब हम सुखी होते हैं तो सब लोग हमारे पास होते हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हमारे पास कोई नहीं होता है, हमारा अंतरात्मा परमात्मा होता है. तो ये लाइफ की सबसे बड़ी करूणता है. तो इन दैट सिचुएशन आप देखते हैं स्टूडेंट्स आर अंडर स्ट्रेस. निष्फलता के अंदर स्ट्रेस है, वो आत्महत्या करते हैं. क्यों? दे हैव नो प्रॉपर internal moral power, potentiality in their body, in their life. धीरज, सहिष्णुता, संयम, वो सब जरूरी है. तो ये ज्ञान हमें महर्षि अरविंद ने दिया है. Number 5, curriculum should motivate the children towards the attainment of up-to-date knowledge of the whole world. समग्र जो विश्व है उसका ज्ञान हमें अभी मिलना जरूरी है. Now, place of a teacher, गुरु का स्थान क्या है वो भी हमने ये महर्षि अरविंद ने हमको बताया. He should be saint, वो संत होना चाहिए, शिक्षक संत होना चाहिए, योगी होना चाहिए, to be a good teacher. His business is to suggest, उसका जो व्यवसाय है, बिजनेस में से जो व्यापार करते हैं वो नहीं, बिजनेस में जॉब. टीचर की जो जॉब है, अध्यापक की जो जॉब है, is to suggest, not to impose. Number 3, he is not only instructor, but he is the helper and guide to the pupils. He should stimulate the child in order to develop him naturally. अपने आप वो डेवलप हो जाए उस तरह से नेचुरली उसका ज्ञान उसको होना चाहिए. His role is to prepare the child to serve the suffering humanities. जो अपने आसपास जो दुखी है उसको कैसे सहानुभूति रखना, कैसे प्रेम रखना, कैसे मदद करना, ये ज्ञान भी जरूरी है. And he will be given by the true teacher. जो अच्छे जो शिक्षक है, अध्यापक है, वो अपने बच्चों को ये ज्ञान दे सकते हैं. And to help the society and the humanities. In short, Maharishi Aurobindo has very important role in our India, and he has given the true pathway of our life to the new generation also. Swami Vivekananda, Maharishi Aurobindo, Rabindranath Tagore, ये लोगों ने हमें जो भारत की जो संस्कृति है तो उसकी जो हमें एसेट दिया है, जो हमारे पास संपत्ति है, भौतिक संपत्ति तो कल खलास हो जाएगी, लेकिन ये जो आध्यात्मिक रिलीजियस संपत्ति हमें दिया है, नॉलेज, इट विल रिमेन फॉरएवर. हम यहाँ नहीं होंगे फिर भी वो संपत्ति यहाँ रहेगी. नई जनरेशन के लिए
This is very, very important. And I will conclude this speech by some words that today Indus University has organized this very, very important and the best topic to the new generation. I think from this university, we will have to learn much more in our life today. I request all the students to get the true knowledge, not only for this national seminar or certificate, but in your life, you try to implement what you get knowledge from all the speakers and all the participants, from your colleagues also, from your professors also today. Thank you all. I'm sorry to just barge in this way, but I just thought I will use this particular platform wherein I'm getting all the presence of the esteemed delegates from different institutes and universities, also the representatives from all for our government offices. Just to announce one of the more upcoming events of Indus University. I could have done it right in the beginning in my address, but since I had mistake, I just thought let me not miss out these particular opportunities when all of you are present out here. Indus University is collaborating with LIFE. LIFE is a sector of C20, which is the working group of G20. So all these particular, I would say, the deliberations and all that happens ultimately gets communicated together and it goes to the policy making decision of the government. So we are proud to announce that in the month of May 27 and 28, we are coming ahead with one of such event, which is called as the Acharan, which is again an initiative by our Center for Indic Studies. We are planning a 2-day conference in Acharan, which is the Indic Wisdom for Sustainable Lifestyle. And this has been done along with the LIFE, which is a working group of C20, and all those particular debates and discussions will yield into certain I would say documentation which will be presented for policy making to the government. So it's my humble appeal to all of you, like-minded people who are into this particular field, and since you have made it today to the university, please book your these 2 days, 27th and 28th May. We would love to have you here again and be a part of that particular event. And we will be sending you an invitation for that part, but be a part of us and be a part of that particular journey. Thank you so much. Thank you, Sandeep sir. I would like to thank Professor Dr. K.B. Vyas sir also. Thank you, sir, for sharing more perspectives of Sri Aurobindo sir's teachings and values. May education bring out the latent power of each child and develop consciousness. Thank you very much for your views. We are joined by a few dignitaries. We are joined by a few more dignitaries, and I would like to call Dr. Deepti Sethi to do the honors, please. Dr. Pankaj Rai Patel from Gujarat Technological University, Vice Chancellor, sir. Thank you, sir. Thank you for coming. Dr. Soda, Director, School of Commerce, Gujarat University. Thank you, Deepti ma'am. Now I call upon Dr. Prerna Mishra, a senior IMS faculty. Mr. Dharmesh Chawla, OSC, Gujarat University. Dr. P.R. Patel, OSC, Admin in Finance.
Thank you. And now we move on to the last session of the keynote lecture before lunch. So, Professor N. Khandelwal ji, who's joined us online, is currently Honorary Director, Ved Vyas Chair Center of Indian Management, Sri Aurobindo University, Gujarat. He has guided 23 PhD scholars, completed 10 tourist PhD research projects, published 56 research papers, 5 books, working as professor. Post-retirement also, he has published around 25 books based on research. Thank you very much, sir, for joining us. And over to you, sir. Hello, Yes, sir. am I audible? Yes, sir. Okay. તમને બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, વંદન પ્રણામ. महर्षि अरविंद's 150 years celebration you have organized with such a nice program. I congratulate both the organizers. Honorable dais and seekers of knowledge in the audience. I have spent more than 2 decades on research related to Indian management thought. And after retirement, I have got published about 25 books related to Indian management. As you know, that in India we have a large number of Indian institutes of management, but not even a single institute of Bharatiya management is there. Institute of Indian Management is yet to be established in India. Saurashtra University decided to establish Global Center for Indian Management, where I joined as founder director and completed 6 research projects related to this theme. All of these reports have been published in book form. After that, I was called for establishment of Ved Vyas Center for Indian Management by Sri Guru Gobind University, Godhra, which is a tribal area. I accepted this challenge, and there also 5 research projects have been completed. Out of them, 2 important projects I would like to mention, because now Gujarat is going to implement the new education policy 2020. For that, we need how to and what to teach from Bhagavad Gita. Maharshi Aurobindo was also a great devotee of Bhagavad Gita. He has quoted Bhagavad Gita in all his works. So, I have completed 1 research project that from Bhagavad Gita, what should be taught to school level students. And for management students and other social sciences scholars, what can be taught from Bhagavad Gita? So this project has been completed. In book form, it is yet to come out. Another important project related to new education policy implementation is, suppose we decide to teach Sanatan Dharma. Dharma does not mean religion. Dharma means duty, eternal duties of human beings.
So far as my own discipline is concerned, today I am going to talk within the limited time allotted to me. Can we establish Maharshi Aurobindo as a management thinker or management guru before the world? When I visited Auro University, Surat, the Vice Chancellor gifted me one voluminous book by Sri Aurobindo. It was The Divine Life. I felt very attracted to go through the book. And today's address is based on first part's second chapter, which is related to Sankhya philosophy as well as Vedic philosophy, both. Maharshi Aurobindo has harmonized Sankhya Yoga or Sannyasa with a Karma Yoga of Bhagwan Sri Krishna, Gita. Now, several of you may not be aware about our Vedic terminology. So briefly, I will tell about this first. First term is Brahman. Brahman is the top authority of the whole universe. He is invisible, unmanifest, eternal, omnipresent, omniscient, and he has no gunas of prakriti. He is formless, nirakar, nirvikar, and ajar amar. He has no birth and death. These are the attributes of Brahman. He is the top management in management parlance. Then we move to next term is Purusha. It is from Sankhya Yoga, not Vedic philosophy. In Sankhya Yoga, Purusha means Atma. He is witness, he is bounded or embodied Brahman. So, Purusha and Atma and Paramatma, from the viewpoint of Advait philosophy of Jagadguru Adi Shankaracharya, there is no difference between Brahman and Purusha. Then next term comes the Ishvara. Ishvara is manifest. It has adopted gunas of nature also. And these are the roles of Brahman for which he takes some form. Job of creation is done by Brahma. Job of maintenance is done by Vishnu. And creative destruction or innovation is done by Shiva or Mahesh. Brahma has Rajoguna, Vishnu has Sattva-guna, and Mahesh has got Tamo-guna. So creation, maintenance and creative destruction, these three are important roles to be played by a top leader in any organization. So this is very much true even in Western management also, that a top leader has to take care of creation, maintenance of the organization, its employees, etc., and then innovation. Up to this level, it is top management only. Then Maharshi Aurobindo talks about Maya, illusion or delusion.
This is supernatural, magical power, and this is beyond our limited reasoning or rationality. It is very difficult to understand plays of Maya, and several rationalists may fail. We have just now known about Maharshi Aurobindo. His parents sent him to England and they wanted him to become ICS officer, great officer, big officer. He took Western education, then came down to India. He returned to India. He did not go for Indian civil service. He became a teacher. And teacher's profession is very noble profession. And whatever changes have taken place world around, it is due to the performance of several important teachers. In India, we know about Chanakya. He changed over the government and he established rule of Chandragupta Maurya Vansh. So he selected the right profession at his own. He did not go by any pressure of family or parents. After that, he went to Calcutta. He became a freedom fighter. He was jailed also. And lastly, he was diverted to meta philosophy, अपने meta अध्यात्म में से. Then he talks about Prakriti, nature. Prakriti has three attributes: Sat, Raj, Tam. When they are in equilibrium position, till then nothing can be created. The creation of universe was possible only when there was disequilibrium in these three attributes of nature. The same thing happens in management field also, which I will just talk. One guna dominates and other two gunas remain suppressed. It is gone on changing from time to time. Then Maharshi Aurobindo has talked about Shakti or power. In all the three roles of Brahman, a top management role, there is Shakti or power also. It is creative, dynamic of all divine workings. The whole existence, it is triple power. Knowledge or Saraswati is with job of creation. With Vishnu's maintenance role, there is Lakshmi or Mahalakshmi. And then, so far as creative destruction or Tamoguna is concerned, there is Durga. So, it is needed for protection. You may create, you may produce, you may maintain also, but what about your protection of the organization? For that, Durga Shakti is also needed. So, now you think about management hierarchy, which you must have learnt in principles of management or general management. There is top management, then there is middle level management, and then lower level or operating level management is there. So, three-tier management, we can say it is line management, part of line management. There may be staff positions also in an organization. Now, Aurobindo has given a very, very
transformational concept related to integral yoga. He says that there may be diversities. From diversities, we have to search for the oneness. Brahman is one. There is no division, no discrimination. He is one only. But when in management hierarchy, we identify three levels, three type of positions are there, then for efficient working of organization, effective working of organization, it is necessary that top management's vision, top management's mission must be shared at all levels. खंडेलवाल सर, जी सर प्रणाम सर। जी बोलिए। सर अभी टाइम ज्यादा हो गया है। हाँ, थोड़ा सा एक बार ब्रीफ में ही मैं इसको पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि जी, दिस सर। फिलोसफी इज टाइमलेस फिलोसफी जी, सर। and we have bondage of time. So Sorry, this is sir. a difficulty, but anyway, I am just trying to illustrate जी, सर। that Maharshi Aurobindo, who belongs to Vedic Maharshi Parampara of Uttar Mimamsa or Vedanta, he has given this concept which can transform the Western management in a big way. And Indian management can be established as at world level as an alternative to the Western management, and our Maharshi Aurobindo can also be included as a management guru. From his philosophy, we can build up an alternative or spiritual side of management. So if all feels that they are Brahman, because Maharshi Aurobindo says that all are Brahman only, nothing else. Top management is Brahman, middle level management is also Brahman, and lower level management is also Brahman. So whatever vision is there, whatever mission of organization is there, it must be shared from top to bottom. Even the driver and peon must also be committed to realization of that vision or mission. Only then this is possible to happen. Then so far as stakeholders are concerned, there are internal stakeholders, there are external stakeholders also. We talk about the corporate social responsibility, so many things. Maya is very much present in the field of marketing. But if we feel that all stakeholders, whether internal or external, they are also form of Brahman only. So when we are convinced that the whole universe is Brahman only, nothing else. What is created, what is creator, what has been created, all is one only. So only Brahman only. So when this is accepted in management, then there will be no compartments like top management, middle management, and lower management, and nobody will think about cheating. No Brahma will try to cheat other Brahma. So all are one only, and they will have to follow this matlab holistic view given by Aurobindo. Maharshi Aurobindo Brahman concept is there, it will apply to all levels. So with this, I would like to cut short my views. Shakti, Purusha, Jivatma, Sankhya Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, so many things are there. So Brahman, Neti Neti or Iti Iti, but Aurobindo has made it universal, that this whole universe is Brahman only, nothing less, nothing
more. So Brahman is the cause, material, product. He is the creator, creation, created. He is the maintainer, maintaining. He is the dissolver and dissolved also. So this type of philosophy Maharshi Aurobindo has discussed in this chapter. Book is very voluminous and much more research can be done on the basis of this divine life book, and Maharshi Aurobindo can be established as a management guru at world level. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. N.M. Kandewalji. We are very sorry that because of paucity of time, we had to request you. Otherwise, it would be an honor for us if you would come to our university also and address our students. Thank you very much. Thank you for your views on dharma, sir, duties of human beings and management hierarchies. I'm sure the management students have learned from you. Thank you, sir. Thank you for joining. Ladies and gentlemen, with this, we come to the conclusion of the keynote lectures. We would be I thank all the dignitaries for joining us. We would now have a next session, which is on panel discussion on Aurobindo thoughts on education and its impact on spirituality. I request all students to join us by 1:50 in the auditorium. We'll have a quick lunch, and it's a tough day, but we all will be there. Thank you very much. Volunteers are requested to guide the dignitaries, please. Thank you. Recording stopped.
Recording in progress. Of a great personality who lends a charisma to the occasion. We have with us respected panel member Dr. Jayendra Singh Jadhav, Dr. Balenduji Vaishnav, Dr. Sharad Joshi, Dr. Girish Thakur, and Dr. Vedvas Dimeji. We are glad to invite all the respected panel members on the dais. वीडियो स्टार्ट है वीडियो स्टार्ट It's my honor to introduce to all of you our dignitaries of today's event. Our first panel member is Dr. Sharad Joshi. He has held several prestigious positions. Few among them are Pro-Vice Chancellor of Maharaja Sayajirao University of Baroda. He is also advisor of Public Service Examination Selection. He is an expert member of AICTE committee, having a teaching experience spanning 30 years. He is deeply influenced by Sri Aurobindo's philosophy. Presently, he is the chairman, Sri Aurobindo Society, Gujarat. Sir is also a committee member of celebration of 150th birth anniversary of Sri Aurobindo by Government of Gujarat. Our next panel member is Dr. Jayendra Singh Jadhav. He is the member secretary, Gujarat Sahitya Academy, Government of India. He is having 12 years of experience in teaching and research. He has qualified for GPSC examination 3 times. He is a member of Board of Studies of Gujarat University, Govind Guru University, and Bhakta Kavi Narsimha Mehta University, Gujarat. He is also member of Task Force NEP, Government of Gujarat and Uttar Pradesh. Currently, he is serving as a National Coordinator, Management Education at Shiksha Sanskruti Utthar Nyas, New Delhi. We have also with us Professor Dr. Vedvas Dimeji sir. He has extensive experience of 27 years. At present, he is Executive Vice President, Indus University. He was a former Vice Chancellor in Gokul Global University and Siusha University. The fourth panel member we have is Dr. Girish Thakur. He is the former professor, principal of Sankul Niyamak Palampur College. He is the ex-OSD of Sri Somnath Sanskrit University and Vidya Vachaspati Sanskriti University. The university which is awarding the Delete. He has been awarded with the Sanskrit Gaurav Puraskar, Government of Gujarat.
He is the ex-chairperson of Sanskrit Bharat Gujarat. Currently, sir is Rashtriya President of Akhil Bharatiya Itihas Sankalan Yojana. Also Emerite Professor of Lakush Yoga University. We have one more panel member, that is Dr. Bhalenduji Vaishnav. He is a chairperson of Sri Aurobindo Chair of Integral Studies, Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar. He is a professor and head of the Department of Medicine, Pramukh Swami Medical College, Bhai University, Karamsad. So here we are starting with our panel discussion. Each panel member will be given maximum 7 to 8 minutes. And after that, the students can raise their question after listening to all panel members. So starting with you, Dr. Sharat Joshi sir. Dr. Sharat Joshi sir. So please come over here. Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Namaste. Okay. All my esteemed colleagues on the panel discussion, dear faculty members of the Indus University and the students. The topic of today's panel discussion is Aurobindo's thought on education and its impact on spirituality. Actually, if you look at from the external point of view, spirituality and education are two different things. But in Sri Aurobindo's philosophy or in Sri Aurobindo's vision, both are combined very well. If we look at the overall comprehensive life work or life mission of Sri Aurobindo, he has written profusely. He has written about 30 volumes now available as complete works on Sri Aurobindo. There are major works, but more than what he has written, what he has done for humanity is the main thing. He did tapasya for 40 years in Pondicherry from 1910 to 1950 when he left his body. So for 40 years, when he had two major realizations before he went to Pondicherry, what kind of sadhana did he do? He had first major realization in Baroda, where he had the realization of vacant Brahman, Niranjan Nirgun Nirakar Brahman. Then he went to Calcutta, and in Alipur jail, he had the realization of Vasudeva Sarvam. Everywhere he saw Vasudeva. In everything he saw Vasudeva. In inanimate things, in animate beings, everywhere he saw Vasudeva. So what did he do tapasya? Because normally in our spirituality is the end of spirituality. Then you have these two kind of major realizations. So what kind of tapasya did he do? He has said it very nicely. That up till now in our India, or let us say on the world, on the earth, people have come, great men have come, the prophets, yogis, avatars have come, and they did something, they did some work. And because of that work,
Few people have been benefited, few people have been saved. But up till now, humanity is remaining as it is. Humanity has not been saved. So my task, I cannot say it in that word, but somebody should do for the whole of humanity. And humanity means not only humanity, earth. And so something must be done for the elevation of earth itself. So ये क्वेश्चन अर्थ को बचाने का, ये क्वेश्चन अर्थ को बचाने का है और ह्यूमैनिटी को बचाने का. ह्यूमैनिटी अगर can do that, then earth can be saved. So he did tapasya for that. That tapasya brings out a up till now not manifested power of superman. हमारे ट्रेडिशन में है, जिसे हम महर लोग कहते हैं. आज सुबह में अपने he narrated 7 Buhu Bhuvaha Swaha Maha Janaha Tapa Satyam. Buhu Bhuvaha Swaha we use in Gayatri. The Maharloka is supermind of fear. And that Maharloka power is not manifested on earth. If that can be manifested, the earth can be saved. There can be a transition, just as there has been a transition from matter to vegetable kingdom, to vegetable kingdom to animal kingdom, and animal kingdom to man. Similarly, there has to be now a transition from man to superman. And that can be done only if that power, Maharloka power, can be brought down on earth, made it active, then only it can be done. He did tapasya for 40 years to bring down that power on earth and to manifest it in himself, so that a first seed on this earth can be sown, and then it can multiply itself. So in a normal parlance, we can say that he initiated the supermanhood in his own being, so that it can be multiplied. Now comes the problem of education. Now, his philosophy is that it is not enough to have a realization of the Brahman or realization of Purushottam, as the Gita says, but it is a question of manifesting it over here on earth. The simple question is, up till now, earth was considered to be an illusion in the illusionist philosophy. So, illusionist philosophy means that the earth is an illusion, the whole world is an illusion. Or, if we do not go to that extent, we can say that nothing can be done on earth. No spiritual power can stay for long on earth. It is all vain. But then the main question is, then why this earth was created? Or why the physical universe was created? Was it a dream? Was it a dream of the God? Or why it was created? If it has been created and the only creator is the Brahman, only creator is the Purushottama, then there must be some purpose. And we know in the Upanishad that they say, Eko Ham Bhavasya. So it is to multiply himself. It is to become many. And who is making this will? It is the Brahman himself. The Ananda Chaitanya Gana, the Gana, Sachidananda Gana, Purushottama is having a will to multiply himself. That means what? That means that in the ultimate product on this earth must be like himself. So that means that there is an evolution. So that evolution has come up to human being. Now it has to go to. So supramental race must be established on earth. Or in our own being, we have two parts. We have Purusha and we have a Prakriti. Our divinity is there inside us, and there is a Prakriti, nature part. That nature part means we have a mind, we have a heart, and we have a body.
So if the perfect manifestation of the divinity has to occur, then it is not enough that we go above Prakriti, above nature and realize Brahman, but we must bring down that Brahman, that power of Purushottama, into our mind, our life and body. That must be realized, that must be transformed, so that a perfect multiplication of Satchidananda Ghana can take place on earth. Now there comes the education. The education is to train our parts, to train our Prakriti, to train our mind, to train our vital part, to train our heart, to train our body. So if this can be done in a perfect manner, so that the divinity can shine out from these parts of the Prakriti, then the effectuation or the transition from man to superman can be initiated. So his philosophy of supermind, his philosophy of the evolution of man to superman, and his philosophy of education, both are combined together. There is a single purpose in all these things, and that is to train our mind. Train is a very small word, but to transform our mind, our vital heart, our vital parts, our prana, and our body, so that that power can be absorbed, can be descended into our Prakriti, and Prakriti can be divinized. So for that purpose, there are 5 domains of education. Aurobindo's philosophy of education, as it is written in books, that was written much earlier. Nothing can be taught. The teacher is not a taskmaster, but a helper. But that was written much earlier in the first decade of the century, 19th century, 20th century, in earlier writings. But when he went to Pondicherry and did sadhana, together with the mother, they have evolved a education philosophy of education. And that philosophy of education, mother has said very clearly that people have an energy towards yoga. The word yoga. Yoga means something else to us. Yoga does not mean that to invoke or pray to the god or something like that. But yoga means नाक कान बंद करने का, समाधि में चले जाने का, बॉडी को ऐसे छोड़ देने का, वो ऐसा हमारा ख्याल होता है योग का. So people have some kind of a very fear about when you use the word yoga. But ultimately the goal of yoga is to train our body, to train our physical parts, to train our prakritic parts, so that we can receive the divine powers into us. So that is the whole purpose of education. So it is, education means yoga only, but in a modern world, in an educational parlance. So when we come to this, say, physical education has its obvious advantages that we should have. Our body must be trained. Our body must be supple. Our body must have strength. All this can be done by exercises. But that is not the only purpose. The whole purpose of, when you looked at it from the point of view of individual yoga, what it means is that the body must be made conscious. The body must be made conscious. In other words, when we say that I'm hungry, what do we mean? It is the body which is sending the message to the mind that body is hungry. But body itself is not saying that I am hungry. If the consciousness can be attached to the body, then we can feel that my body is hungry. So the consciousness must be imbibed into the body part, and that is the whole purpose of education of physical being. Similarly, heart must learn to express its feelings in a nice manner, in a very good manner. Mind must have certain capacities. That capacity means to put everything in a framework. Everything must be put in a, see, if you arrange your cupboard, some cupboards are put everything together.
without any kind of an order. But if you see the cupboard and identity of the cupboard, that means your mind is clear cut. So you should have a framework of understanding in which you can put everything at a place. You must have a power not to think, to silence the mind. That power must be also there. Similarly, if you talk about speech, you should be able to speak only what you want to speak, and not the useless words or talkative in a talkative way. So you should have control over the speech also. Similarly, there is a psychic education. Now, what do we mean by psychic, spiritual, and supramental education? There are 5 domains of education: physical education, mental education, psychic education, spiritual, and supramental education. So all these are domains of education. Now, what do we mean by psychic education? Psychic education means that we have in us a part which feels good, which feels some divinity around us, some good things around us. Sir, परीक्षा अपने पास से आती है क्या क्या वीजा का एनालिसिस Sure, I'm concluding. It's really very fast. So we should have that part in us so that we can feel something good behind these things. We can feel that there is a psychic things about these things. So these are the parts of the education we should inculcate so that ultimately there we can enhance the transition from man to a superman. I mean, spiritual man first and then superman. Thank you so much, sir, for sharing your knowledge. Request to you, Dr. Girish Thakur, sir, to share your point of view on thoughts of Sri Aurobindo in practice. So please, sir. इतना सारा हमने श्री अरविंद के बारे में अभी भी सुना है, सोचा है, उसमें कुछ भी ज्यादा मैं करना चाहता है। भोजन के उपरांत बैठे हैं इसलिए कुछ, हाँ, भोजन के बाद तो जो है मुखवास भी होना चाहिए, समथिंग लाइट। हम वैसे ही बात करें। जब जीवन की बात मैंने पढ़ा, मैंने सोचा, यहाँ पर भी सुना, तो मुझे श्री अरविंदो के साथ ही साथ बुद्ध का जीवन याद आ रहा। भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ, उसके पिता ने प्रयत्न किया था कि उसके जीवन में कुछ भी दुखदायी ना दिखे। बुद्ध ने सिद्धांत बनाया, सर्व दुखम दुखम, सुख की उसके आसपास रखो और सत्य क्या है उससे दूर रखो। बिल्कुल श्री अरविंद के बारे में और उनके पिताजी ने इतनी उसके बारे में ध्यान दिया कि उसके सामने हिंदी नाम से कोई उसको ना मिले इंग्लिश में जाने के बच्चे घर में जब से बचपन से उसको भाषा सीखने की शुरुआत होती है बच्चे की, तब से इंग्लिश ही पढ़ाओ। भारतीयता से, भारतीय संस्कृति से, भारतीय धर्म से, भारतीय सभ्यता से, भारतीय खान पान से, भारतीय विचारधाराओं से उसको बिल्कुल दूर रखो। जो हुआ था बुद्ध के जीवन में, आरंभ यही हुआ था। लेकिन उसी बुद्ध ने जगत को शून्यवाद का सिद्धांत दिया, क्षणभंगवाद का सिद्धांत दिया। इतना बड़ा सिद्धांत है वो क्षणभंगवाद का कि आज के विज्ञान को उसमें से मानना है। यही बात यहाँ पर हुई, इन्होंने अतिमनस का सिद्धांत दे दिया। अतिमनस को समझने के लिए मेरे मन की ताकत, क्योंकि अतिमनस। तो इन दो महापुरुषों को देखने के बाद मन में एक ही विचार आता है कि कृष्ण ने कहा था कि युगे युगे संभवाम्यहम्, जब भी जरूरत पड़ी मैं विश्व में अवतरण करता हूं तो मान लो कि ईश्वर ने ही अवतरण यहाँ पर किया है। अलग ढंग से, अलग रूप से। ये एकदम से हमें दिखता है कि सीधे ही कुछ
विरोधाभास दिख रहे हैं। जिस वातावरण में उनका उनका बचपन बीता, उनकी किशोरावस्था बीती, उनकी युवानी की आरंभ का समय बीता, वो वातावरण क्या था? और उस वातावरण कुछ भी असर न होते हुए, कुछ भी असर न होते हुए, पहनावे में भी असर न होते हुए क्या होते? विरोधाभास। भारतीय संस्कृति का कोई भी परिचय न हो, इसके लिए पूरे प्रयत्न, और संपूर्ण भारतीय संस्कृति की आत्मा को आत्मसात कर लिया। सेक्रेड बुक्स ऑफ एशिया उनके पढ़ने में आया, मैक्स मूलर का। उनके सामने भी कुछ लोगों को अब तो विरोध है कि वो भी परिपूर्णता से भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित नहीं करता, लेकिन फिर भी ये हुआ। उसके पढ़ने, उसके बाद में वेद और वेदांत, और उसके बाद में दुनियावी बातों में भारत में होने वाले अंग्रेजों के अत्याचारों की बातों को सुन करके, इंग्लैंड में रह करके, कैम्ब्रिज में पढ़ करके, आईसीएस की परीक्षा का अध्ययन करके उन्होंने अंग्रेजों का विरोध शुरू कर दिया। ये विरोधाभास। हमें सोचना यह है कि हमारे जीवन में विरोधाभास है क्या? नहीं। हम में हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ विरोधाभास है, कुछ ना कुछ संघर्ष की बातें हैं, और उन संघर्ष की बातों के समय में हमें इस जीवन चरित्र से क्या लेना है? ये एक बात है। अगर वो सेक्रेड बुक्स ऑफ एशिया नहीं आया होता, और क्या हुआ? अब देखिए, एक राष्ट्रभक्त, गुजराती में शब्द जरा ज्यादा अच्छा है, देश दास। दास अंदर एक आग जगी। किस चीज की? अंग्रेजों के 14 साल युवानी के साथ, किशोरावस्था के साथ इंग्लैंड में बिताने के बाद यहाँ करके उनके मन में जो दास जगी, शासकों के विरुद्ध में इतनी ज्वलंत भाषा थी उनकी, ऐसा कहते हैं वंदे मातरम में और जो कुछ छपे उसमें, ज्वलंत भाषा के द्वंद्वनी थे वो। इसलिए देशदास उनकी प्रकट होती थी एक तरह से। इतना सारा करके देखो, विशेष बात है, आईसीएस की परीक्षाएं पास की, आईसीएस न बनने के लिए प्रयत्न किए, उस पर की परीक्षा नहीं दी। यानी आईसीएस के विषयों में तो सबसे अव्वल रहे, लेकिन आईसीएस की परीक्षा नहीं। बीए 3 साल में होना चाहिए, 2 साल में सारी परीक्षाएं पास कर ली, 3 साल के बाद डिग्री मिल सकती थी, नहीं। फर्स्ट क्लास में बीए की परीक्षा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप लेकर के, लेकिन पढ़े, लेकिन पढ़ने के बाद डिग्री नहीं, क्योंकि तीसरा साल उन्हें वहां गुजारना नहीं था। विरोधाभास है ये सारे। और तीव्र बुद्धिमत्ता और तीव्र सत्य का आग्रह, उनको पनाह देने वाले, और हर चीज में जिनको श्रेष्ठता का हम कह सकते हैं, ऐसे गायकवाड़ एक समय जा रहे हैं, आगे घुड़सवारी करते हुए जा रहे हैं, लेकिन पीछे पीछे श्री अरविंद जा रहे हैं। उनको मालूम है कि अरविंद भी आ रहे हैं। उन्होंने देखा, गायकवाड़ ने, कि कोई एक वृद्धा, एक टुकड़ा जो होता है ना गोबर का, उसको उठाने के लिए प्रयत्न कर रही है। तो घोड़े से उतरे गायकवाड़, उन्होंने वो टोकला जो था वो उसके सर पे चढ़ा दिया, और फिर उनको मालूम था कि पीछे आ रहे हैं, तो थोड़ी देर खड़े रहे। आए तो उन्होंने देखा कि अरविंद के मुंह पर कोई भाव नहीं है, प्रतिभाव नहीं है, कि ये इतने राजा होते हुए, इतना बड़ा राजा होते हुए, इतना बड़ा शासक होते हुए भी इसने एक बुद्धा का गोबर का जो टोकरी थी वो उठा करके उसके सर पर रख दी, उसके लिए कोई प्रतिभाव नहीं था। तो उन्होंने कहा, क्यों तुम्हें खुशी नहीं हुई मेरे काम से? साधारण प्रश्न था, पूछ सकते थे। गायकवाड़ तो आदर करते थे बहुत, नौकर की तरह नहीं, गुलाम की तरह नहीं रखते थे श्री अरविंद को। मैंने यहाँ नौकरी करता है, ऐसा उनसे तो उन्होंने पूछा कि अरविंद, तुमको ये देख के खुशी नहीं हुई मैंने जो किया? अब क्या?
नहीं हुई ऐसा तो कह नहीं सकते, खुशी तो हुई थी कि मेरा राजा जो है ये भी कर सकता है कि मुद्दा की टोकरी और वो गोबर की टोकरी उठा लेकर उसके सर पर रखता है, अच्छा तो काम है। लेकिन ये तो श्री अरविंद, उन्होंने क्या कहा कि मैं तो ये सोच रहा था कि राजा का काम क्या है, नीचे से ऊपर उठाना है, ऊपर से नीचे लाना है। गोबर की टोकरी को उठा करके उसके सर पर रखना, ये उसका काम था, या उसको कभी गोबर की टोकरी उठानी ही न पड़े ऐसा निर्माण करना, ये उसका राजा का काम था। राजा का काम ये नहीं था, राजा का वो था जो तुमने नहीं किया। इतना सत्य किस साधारण भाषा। हाँ, वो गायकवाड़ था, समझ गए, दूसरे दिन ये व्यवस्था भी हो गई, मीडिया के लिए सारी व्यवस्था हो गई, ये बात है। लेकिन ये दोनों बातें इसमें प्रखर बुद्धिमत्ता भी है, व्यवहारुता भी है, और सत्य को निर्भीक रूप से कहने की शक्ति। साधना तो किस चीज की कर, इस देशभक्त के लिए उसके सर पर खून करने का आरोप लगे, उसको फांसी की सजा होना करीब करीब तय हो जाए कि अब तो इसको फांसी 4/9 की छोटी सी एक उसमें रहना, हवा पानी कुछ नहीं, पीने के लिए गरम गरम पानी, मलमूत्र की दुर्गंध। तो एक समय उन्होंने कहा, एक क्षण उसको ये भी विचारा गया कि मेरा दोष क्या है, हे भगवान तू क्या करता है, क्यों। लेकिन फिर क्रमशः जो होने लगा, उसके बाद उन्होंने ये प्रतीत किया, लिखा, लोगों को बताया कि मेरे ऊपर भगवान की ये दया थी, इतने दिन यहाँ पर रहने के बाद मैं ईश्वर के करीब पहुंच गया। प्रतीति हो कि ईश्वर ने अपने करीब लेने के लिए मेरी व्यवस्था निर्माण की। Sorry to interrupt, sir. अंतिम बात करके मैं बैठ जाऊंगा, तो मैं इतनी सारी शिक्षा की बातें हो गई, क्या ये आदर्श संभव है। तो ये हो जाता है कि क्या जो आदर्श उन्होंने शिक्षा के दिए, ये आदर्श संभव है। जो लोग पांडिचेरी गए हैं, जिन्होंने वहां चलते हुए स्कूल को देखा है, वो जरूर कहेंगे कि हाँ संभव है। मैं इसकी बात करके समाप्त करता हूँ, जो हमारे छात्रों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उस स्कूल में परीक्षा नहीं, उस स्कूल में टेक्स्ट बुक नहीं, उस स्कूल में एक वर्ग में 10 से ज्यादा छात्रों की संख्या नहीं, 10 से ज्यादा छात्र नहीं बैठे हैं, बातें होती हैं, कैरिकुलम नहीं है। कैरिकुलम नहीं है माने पाठ्य क्या, टेक्स्ट बुक नहीं है, लेकिन क्या पढ़ना ये है तय है। और ऐसा होता है, मैंने कहा ऐसा क्यों होता है, बिना पाठ्य पुस्तक के वो जो विद्यार्थी है वो पढ़ेगा क्या, और बिना परीक्षा के आप तय कैसे नहीं हुआ। वो प्रैक्टिकल उसके अंदर होते हैं। मुझे ये बताया गया कि आइए देखिए, छात्रों से पूछिए। ये सही बात है कि मैं गया पूछा, तो मैंने देखा कि हाँ ये तो संभव है, कितनी आसानी से, कितनी सरलता से, कितनी प्रसन्नता से अपने सर पर बिना पुस्तकों का बोझ लादे हुए, बिना ज्ञान का भार लिए हुए, वो सारे के सारे अपने एप्टीट्यूड के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं, पा रहे हैं। मनुष्य को मनुष्य बनाने की जो प्रक्रिया है, वो शिक्षण होना चाहिए, ऐसा अगर कहते हैं तो वो दुष्संभव नहीं है, असंभव तो नहीं है, दुष्संभव भी नहीं है, ये हो सकता है। जा रहा, तो इनके जीवन से हम बहुत कुछ सीधा ले सकते हैं। महान योगी हम नहीं बन पाएंगे, कोई और ठीक है, अगर बन गए तो भी अच्छा। तत्व ज्ञान को बचाना, मैं प्रमाणिकता से कहता हूँ, मैंने अच्छे तो गीता पढ़ा, मैंने सावित्री पढ़ा,
तो मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। मैं अपने आप का अभिमान करता रहा कि मैं भारत, कुछ भी नहीं समझ पा रहा। उस तत्व ज्ञान को हम समझ नहीं पाए, ठीक है, लेकिन उस जीवन को तो समझ सकते हैं। इतना सीधा जीवन है। और योग साधना, योग की तो बड़ी अलग सी बात है, क्योंकि हमने योग को योगा बना दिया है और ब्रीथिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम को ब्रीथिंग एक्सरसाइज बना दिया है, और आसनों को एक्सरसाइज बना दिया है, फिजिकल एक्सरसाइज बना दिया है, योग का सीधे योगा कर दिया है। लेकिन योग क्या है, इसको भी समझना है। तो हमें श्री अरविंदो के जीवन को समझना होगा, करीब से देखना होगा, उसके भीतर थोड़ा सा प्रवेश करना होगा। ऐसे सेमिनार्स के बाद ऐसा कुछ हो सकता है, तो इसके लिए अश्रद्धा रखने का कोई कारण नहीं। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you so much. Over to Dr. Bhalendu Vaishnavi, sir. Please share your knowledge on core of Sri Aurobindo's teaching. શ્રી અરવિંદોની હાજરીમાં સૌપ્રથમ હું આદરણીય વેદવ્યાસજી અને પ્રોફેસર જયેન્દ્રસિંહજીને સાદર અભિનંદન આપું છું કે તેઓએ આ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું. મારા મંચસ્થ વડીલો અને પ્રોફેસર રાજેન્દ્રસિંહ, આપ સૌ શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ, आप रेलवे स्टेशन गया छो कोई बार? हाथ ऊंचो करो जे गया है ते बधा गया है। आप रेलवे स्टेशन केम जाइए? का तो कोई काम जवान होय तो जाइए। सांभळजो, का तो आपणे कोई गाम थी पाछा आवता होय तो जाइए। तीजी शक्यता है कि काचो આપણે કોઈને મૂકવા જઈએ, અને ચોથી શક્યતા છે કે કાચો આપણે કોઈને લેવા જઈએ. તમે આ વિદ્યાર્થીઓ કદાચ સમજી શકશે કે નહીં, હું માનું છું કે સમજશે, મોટા તો સમજશે. કોઈ વાર આ ચારમાંથી એકેય કારણ વગર પ્લેટફોર્મ પર ગયેલા છો? नहीं आवा, नहीं जवा, नहीं लेवा, नहीं स्टेशन पर जवानुं, प्लेटफॉर्म टिकट लेवानी, थोड़ी वार त्यां बेसवानुं, देखो झटको, कुछ आता है, कोई जाता है, कोई दौड़ता है, कोई हंसता है, साक्षी भाव डेवलप थशे. We are not involved in that activity. શ્રી અરવિંદોનું શરૂઆતનું જીવન એવી રીતે થયું. અધિષ્ઠાત્રી દિવ્યતા એવું ઘડ્યું કે એમને પશ્ચિમની સારામાં સારી બાબતોનું જ્ઞાન આવ્યું, અને પૂર્વમાં આવ્યા ત્યારે એમને ભારતની સારામાં સારી, કારણ કે જે ભારતમાં આવ્યા ત્યારે જાણે કે પ્લેટફોર્મ પર બેઠા હોય, એટલે કે સાક્ષીતાથી ભારતને જોઈ શક્યા. આપણામાં કહેવત છે કે ઘર કી મુર્ગી દાલ પર. આપણા લોકોને આપણી ભારતીયતાની કિંમત નથી. શ્રી અરવિંદ પરદેશ જઈને પાછા આવ્યા ત્યારે તેમને સમજાયું કે વિશ્વમાં પશ્ચિમે શું વિકાસ કર્યો છે, એમાં શું ખૂટે છે, ભારતે શું વિકાસ કર્યો છે, એમાં શું ખૂટે છે. એટલે એમણે કહ્યું કે માનવતાના વિકાસના તમામ આદર્શો, whether it is a social ideal, economic ideal, moral ideal, environmental ideal, religious or cultural, બધા માંથી તમે કોઈ પણ આદર્શ લેશો તો તમને એની સફળતા નહીં મળે. આપણે મુંબઈ જવું હોય અને વાપી સુધીની ગાડીમાં બેસી જઈએ,
બીજી ગાડી આપણને દાણું લઈ જાય, ત્રીજી ગાડી આપણને વલસાડ લઈ જાય. ત્યાં સુધીના તો બધા સ્ટેશનો આવવાના છે, પણ કોઈ પણ એમાંથી મુંબઈ નથી લઈ જવાનું. તો શ્રી અરવિંદોએ કહ્યું કે આધ્યાત્મિકતા એ ભારતના જનમાનસના મૂળમાં રહેલું સત્વ છે. આપણે ગમે ત્યાં પસાર થઈએ તો પણ આપણે આમ કહીએ છીએ, કારણ કે આપણા હૃદયમાં ભગવાન છે, સામેના હૃદયમાં ભગવાન છે. પરંતુ મેકોલેની શિક્ષણ હેઠળ એ આધ્યાત્મિકતા ઢંકાઈ ગઈ છે. એટલે આધ્યાત્મિકતાને બહાર લાવવી, અને બહાર લાવતા પહેલા એને ડિક્લેર કરવી કે હું ભારતીય, આધ્યાત્મિકતા મારો આદર્શ. એ ડિક્લેર કરી 150 વર્ષ પહેલા શ્રી અરવિંદોએ 100 વર્ષ પહેલા our first necessity is to declare this ideal. કે આપણામાં જે છુપાઈ રહેલી આધ્યાત્મિકતા છે એ ધર્મના સ્વરૂપમાં હોય, સંસ્કારના સ્વરૂપમાં હોય, આદર્શના સ્વરૂપમાં હોય, એને ડિક્લેર કરવી એ આપણું પહેલું કર્તવ્ય રહેશે. બીજી વાત, એ આધ્યાત્મિકતા ડિક્લેર તો ધારો કે આપણે કરી દઈએ, આજે ડોક્યુમેન્ટ બહાર પાડી કે ભાઈ આધ્યાત્મિકતા આપણું છે, તો શું? જે બધા વિદ્યાર્થીઓ છે નાના નાના સ્કૂલમાં, કોલેજમાં, એમના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ ઓફ લર્નિંગ ને ટ્રેન કરવા પડે. જે શબ્દાએ વાત કરી, મનની કેળવણી, શરીરની કેળવણી, પ્રાણની કેળવણી, અંતરાત્માની કેળવણી. કોઈ નાનું બાળક હોય એને હાર્મોનિયમ આપી દેવાથી, સિતાર આપી દેવાથી એ પંડિત રવિશંકર નથી બની જવા. એને બધા જ સ્ટેપમાંથી પસાર થવું પડે છે. એટલે આપણે ખાલી એને કહીએ કે આ કરિક્યુલમ છે તો કદાચ કરિક્યુલમનો સંતોષ થાય, પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ ઓફ લર્નિંગ એટલે આ બીજી વાત થઈ. બીજી વાત બહુ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવા જેવી છે. કોઈ એક વિદ્યાર્થીએ પૂછ્યું કોઈ એક સંવાદમાં કે આમ તો એવું કહેવાય છે કે સા વિદ્યા યા વિમુક્તએ. હવે હું 12મું ધોરણ પાસ થઈ ગયો છું, હું કયો કોર્સ કરું? મને એવી વિદ્યા આપો કે જેથી મને મુક્તિ મળે. અમારી કોલેજમાં આ 10 ડિગ્રીના કોર્સ છે, આ 10 ડિપ્લોમાના છે, આ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિપ્લોમાના છે, આ મેડિસિન છે, આ સર્જરી છે, આ કોમર્સ છે. તમે મને કહો, હું આંખ મૂકીને સહી કરી દઉં, ફોર્મ ભરી દઉં કે સા વિદ્યા યા વિમુક્તએ. આપણે શું જવાબ આપીએ? તો આમાં જાય એવું કહીએ. હવે જેની વધારે ડિગ્રી એમાં જાય એવું કહીએ. હિન્દીમાં તો ઉપાધિ શબ્દ છે. ઉપાધિ એટલે જેટલી મોટી ઉપાધિ એટલે તો એને આપણે દાદરો જ્યારે ચડીએ છીએ દરેક પગલે દાદરાનું આપણી પાસે રેલિંગ છે. એ છે આપણું દિવ્ય તત્વ. હવે પહેલા વર્ષમાં હોઈએ તો પણ આપણી પાસે દિવ્ય તત્વ હોય, બીજામાં જઈએ તો પણ દિવ્ય તત્વ, ગ્રેજ્યુએટ, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ, જ્યાં પહોંચીએ આપણે એનો આધાર લેતા છે. હું 2 કે 3 ઉદાહરણ આપીશ. હું આઈ એમ ફિઝિશિયન. હવે મને હું કહું કે ભાઈ હું આટલું ભણ્યો, આજકાલના છોકરાઓને તો ફી પણ વધારે, તો કે મને તમે મુક્તિ અપાવો, હું જો મારા દર્દીમાં ભગવાન છું તો મારી વિદ્યાએ મને મુક્તિ અપાવે છે. હું ભગવાન ના કહેવું તો મને વિદ્યા છે પણ મુક્તિ વાળી નથી. કોઈ નાનું બાળકને આપણે સંગીત શીખવાડીએ, કલા શીખવાડીએ, ચિત્રકલા, નાનું બાળક એને એમ કહીએ કે જો બેટા આ ચિત્ર તું સરસ, તને સર્ટિફિકેટ મળશે, પ્રાઇઝ મળશે, એક્ઝિબિશન થશે. પણ ખરેખર એ કઈ વસ્તુ સુંદર છે અને કઈ વસ્તુ અસુંદર છે એ બે વચ્ચેનો ભેદ પાડવા માટે તને ચિત્રકલા શીખવાડી છે.
બધા કાળા લીટા કરી દઈએ અને કે જો આ તો યોગ્ય નથી અને સુંદર ચિત્ર દોરીએ તો આ યોગ્ય છે. નાના બાળકમાં શું સુંદર છે અને શું અસુંદર છે એ છે ઇન્ટિગ્રલ એજ્યુકેશન. ખાલી ચિત્ર આપણે ચિત્ર કરતા ઘણું વધારે શીખવાડી દઈએ. આપણે કોઈ બાળકને સંગીત ક્લાસમાં મોકલીએ, તે તમારા ગીત ગાશે, કોઈ કોમ્પિટિશનમાં જશે, શો કરશે, ટીવીમાં આવશે. દેટ ઇઝ નોર્મલ એજ્યુકેશન. પણ એ સુંદર ભાવથી ગાય મનમાંથી, કોઈ શિવજીએ તને મોટું છે તુજના ગાય, તો એને એમ કહ્યું કે સંગીત થકી તું તારા અંતરાત્માની સંપર્કમાં આવવાનો એક છે. ઇન્ટિગ્રલ એજ્યુકેશન એટલે જે બહારનું કરિક્યુલમ છે એની પાછળ રહેલા ભગવાન સાથે એને જોડવું. પછી એટલે સાવિત્ર્ય વિમુક્ત એટલે ઇટ ઇઝ નથિંગ વિથ ડિગ્રી. It has to do with the way we learning, the purpose for which we learn. અને આ શ્રી માતાજીએ 3 ભાગ કર્યા છે. એજ્યુકેશનનું ડીપનિંગ એટલે કોઈ પણ વસ્તુના ઊંડાણમાં જવું. ઊંડાણ કે ફિઝિશિયન કેટલું બધું રિસર્ચ કરવું, મેલેરિયામાં, ડેન્ગ્યુમાં, આ એન્ટીબાયોટિક, તે એન્ટીબાયોટિક. ઇટ ઇઝ ડીપનિંગ. પણ સેકન્ડ ઇઝ વાઇડનિંગ, એને વિસ્તારવું. સમાજ સાથે, દર્દી સાથે વિસ્તારો. બીજા બધા ખાલી ડેન્ગ્યુ નથી, એની સાથે કેટલી બધી સંવેદના જણાયેલા છે. એટલે ડેન્ગ્યુ થાય તો ખબર પડે, કોવિડ થાય તો ખબર પડે. કોવિડ એટલે કઈ વાયરસ નથી. અને ત્રીજું હું એને સાથે સંકળાવું. એટલે ડીપનિંગમાં તો આપણે બધા એક્સપર્ટ છીએ. આપણા કરતા વેસ્ટર્ન લોકો બહુ વધારે એક્સપર્ટ છે. વાઇડનિંગ અને હાઇટનિંગ એ આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિનું તત્વ છે અને આપણે એને સ્વીકારવું જોઈએ અને આપણે એના માટે ગૌરવ અનુભવવું. તો આપણને આજનો પ્રસંગ થયો છે, શોભિતનો પ્રકાશ ક્યાંક ને ક્યાંક કામ કરી જશે, આપણે બધા બુહાર કરી જશે. હા, તમને બોલ્યા મારા મગજમાં પણ ઇટ સર્વડ એ કોર્ડ. તો મારા ઇટ ઇઝ યુઝફુલ ફોર મી. અસ્તુ. Thank you, Balaji, Vishnu sir. Thank you so much. Now I request Dr. Jayendra Singh Jadhav sir to overall sum up the conclusion of the panel discussion. નમસ્કાર. વિદ્યાર્થીઓ સામે જ્યારે વાત કરવાની છે તો શ્રી અરવિંદ અને શ્રી માતાજી બંનેને વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ ગમતા. યુવાનો માટે એમણે કહ્યું છે કે ભારતનું ભાવિ એ યુવાનોના હાથમાં છે, યુવા શક્તિના હાથમાં છે. તો એવા યુવાનો તમે છો ત્યારે આ સમજવા માટેનો તમારા માટે એક બહુ સારો અવસર તમને તમારી યુનિવર્સિટી આપ્યો છે. મને બરાબર યાદ છે કે હું જ્યારે કોલેજમાં હતો ત્યારે આવું જ એક વ્યાખ્યાન શ્રી અરવિંદ ઉપર ગોઠવવામાં આવેલું. પછી મને એમના જીવનમાં થોડો રસ પડ્યો તો મેં આગળ પણ વાંચ્યું અને એમ કરતા કરતા ધીરે ધીરે યાત્રા શરૂ થઈ અને હું એમને થોડું ઘણું સમજી શક્યો, કહી શકીએ ચાલે. તો આ જે પ્રસંગો છે એવા દિવ્ય તત્વોને પામવા માટેના પ્રસંગો છે. મારે બે જ વાત કરવી છે કે શ્રી અરવિંદની એજ્યુકેશન ફિલોસોફી પર જે અહીંયાથી વાત કરવામાં આવી, જોશી સાહેબે પણ વાત કરી, વૈષ્ણવ સાહેબે બહુ સરસ શબ્દ ઉપયોગ કર્યો, સાક્ષી ભાવ. સાક્ષી ભાવ એ જ્યારે જેલમાં ગયા ત્યારે જેલની અંદર કોઈ પણ કારણ વગર, એ તો ક્યાંય સામેલ પણ નહોતા અને એમને પકડીને જેલમાં પૂરી દેવામાં. હવે આપણે સજ્જન વ્યક્તિ હોય અને કશું ના કર્યું હોય અને પ્રિન્સિપાલ આપણને વઢે તો એ મનમાં કેટલું બધું થાય છે. આપણે કેટલું બધું કહીએ છીએ, કેટલો બધો બળાપો કાઢીએ છીએ, મન દુઃખી થાય છે.
પણ શ્રી અરવિંદને શરૂઆતમાં એવું લાગ્યું ઠાકર સાહેબે જોયું, પણ પછી તો એક સ્થિતિ એવી આવી ગઈ જે ગીતામાં સ્થિત પ્રજ્ઞ ભગવાને કહ્યું છે એવી સ્થિતિ આવી ગઈ. અને પછી સાક્ષી ભાવ એવો આવ્યો કે બધામાં એક પરમાત્માને જોવા લાગ્યા. આ સાક્ષી ભાવ કેળવવાનું એ શિક્ષણ શીખવાડવાનું છે. જો આપણે બધામાં પરમાત્માને જોઈએ તો મને લાગે છે આ દેશના 80% પ્રશ્નો તો એમ જ હલ થઈ જાય. 80% પ્રશ્નો. આજ વાત નરસિંહે બહુ વર્ષો પહેલા કરી કે અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રી હરિ દુજવે રૂપે અનંત ભાસે વૃક્ષમાં બીજ તું બીજમાં વૃક્ષ તું તો જો પટંતરો એ જ વાસે. આ ખુરશીમાં પણ ભગવાન છે, આ ટેબલમાં પણ ભગવાન છે, બધું જડ ને ચેતન બધામાં ભગવાન છે. જો આપણે સમજી લઈએ તો કોઈ સરકારી ઓફિસના ટેબલ પર બેઠેલો કારકુન એ કોઈની પણ પાસેથી લાંચ લેવાની હિંમત ન કરે. કોઈ પણ કર્મચારી ક્યારેય પોતાનું કામ વહેલું પૂરું કરીને છોડીને જવાનું વિચારે જ નહીં. કોઈ પણ વ્યક્તિ એ પોતાના કામની અંદર સંપૂર્ણપણે મન લગાવ્યા વગર કામ ન જ કરે, કારણ કે એને ખબર છે કે મને પરમાત્મા જોઈ રહ્યા છે. અહીંયા આપણે કાયમ જોઈએ છે, કોણ જુએ છે? પણ અમારું એક ડિપાર્ટમેન્ટ છે, બહુ નામ નહીં કહું પણ સચિવાલયમાં બહુ મુખ્ય ડિપાર્ટમેન્ટ છે. એટલે હમણાં હું ગયો હતો એ ડિપાર્ટમેન્ટમાં, પણ બધું સારું લાગ્યું. હંમેશા આપણે સારું જોવા ટેવાયેલા હોય એને આદત થાય. તો મેં એના ડીએસ હતા, મેં પૂછ્યું કીધું કેમ આજે બધું બરાબર છે? કીધું તો કે ના, નવા પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી આવ્યા ને એને 2 જણને સસ્પેન્ડ કર્યા છે, એટલે બધું બરાબર ચાલે છે. અત્યારે હાજર છે ઓફિસમાં. એટલે આપણે હંમેશા એવું ટેવાઈ ગયા છીએ કે કોઈ જોઈ રહ્યું છે એટલે મારે સારું કરવાનું. મારા માટે સારું કરવાનું એવું નહીં, કોઈ બીજા માટે કરવાનું. જો તમે સાક્ષી ભાવ કેળવો તો એવું થાય કે કોઈ જુએ કે ન જુએ, કોઈને પડી હોય કે ન હોય, કોઈ સારું કહે કે ન કહે, બસ મારું એક જ કામ છે, મને જે સોંપાયેલું કામ છે એ બરાબર રીતે સરસ રીતે મારે કરવાનું. આ એક સાક્ષી ભાવ કહેવાય. તો મને લાગે છે કે આપણે એની પ્રેક્ટિસ, તમારી યુનિવર્સિટીનું સૂત્ર બહુ સરસ છે કે વેર પ્રેક્ટિસ મીટ્સ થિયરી. ઘણા બધા આપણે ત્યાં ચિંતકો એવા હતા કે જેમણે માત્ર થિયરી આપી. ઘણા બધા યોગમાં જ રહ્યા, એમણે કંઈ લખ્યું જ નહીં. શ્રી અરવિંદમાં બંનેનું દર્શન જોવા મળે છે. પ્રેક્ટિસ પણ છે અને થિયરી પણ છે. આપણને એક બહુ ગ્રેટ, બહુ યુનિક કોમ્બિનેશન છે કે એમણે જે લખ્યું છે એ આખું જીવી જાણ્યા છે. એમના આચરણમાં પણ દેખાય છે, એમના વ્યવહારમાં દેખાય છે. એટલે આ એક કોમ્બિનેશન છે કે આજે આપણે શીખવાનું છે. અને બહુ જ મહત્વની વાત જે જોશી સાહેબે કરી, કોન્શિયસનેસ. બરાબર, કોન્સન્ટ્રેશન થી ઘણું ઉપર છે. તો જેટલો વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધામાં ફરક છે એટલો જ કોન્શિયસનેસમાં અને આમાં ફરક છે, કોન્સન્ટ્રેશન. પણ આપણે તો કોન્સન્ટ્રેશન સુધી હવે નથી જતા. તમે જો આજની હમણાં જ એક રિસર્ચ એવું કહે છે, સાહેબ રીલ્સ આવી છે, રીલ્સ આવે છે મોબાઈલમાં, 12 સેકન્ડનું એનું કોન્સન્ટ્રેશન લેવલ છે. એટલે કોઈ પણ માણસ, એવરેજ માણસનો રીલ કેટલી સેકન્ડ જુએ છે? 12 સેકન્ડ. એટલે ડે બાય ડે કોન્સન્ટ્રેશન લેવલ ઇઝ ડિક્રીઝિંગ, બહુ ઘટતું જાય છે. કોન્શિયસનેસની વાત તો બહુ દૂર છે. તો એ કોન્સન્ટ્રેશન છે, બધા લોકોએ આપણા જેટલા મહાપુરુષો છે બધાએ કહ્યું છે શિક્ષણમાં પહેલું કામ મનની કેળવણી આપવાનું છે, પછી બીજી બધી કેળવણી આપજો. ફિઝિકલ એજ્યુકેશન એન્ડ મેન્ટલ એજ્યુકેશન એ બહુ જ મહત્વના પાસા છે. શેરવીને પણ એના પર ધ્યાન આપો. તમે જુઓ કે આજે આપણી સ્થિતિ એવી છે કે આપણે બાળકોને બહાર મૂકતા નથી. શાહ સાહેબને હું બંને સાથે અમે કામ કર્યું છે. અમે ગુજરાત કોલેજમાં 26 જાન્યુઆરીની પરેડ કરીએ તો અમારે એવો નિયમ કે 1 કલાક અમારે છોકરાઓને ઊભા રાખવાના. આખો કાર્યક્રમ છોકરાઓ ઊભા માંડે. પણ નિયમ પ્રોફેસરે બનાવેલો કે પ્રોફેસરો બેસી શકે, એટલે એવું હતું. પણ છોકરાઓ ઊભા રહેવાનું. અમે જોતા હતા કે દર વખતે 15મી ઓગસ્ટ થી 26 જાન્યુઆરી હોય, 5-10 છોકરીઓ તો પડી જ ગઈ. They are not able to stand for an earth. એવા સવારના 9 વાગ્યાના ઉબળા તડકામાં ઊભા રહેવા માટે પણ સશક્ત નથી. એવા યુવાનો દેશ માટે શું કાઢી શકવા? યુક્રેન સાથે રશિયાનું યુદ્ધ થાય એવી રીતે ભારતને કોઈની સાથે યુદ્ધ થાય તો આપણા યુવાનો શું કરે એ વિચારવાનો પણ સમય છે. The physical education is most important.
જો તમે સ્વામી વિવેકાનંદે પણ કહ્યું કે તંદુરસ્ત શરીરમાં જ તંદુરસ્ત મનનું નિર્માણ થાય છે. સ્વામીજીએ કહ્યું કે જાઓ તમે ગીતા પછી વાંચો, પહેલા ફૂટબોલ રમો. ફૂટબોલ રમો, તમારી માંસપેશીઓને મજબૂત બનાવો, તમારા સ્નાયુઓને મજબૂત બનાવો, પછી તમારું મન છે ધીરે ધીરે ક્લિયર છે. અને મનની ક્લિયર આપતા આપણે સાવ ભૂલી જ ગયા છે. આપણે સીધા લઈ જઈએ છીએ અને ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ ડેવલપમેન્ટ, સીધા થિયરમ બનાવીએ છીએ, સીધા રાઇટર્સ બનાવીએ છીએ, સીધી થિયોરીઝ બનાવીએ છીએ. પણ એ પહેલા ઉપનિષદ બહુ સરસ વાત કરે છે કે કોઈ પણ મન કેવું છે, તો ઉપનિષદનો ઋષિ કહે છે કે એવું કહે છે કે મન એવ મનુષ્યાણામ કારણમ બંધ મોક્ષે, એવું આપણે કહેવાયું છે. એના રેફરન્સમાં એ કહે છે કે શિષ્ય પહેલા તારું મન ઠીક કર. જેમ કોઈ ગાયને દોરતા હોઈએ અને જ્યારે ગાયને દોઈએ ત્યારે દોરતી વખતે આમાં છે દૂધ નીકળે છે. એ દૂધને એકત્ર કરવા માટે કોઈ પાત્ર જોઈએ છે, અને એ પાત્ર કેવું હોવું જોઈએ? સીધું હોવું જોઈએ. ગુજરાતીમાં કાઠિયાવાડમાં બહુ સરસ શબ્દ છે બોઘરડું. એ બોઘરડું છે ને સીધું હોવું જોઈએ. જો સીધું ન હોય તો દૂધ ક્યાં જાય? વેસ્ટ થઈ જાય, જમીન પર જતું રહે. એટલે પહેલા દરેક શિક્ષકે પોતાના વર્ગમાં જઈને પહેલા પાત્ર સીધું છે કે કેમ એ આપણે ચેક કરીએ છીએ ખરા? બધાના બોઘરના આટા આવડા હોય છે. ક્લાસમાં જેટલા બેઠા હોય છે 30, 40, 50, કોઈ તો ઊંધું જ બોઘરડું કરીને ઉપર બેસી ગયા હોય છે. ના, અમે ખુલ્લું નહીં રાખીએ, અમારામાં કંઈ પડવું ના જોઈએ. તો એ સીધું થાય તો જે તમે દો છો એ સીધું એ પાત્રમાં જાય, ને તો એનો અર્થ બને. એટલે એ જે કોન્સન્ટ્રેશનની વાત છે, કોન્સન્ટ્રેશન થી પછી કોન્શિયસનેસ સુધી શ્રી અરવિંદે 3 કહ્યું કે એક તો માઇન્ડ છે, ઓવર માઇન્ડ છે અને સુપર માઇન્ડ છે. એટલે માઇન્ડ ટુ સુપર માઇન્ડ. પશ્ચિમ તો ખાલી માઇન્ડની જ વ્યાખ્યા કરે છે, એને આગળ નથી આવડતું. પણ શ્રી અરવિંદ એ તો પૂર્વના ઋષિ છે, એટલા માટે એ ચિત્તની પણ વાત છે. પશ્ચિમમાં કે ચિત્ત જેવો કોન્સેપ્ટ રાઈટ. એટલે એમણે જો જે વાત કરી કે એજ્યુકેશનની અંદર કોન્સન્ટ્રેશન માટે આ કળાઓ છે એના માટે છે કે વિદ્યાર્થીઓનું કોન્સન્ટ્રેશન વધે. તમે જુઓ, તમે કોઈ ચિત્ર બનાવો, તમે એમ કહો કે મારું કોન્સન્ટ્રેશન નહોતું તો સારું ચિત્ર બને કે ના બને? ના બને. તમે ગિટાર વગાડો, તમે હાર્મોનિયમ વગાડો, તમે ગાઓ, તમે નાચો, બધામાં શું જોઈએ? દરેક વસ્તુમાં ઇન્વોલ્વમેન્ટ જોઈએ, કોન્સન્ટ્રેશન. તો એ જે છે એ આપણે શિક્ષણની અંદર એકાગ્રતા એટલે મન, પછી અધિમનસ અને પછી અતિમનસ, ત્યાં સુધી જવા માટે એ કેળવણીમાં આ બધા એલિમેન્ટ્સ છે એને એડ કરવા પડે. નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસી એટલા માટે સારી છે એવું કહે છે કે there is nothing difference between curricular activities and co-curricular activities. બંને વચ્ચે કોઈ ભેદ નથી. નહીંતર તમે જુઓ, આપણે એમાં થકવાડી નાખીએ. લતા સારું ગાતી હોય તો કે તારે મેથ્સમાં તો 99 લાવવા જ છે, તો તું લતા નહીં કહેવાય. ભાઈ, લતાની જે એનું એક્સેલન્સ છે એ સારું ગાવા છે. અહીંયા ઠાકર સાહેબે વાત કરી, મારી એક જ મિનિટમાં મારી વાત પૂરી કરીશ. તમે 2 જગ્યાએ જવા જેવું છે આપણે. એક તો પોંડિચેરી ટેનિસ સ્કૂલ, અને હું વારંવાર જ્યાં જઉં છું શ્રી અરવિંદ આશ્રમ દિલ્હીની એક સ્કૂલ છે, મધર ઇન્ટરનેશનલ, ત્યાં પણ જવા જેવું છે. એનસીઆરટી ની બિલકુલ સામે આવેલી છે. તો ત્યાં આગળ જે પ્રેક્ટિસ થાય છે, આપણે જે વાત કરી કે ભારતીય શિક્ષા જે છે એના મૂળ આધ્યાત્મિકતા છે, આધ્યાત્મિકતામાં રહેલા છે. એટલે મદન મોહન માલવીય તો બહુ સરસ કહેલું कि अगर आपको भारतीय शिक्षा का दिया जलाना है तो आपको आध्यात्मिकता की प्रकाश में दिया जलाना होगा. आध्यात्मिकता हशे तो ज भारतीय शिक्षणનો દીવો તમે પ્રગટાવી શકશો. એવી વાત છે. એટલે ત્યાં આગળ બહુ સરસ છે કે કોમ્પિટિશન નથી, કોઈ કોમ્પિટિશન નહીં, નાના બાળકો વચ્ચે કોઈ સ્પર્ધા જ નહીં. એટલે બાળક ફૂલની જેમ ખેલી શકે એવું ફ્રી સરસ એટમોસ્ફિયર, ફ્રીડમ આપવામાં આવી છે. એટલે આ 2 જગ્યાએ હું તમને જેવા માટે ખાસ કહું છું કે તમે દિલ્હી જાઓ તો શ્રી અરવિંદ આશ્રમની આ સ્કૂલ જોજો, મધર્સ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ, અને પોંડિચેરીની પણ સ્કૂલ. આ બંને શાળાઓમાં એટલી સરસ પ્રેક્ટિસ થાય છે કે આપણને એમ લાગે કે આ જે કંઈ એમણે પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ એજ્યુકેશન આપ્યા છે એ બધા રિયલ એવા પ્રેક્ટિસ થાય છે. દિલ્હીમાં તો એવું છે કે તમારે ત્યાં ટીચર બનવું હોય તો તમારે 1 વર્ષની ટ્રેનિંગ લેવી પડે. 1 વર્ષ તમે ટ્રેનિંગ લો ત્યારે જ તમને ત્યાં ટીચર તરીકે અપોઇન્ટમેન્ટ આપવામાં આવે. ઠીક છે. તો બસ મને લાગે છે કે છેલ્લે જે ચિત્તરંજન દાસે શ્રી અરવિંદ માટે બહુ સરસ શબ્દો વાપર્યા હતા એ વાપરી એમને વંદન કરીને મારી વાત પૂરી કરું છું.
Sri Aurobindo will be remembered as a poet of patriotism, a prophet of nationalism, and a lover of humanity. Thank you very much. Thank you so much, sir. Let's go to the audience. Students, do you have any questions? Mike. Good afternoon, everyone. So my question is to Dr. Jayendra Singh Rana, sir. So how can we apply the values of Sri Aurobindo ji in our real life? There are many ways to apply values of Sri Aurobindo's teaching in our real life. First of all, see, એવું કહેવાય છે કે જેને પણ આપણે જાણવા હોય પહેલા જાણવા પડે, જેને પણ એપ્લાય કરવા હોય એને રિયલ વેમાં જાણવા પડે. એક કવિએ બહુ સરસ કહ્યું કે હું કોઈ વ્યક્તિને પ્રેમ કરવા માંગુ છું, તો કે પ્રેમ કરતા પહેલા તમે એમને જાણો, તમે જાણી શકશો તો જ તમે એને પ્રેમ કરી શકશો. તમે જુઓ જેટલા પણ સાયન્ટિસ્ટ છે, જેટલા પણ ડોક્ટર્સ છે, જેટલા પણ પ્રકૃતિવિદો છે, એ બધાએ પહેલા એ તત્વમાં ઊંડે સુધી જવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. બરાબર, એ ઊંડા ઉતર્યા, એમને જાણ્યા એટલે એમને પ્રેમ થઈ ગયો, જાણ્યા એટલે પ્રેમ થયો, અને પ્રેમ થયો એટલે એ બધી જ વસ્તુઓ એમના જીવનમાં પણ આવતી ગઈ. તો આ રીતે તમે પણ જો આજે પણ શ્રી અરવિંદના જે વિચારો છે એને આપણે આપણી લાઈફમાં બરાબર રીતે ઉતારી પણ શકીએ અને એને અમલમાં પણ લાવી શકીએ. હું એક જ ઉદાહરણ એમનું આપું. જેમ કે તમે MBA ના વિદ્યાર્થીઓ છો, હું અહીંયા આ થોડી અહીંયા પરા અને અપરા વિદ્યા શરદભાઈ કહેશે કે તમે આવું શીખવાડો છો, પણ એમના જીવનમાંથી એક બાહ્ય એમનું જીવન અને એક આંતરિક બંને વેલ્યુઝ આપણને શીખવા મળે. જેમ કે આપણે તો કહેવાય છે આચરતી ઇતિ આચાર્ય, જે આચરે છે તે આચાર્ય છે, અને મોટા મનુષ્યોના આચરણમાંથી આપણે શીખવાનું હોય છે, એવું આપણું કલ્ચર આપણને કહે છે. શ્રી અરવિંદો જ્યારે વડોદરા હતા, વડોદરાના મહારાજા સાહેબ ગાયકવાડ, તો he was a vice principal there. એ વાઇસ પ્રિન્સિપાલ હતા. મહારાજા સાહેબને શ્રી અરવિંદ સાથે બહુ બને, એટલે એમને બોલાવે કે આવો ને ડિનર લઈએ સાથે, માણસને મોકલે કે શ્રી અરવિંદને કહો કે એમને અનુકૂળતા હોય તો આવે. તો શ્રી અરવિંદે એમને અનેક વાર ના પાડી. એમને કહ્યું કે ના, મારી પાસે સમય નથી, અત્યારે મારે આ કામ છે, મારી પ્રાયોરિટી આ છે. તો તમે વિચાર કરો કે એ જમાનામાં સયાજીરાવનો કેટલો મોટો પ્રતાપ. આજે પણ કોઈ મિનિસ્ટર અમને ફોન કરે તો દોડ સચિવાલય પહોંચી જઈએ છીએ, કારણ કે એની સાથેના સંબંધો રાખવા માટે, એની સાથે કોઈને બતાવવા માટે કે અમારી સાથે સંબંધ છે. બહુ બાહ્ય વાત છે, પણ મેનેજમેન્ટમાં પણ એવું છે. તમે જુઓ કે તમે CEO ની નજીક રહેવા માટે, કે અહીંયા સંચાલકો હોય તો એમની નજીક રહેવા માટે આપણે ખાસ પ્રયત્નો કરતા હોઈએ છીએ. એના બદલે શ્રી અરવિંદે શું કર્યું કે ના, હું નહીં આવું, કારણ કે મારે આ કામ છે. મહારાજાએ પછી એમ કહ્યું કે જ્યારે જ્યારે એમને ભણાવવાનું કે કંઈ કામ ના હોય ત્યારે એ મને ભણવા આવે. હવે વિચાર કરો કે સામેવાળાએ બદલાવવું પડે, ગમે એટલો મોટો માણસ હોય પણ એને બદલાવવું પડે. કેવી રીતે? તમારા વર્તનથી, તમારા ટેલેન્ટથી, તમારા ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ કેપેસિટીથી અને તમારા કાર્યોથી. બસ આપણે આ જ શીખવાનું છે કે આપણે ધીરે ધીરે શ્રી અરવિંદની વાતોને અને એમને જીવનને આપણે આત્મસાત કરીએ. અને આત્મસાત ત્યારે જ કરી શકીશું કે જ્યારે તમે પહેલા એમને જાણશો, એમની નજીક જશો, રાઈટ? સો ફર્સ્ટ you should try to know Sri Aurobindo in a real manner, right? તો તમે પહેલા એમનું જીવન ચરિત્ર મેં કહ્યું ને. Do you know Gujarati? No, don't you know Gujarati language? So can you read Hindi? Yes, so we have a book in Hindi also. It is upcoming, it is in printing. So after 15 days, we will publish this book in Hindi also.
right? Both the books. So I'll send it for you. Okay, thank you. Any other student? Okay. मेरा प्रश्न जो है वो हमारे विश्वविद्यालय के ईवीपी सर डॉक्टर वेद व्यास द्विवेदी से है। तो महोदय जी मैं ये पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पृथ्वी जो है पूरी गोल है, 360 डिग्री एंगल जब हम बनाते हैं वो भी पूरा गोल होता है। सब जने ऐसे ही मानते हैं कि जो एक छात्र या छात्रा का होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए सब चीजों का होना अति आवश्यक है। जैसे सब्जी में अगर नमक कम पड़ जाए तो नमक का होना भी जरूरी है, मिर्च का होना भी जरूरी है। ठीक इसी प्रकार से जीवन में एकेडमिक के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज और इन सब का होना भी अत्यंत आवश्यक है। As an EVP of this institute, sir, जैसा कि मतलब कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी आई है, तो सर आपको उसमें से किस प्रकार से सर आप हमारे इंस्टीट्यूट में कुछ चीजें जो है यहाँ पे लागू करना चाहे श्री अरविंदो जी की आइडियोलॉजी से रिलेटेड, ताकि जो इंडस यूनिवर्सिटी है और उसके जो हम होनहार छात्र है हम सबका नाम आगे चल के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाए। तो सर किस प्रकार से आप कोई चीज लागू करना चाहेंगे और कौन सी वो चीज रहेगी? थैंक यू प्रतीक। प्रतीक या थैंक यू वेरी गुड क्वेश्चन प्रतीक। ऐसा है, बैठो। समुद्र में जब हम कूदते हैं तो हम अच्छा तैराक बनना चाहते हैं या अच्छा डूब करके नीचे जा करके हम समुद्र की गहराई मापना चाहते हैं? दोनों बेस्ट। ये हमारे उद्देश्य पे आधारित है, हम किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किस तरह का प्रयत्न करते हैं। इंडस यूनिवर्सिटी में इस तरह का प्रयत्न 100% हम लोग कर रहे हैं, जिससे हम विद्यार्थी को करिकुलर एक्टिविटीज भी और एकेडमिक एक्टिविटीज दोनों में हम एक्सीलेंस दिला सकें। अभी इसके लिए कार्य जो है एक्सरसाइजेज चालू है। इसको जैसे ही गवर्नमेंट की ओर से हमको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें हर एक विद्यार्थी मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट के तहत, एकेडमिक बैंक क्रेडिट के तहत और हर तरह से स्पेशलाइजेशन जैसे इंटरडिसिप्लिनरिटी है या मल्टीडिसिप्लिनरिटी है, जिसके अंदर हर तरह के ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग कार्य कर रहे हैं और शीघ्रातिशीघ्र इसको लागू करेंगे। Thank you, sir. Anyone else? Yes, dear. बोलो बोलो। हाँ। Good afternoon. Good afternoon. My question is for Balendu ji sir. What is the relation of education and spirituality? In a sense, Aurobindo says that alone is a true and living education, which brings out the core of the person. So it's if we play on a surface, इधर उधर घूमना, ये पता करें ये ड्राइंग का, आर्ट का, पेंटिंग का, that unless it is connected with the aim of spirituality, then it is a true education. So education or spirituality के relation, if I say in simple word, education should lead to expression of hidden spirituality, and spirituality is the only key which will allow fullest expression of the education. As I said, a doctor will become a true doctor only if he has a spirituality. And if he starts from one end, from becoming a doctor, for doing good, then he will reach to his spiritual truth. And on the other hand, he becomes that, he is drawn that only if he is connected with spirituality. So each one serves the need of the other, but one leads to the other. Please pass on the mic. Hello, good afternoon.
everyone present over here. My question is to Dr. Sharad Joshi sir that I want to ask, how can we apply thoughts of Sri Aurobindo ji in our business? Business and management. First of all, as Dr. Balendra said, that why do we want to do that activity? What is the purpose behind it? Earning money is not not unspiritual. Earning money is also necessary because that is the physical basis of our life. But to have a greed for money is bad. So we should also know how to earn money and how to spend money. So ये जो balance है, वो balance spirituality से आता है. Why do we want to do? Because the exchange of commodities, the enterprise are also part of our faculties, and these faculties can be offered to the humanity as a whole. So if we can do that, that itself is a spirituality. We are not doing it for amassing the wealth, but for producing the wealth for the humanity. Ultimately, nobody is taking away money from here. Money remains here only. So we, for time being, we say that it is my money. Otherwise, it belongs to the humanity only. So ultimately, that is the truth of life. So enterprise, industry, whatever we do, management, it is why do we do it? For the benefit of society, for the benefit of humanity, as a prayer to the God, as an offering to the God, God's working or divinity's working or not, that is the question, and that can lead to spirituality. Otherwise, all activities are good. There are no activities which can be said to be non-spiritual. So it is the attitude with which we do the activity that is important. Thank you so much, sir. Now I request Dr. Vedyas Trivedi sir to have a concluding remark. Thank you very much. It was a nice sanchalan from your side, and oceans of patience you had today. My dear students, actually these all kinds of 360-degree and these contributions are for your growth. The only single agenda is to see the best growth of our students. The center of excellence is you. All the way, whether it is adhyatma, whether it is personality development, whether it is communication, whether it is education, anything. So in true sense, 360-degree. There is a very good philosophical theory and thought I want to share with you. While sitting there, I was just thinking, should I share or not? But I could get 3 minutes, so I thought I should share with you. कहीं भी ना तो पश्चिम में है, ना कहीं पूरब है, ना तो कहीं ऊपर है, ना कहीं नीचे है, सब कुछ एक है. And this is what is the only thought all the great men and women in this earth and on this earth, whether in the body of whether it is a soul of a human form, whether it is a soul of a plant or animal. The same theory is true universally since the day immemorial and the day in future again. Therefore, sitting over here, we all are thinking for the same aim, same theme, and same objective. As a student, if I see Sri Aurobindo, what the learned and the scholarly people sitting over here have tried to convey to us, they have tried to send to us so that we can practice in our life
through these words of these great people sitting over here on the dais. In the previous session also, we saw so many people have tried to pass on their knowledge, their experiences, and the results of their realizations to us in various languages of Gujarati, Hindi, Sanskrit, and so many. It depends on us up to what extent we can digest it and we can pass it on to the rest of the society connected to us. 2-3 things I could learn from this session, from learned and Honorable Sri Joshi ji, Sri Girish ji, respected Aurobindo ji, and my dear and maybe my lovely brother Jayendra ji, because of Sri R.K. Shah sir. One, no development is possible without our involvement. We cannot develop, we cannot grow without our involvement. Involvement is only possible when we think on it. Only thinking is not, going to give us the fruit what we want. Let us take an example of a seed. Seed goes inside the earth. When it goes inside, what happens? It struggles with the darkness, heat, and then after, because of the potentiality in it, it comes out, it grows like a plant, and then it serves the entire society as a tree. And what does a tree do? We know very well. There is no explanation required to understand what a tree does. On the same track and pattern, the same manner and fashion, what we can understand and carry from here today is, without involvement of the self, no growth, no development is possible. So try to go into the self-evaluation part. Do not compare yourself. तुलना करने से आप नीचे गिरते हैं और स्वयं की तुलना करने से आप उत्थान को और उन्नति को प्राप्त होते हैं. So let us go for the self-evaluation by the self. Each and every day you try to see what kind of growth I am doing, what kind of understanding I am developing inside me. How can I grow for others? That is one formula. The second formula, what we learned from over here, be a simple witness for what is going on and try to learn from it. Until and unless you unlearn what you have learned already and you don't try to unlearn what you have learned and learn what you have unlearned. So this cycle, unless and until you start doing in yourself, you will never understand what is happening surrounding me. So this is the second message we can get from over here today. And the third, forget about the selfishness. Forget about the selfishness means we should not only be focused upon the self-centered aspects of our life. Self-centered aspects of the life make you very much, narrower and narrower and narrower. संकीर्ण विचारधारा से बाहर निकले. The broadness will be the sideline until and unless you don't go away from the self-centeredness. So as a student, I can learn all the three things, whether it is on my own or from the teachers or from anyone else. Therefore, on behalf of Indus University, entire family members from PU to president, professors and principals and everyone, I try to convey, and I am in fact happy to convey that all these learned people sitting over here, those who contributed with their knowledge, with their experience, are very much honorable for all of us, and we will try to implement it in our life as much possible from time to time. Taking each one individually is not possible because again it needs about 1.5 hours. So with these words, because having no words is the best expression in the world. So with these words only, please accept my gratitude, and I'm not trying to explain what you have told, trying to make it in the terms of formula. Mantra hi सब कुछ कह जाता है. So with these words, accept my gratitude and have a great life and thankful life.
Sri Aurobindo Vaishnav sir has joined just now. So on behalf of Indus University, request you, Dr. R.K. Shah sir, to give memento to So hereby we are ending with our panel discussion. Thank you so much. All to volunteer, please guide the dignitaries. Volunteer. Now we are going to have here offline paper presentation. Is there? Okay, who's the fourth person? Huh? First strategy. Rajani Chaudhary. Chauhan ये इसमें है ये किसका PPT? दो तीन दिए हैं ये इसमें Everyone has a PPT? yes. Yes, so who is first? तो सबको चालू करके हैं सबको प्रेजेंट करके कर देना और शेयर स्क्रीन कर देना ठीक है तो मैं नहीं आया अब इसको बंद कर दो ना हाँ ये वाली बंद कर ठीक है अब वो बंद है क्या Very good afternoon to one and all. हाँ इसको Now we move on to the presentation. चलो Which we will be having here. नहीं पहले वो We have our panel members. Dr. Manisha Ubadila, Literary Mathematics and Dean IHLS. We welcome you, ma'am. We also have Dr. Devi Professor in HR, and Dr. Rajesh Pujaji, Associate Professor in Finance. We have three presenters today. First would be Dr. Rajni Chaudhary. Then we would be having a paper presentation by Mr. Karthik Shukla. And then we would be having by Dr. Vedyas Dwivedi. Request all to give the PPT, please. If you all have it, PowerPoint. Okay. वो शेयर कर देना बस यही स्क्रीन शेयर ठीक ये हाँ बस शेयर कर दो साउंड ऑन करना है साउंड ऑन क्यों करना बस दे दे संभाल के और थोड़ा लूज कर ये सर है मेरे पास सो के बता दीजिए है मेरे पास ये पेपर है तो उसका उसी का मैं अच्छा तो इसको नीचे रख दो इनको जरूरत नहीं ये मेरे पास Good afternoon, one and all present here. ये यहाँ पे कितने अच्छे विचार हम लोग के सामने आए पढ़ने का ही नहीं कि मैं क्या पेपर पढ़ूं क्या है गलत है प्रैक्टिकल नहीं मिल रहा तो उसके बाद
लेकिन मैं पेपर प्रेजेंट कर रही हूँ. My topic is role and activity of Sri Aurobindo Society in the field of leadership and management. जैसे कि we're giving you 8 minutes for the presentation. We will be giving 8 minutes for the presentation. Okay? We want you to conclude after that. The Aurobindo Ghosh had given important contribution of leadership and management. In the day-to-day life, the integral management and leadership lifestyle with the thought of Aurobindo made important facts that have to make important for the management for the organization. The other side, the important contribution of NGO of Aurobindo organization to manage the education charity with the strong leadership after independence. The goal of all leadership is to assist managers and that all issues have internal origins, that only a shift in attitudes, belief and conscience can result in a lasting solution. एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था कि वो मतलब मैनेजमेंट में कैसे हम अरविंदो घोष जी के विचारों को हम लाएं. तो वो विचार हमारे हो सकते हैं द गोल लीडरशिप as to every managers have internal origins. कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है वो इंटरनल है. हमारे अंदर की प्रॉब्लम अगर हम समझ ले तो हम सारी प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकते हैं. तो इसलिए जैसे कि कृष्ण और अर्जुन जी का जो संवाद होता है, कृष्ण भगवान का अर्जुन कहते हैं कि भगवान हम कर्म करते हैं, आप भी कर्म करते हो. कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर हम कर्म ना करें तो आप भी कर्म नहीं करोगे. तो इसीलिए कर्म मतलब कि हमारी पूजा होनी चाहिए. तो कर्म हमें करना ही है. The instant you start to see a particular duty as a divine task, it is a divine task. जो हमें मिला है वो divine task है according to Aurobindo, that you must complete as a driver, worker or child solely of benefit of the divine. Is when spiritualization begins to take hold, there would be no disagreement because the leader clearly states who would succeed him. Yes, if he delegated to the higher ups in the management the task of selecting the right leader only after his passing, then there would be a chance that the person selected might be a good leader. Good leader वही होगा जिसके अंदर दूसरों को वो दिखाना है जो वो खुद है. खुद हमारी origin हमारी होनी चाहिए. Leadership is the form of group leadership in which the participants develop themselves and supply their own motivation. जैसे कि सर ने भी बोला था कि हम बोलना चाहते हैं तो हम खुद मोटिवेट हो, हम किसी के प्रेशर से नहीं हो, खुद हमारी इच्छा हो तो हम मोटिवेट होके बोले. तो वही हमारी कर्म भूमि है कि हम अपने को मोटिवेट करके अपने कार्यों को प्रयासरत होके करें. But with Sri Aurobindo that was not the case. The prisoners frequently looked to Sri Aurobindo for inspiration and support. The many works of Sri Aurobindo, Life Divine, is on Gita, collective poems and plays, the synthesis of yoga, the human psyche, the ideal of human unity, Savitri, and on the Veda. Aurobindo basic principles. What are the Aurobindo basic principles? There are many basic principles of Sri Aurobindo as he advised many teaching techniques, like teaching with the self-discovery by doing learning. Mother tongue is the method of teaching. Learning and cognition is the means of during the process of teaching learning process. Function of Aurobindo Society. There are several non-government organizations in India are implementing Sri Aurobindo's idea. They had faith in a brighter tomorrow and a happier planet. This work is being done by the Sri Aurobindo Society. All those who want to work for the benefit of the world are to be gathered by this society. People can participate and contribute for this work on management and leadership. Integral management. This management must not think or act like that the head of the typical industry. In its day-to-day enterprise, such a leader does not view worker as a way to maximize returns on investment.
in order to make money. Instead, such a leader accepts the role of a servant and dedicates. जो एक अच्छा जो लीडर होता है वो क्या को एज अ मास्टर नहीं उसके एज अ सर्वेंट ही होता है, तभी वो दूसरे की समझ सकता है. Everything they have to the growth and development of the business, which then serve as a platform for sadhana. And Oro leadership style, we can define the goal of Oro leadership is to have organization in realizing that all issues have internal origins, that only a shift in attitudes, belief and consciousness can result in a lasting solution. Business management research is conducted by Oro leadership, and as I am teaching political science, so I focus only leadership style. There are many leadership style, authoritative style, democratic style, laissez-faire style, or bureaucratic style. There are many. So we focus democratic style. Democratic style. There are Sri Aurobindo is at their company is Kolkata with its administrative office in Pondicherry, India. The society is a non-for-profit organization under the Act 1860, and Sri Aurobindo Society symbol is just like diamond, and there are two triangles, which is the spread of lights of Sri Aurobindo Ghosh. Thank you. बंद कर दो ना. हाँ कर दिया. एक मिनट रुको. उनको बंद कर दो ना. हाँ बंद कर. ये मेल चले ना. मेल में क्या फिर भेजा क्या? हाँ क्या कर दो. एक और कर लो. ये हाँ किसका? ये नेक्स्ट वाला है. कर देखो. अभी इसका हाँ अभी मैं भेजा. अभी मैं ना शेयर कर दूँ. रुको मैं डाउनलोड करने दो. रुको मतलब होते हैं कि जो हमारा लीडरशिप होता है वो क्या है कि हमें ऐसा सर्वेंट की सर बोले प्यून टू प्रेसिडेंट कि मतलब कि हायरार्की जो होती है वो मुझे अप्लाई हर ऑर्गेनाइजेशन में वो मुझे फॉलो करना है. यही है. हाँ अभी इसको ही है क्या? हाँ हाँ ये आगे. तो अभी क्या करना है? शेयर करना है जूम में ना. मैं जूम में वो चलेगा क्या? वो परसेंटर है ना वो चलेगा. पहला वाला ये नहीं ये है ना वीडियो चलेगा. कौन सा वीडियो? ये वीडियो वो तो झूम में चल ही रहा है. पर ये शेयर कर. हाँ ये चेक करते कर. ये हाँ देखो जो अभी खोला था. आप सोमवार अरविंद चेतन प्रणाम. ये हमारा मानस बुद्ध विद्यालय उपस्थित છે એમને પણ પ્રણામ કરું. ये इधर ड्रैग कर दो. और संशोधन મંત્રનો વિષય છે महर्षि अरविंदનું शिक्षक दर्शन. महर्षि अरविंद અને એમ કરતા महर्षि अरविंद શેર કરો. આ એટલું બધું વ્યાપક વિષય છે કે એને આપણે કોઈ એક ચોક્કસ ફ્રેમમાં બાંધી ન શકીએ. હવે અરવિંદ આપણને સાંપ્રત સમયમાં કેમ યાદ આવે? એનું કારણ શું? અને એવું શિક્ષણ દર્શન એવું શું ખાસ છે કે જેથી આપણે એને યાદ કરી શકીએ? તો એને યાદ કરવાનું મુખ્ય કારણ પહેલું એ છે કે પશ્ચિમી ભૌતિકવાદ અને પશ્ચિમી વિચારધારા ખાસ કરીને મેકોલની શિક્ષણ નીતિ જ્યારે આખા ભારતમાં લાગુ પડી હોય અને એ સમય ભારતીય ચિંતન શિક્ષણ વિચારને પ્રસ્તુત કરવાનું ધીરજ કાર્ય જો કોઈએ કર્યું હોય તો એ મહર્ષિ અરવિંદ છે. માટે આપણે એમને યાદ કરવા પડે. અને બહુ જ અગત્યની જો કોઈ બાબત હોય તો એ છે મનની કેળવણી. મનની કેળવણી કરવી એ સૌથી અઘરી બાબત છે. બાળકના મનમાં કલ્યાણની ભાવના જન્મે તે જ શિક્ષણ. આટલી સરળ વાત એ અરવિંદ જ કરી શકે કે પ્રત્યેક બાળકમાં માનવ કલ્યાણની ભાવના જન્મે તે જ શિક્ષણ. આમ અરવિંદ પરંપરાગત તત્વજ્ઞાનનો સહારો લઈને તેમાં આગવી વિચારધારા વિકસાવી
અને નવી રાહ આપણને ચીંધે છે. તેમના વિચારધારામાં કોઈ પ્રવાસ મુક્ત પુરુષે કરેલી પ્રવાસની અનુભૂતિ થાય છે. હવે અહીંયા સૌથી પહેલી બાબત જે આપણને મળે તો મહર્ષિ અરવિંદનું શિક્ષણ દર્શન વ્યાપક તો છે, પણ આપણે જુદી જુદી વિભાવનાઓમાં એને આપણે લઈ શકીએ. સૌથી પહેલી જે આવે એ છે મહર્ષિ અરવિંદની કેળવણીની વિભાવના. Education is helping the growing soul to draw out that in itself. આ પ્રત્યેક શિક્ષકને વાત કરે છે અને શું કહે છે કે દરેક બાળકમાં એ શક્તિઓ રહેલી જ છે. આપણે કશું નવું નથી કરવાનું, પણ રામાયણનું એક આપણે ચિત્ર સામે દેખાય અને જાંબવંતજી હનુમાનજીને કહે છે કે રામ કાજ લગી તવ અવતારા, એને અભિર્મુખ કરવાનું છે. તારામાં તો રહેલું છે બેટા, તું આ કરી શકે. આપ સૌ મહાવિદ્યાલયોના અધ્યાપકો છો, સામે શિક્ષકો બેઠા છે, સોરી વિદ્યાર્થીઓ બેઠા છે, પણ હું એક શાળાનો શિક્ષક અને હું એ શાળામાંથી આવું છું જ્યાં શાળાની અંદર જેની સ્થાપના સયાજીરાવ ગાયકવાડ સાહેબે કરી અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ કરમસદથી ચાલીને જે શાળામાં ભણવા આવતા એ શાળાનો હું શિક્ષક છું, એનકે હાઈસ્કૂલ પેટલાદ. એટલે મારી માટે તો ગૌરવની વાત છે અને મજાની વાત છે કે પેટલાદમાં મહર્ષિ અરવિંદ પોતે પધારીએ છે. વ્યક્તિઓનો આત્મા અને શક્તિ પોતાના લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે જાગૃત કરવો અનિવાર્ય છે. આ અરવિંદ જ કહી શકે. સાથે અતિમનસ ચેતનાની વાત કર્યા પછી અરવિંદ શું વાત કરે છે? ધર્મ સંરક્ષણ, રાષ્ટ્ર આત્મા, રાષ્ટ્ર ભાવનાને બળવાન સમૃદ્ધ થાય તે દરેક વ્યક્તિ માટે સૌપ્રથમ કાર્ય છે. આ અરવિંદ આપણી સામે મૂકે છે. બીજું જે વિભાવના આપણી સામે છે એ છે મહર્ષિ અરવિંદના વિચારોમાં શાળા. એમના વિચારોની શાળા કેવી છે? મહર્ષિ અરવિંદ સ્પષ્ટ માને છે કે શાળાનું વાતાવરણ અને ભાવાવરણ એ વિશ્વ બંધુત્વની ભાવનાથી પરિપૂર્ણ હોવું જોઈએ. અને ખાસ અગત્યની વાત જે આપણી સામે અરવિંદ મૂકે છે એ છે યોગની અનિવાર્યતા. હવે અહીંયા યોગ એટલે બાબા રામદેવ જે યોગ આપણને કરાવે છે યોગની વાત નથી, પણ અહીંયા યોગ એટલે ટ્રાન્સફોર્મેશનની વાત છે. સાથે વિશ્વ પ્રેમ અને વસુદેવ કુટુંબકમનું મંત્રને સાર્થક કરતું ઓરોવિલ જે આકાર પામ્યું છે એ આખા વિશ્વની પ્રજાને આજે ભારત તરફ દોરી આવે છે. મેડમ સર, હું તો ઓરોવિલમાં જઈને આવ્યો છું. આપણને બહુ દુઃખ થાય, મિત્રો પાછળ જે બેઠા છે એને ખાસ કહું છું, વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણને બહુ દુઃખ થાય કે તમે 70% પ્રજા જ્યારે જુઓ ત્યારે ફોરેનર્સ છે. માત્ર 30% જ ભારતીયો ઓરોવિલની મુલાકાત લે છે, શાળાની મુલાકાત લે છે. એટલે આપણી માટે આમ જોવામાં આવે તો એક પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે કે જે વસ્તુ જે વાત આખા વિશ્વના માણસોને ભારત તરફ ખેંચે છે એ ભારતીયો કેટલા એને સ્વીકારે છે. મહર્ષિ અરવિંદ પૂર્ણતાનું મહત્વ વધુ બતાવે છે અને જ્યારે પૂર્ણતાની વાત આવે ત્યારે શારીરિક શિક્ષણને પણ મહત્વ એટલું જ આપવું પડે. શરીરના બધા જ અંગો સંપૂર્ણ અને પદ્ધતિસર વિકાસ અને વૃદ્ધિ પામે, આ અરવિંદ માને છે. બીજું, જો કોઈ વ્યક્તિમાં કોઈ પણ જાતની ખામી કે વિકૃતિ હોય તો તેનો ઈલાજ શોધવો. હવે જ્યારે ઈલાજ શોધવાની વાત આવે તો આપણે મેડિસિનની વાત કરતા હોય, પણ અહીંયા મેડિસિનની વાત નથી. કાર્લ રોજર્સનો, અમે તો બીએડ અને એમએડ ના વિદ્યાર્થીઓ એટલે અમે તો શિક્ષણ પદ્ધતિઓ જ વધારે મહત્વ આપીએ. તેમાં કાર્લ રોજર્સને આવે છે સ્વ ઓળખનો સિદ્ધાંત. કોઈ બાળક હોય અને શાળામાં હોય ને એમ કહે છે કે મને વિદ્યાર્થીઓ બોલાવતા નથી. એમ નથી બોલાવતા? કેમ નથી બોલાવતા? તો કે ભાઈ મને ક્રિકેટ રમતા નથી આવડતું અને એ બધા ક્રિકેટ રમે છે. તો પછી તે ટ્રાય કરી કે ક્રિકેટ શીખી શકાય કે ના, મેં નથી ટ્રાય કરી. એટલે વિદ્યાર્થીઓને એવી રીતે પ્રશ્નને એવી રીતે એને કેળવવાનો છે કે ધીમે ધીમે એ પોતે જ કબૂલાત કરે કે હા, અહીંયા હું ખોટો છું, અહીંયા મારી ભૂલ છે અને અહીંયા હું વારંવાર ભૂલ કરી રહ્યો છું. આ અરવિંદ આપણી સામે મૂકે છે કે જે વિકૃતિ છે અથવા જે ખામી છે તેનો ઈલાજ વિદ્યાર્થી શોધે. But we are in the form that we used to do spoon feeding. This is what the reality of Indian education. ત્રીજું, મુખ્યતઃ દરેક વ્યક્તિના પોતાની
શરીરની ક્રિયાઓ પર કાબુ રાખે, નિયમન રાખે. આનું કેવું હોય તો બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે ઇમ્પેક્ટ ઓફ સોશિયલ મીડિયા. We cannot control ourselves. We can live without parents, we can live without water, we can live without food, but we cannot live without Instagram. Definitely right? We cannot live without Facebook, WhatsApp, many things. તો પોતાની જે શરીરની ક્રિયાઓ છે, પોતાનો જે વ્યક્તિત્વ છે, એના ઘડતર માટે અરવિંદે ઘણી બધી બાબતોને આપણી સામે બહુ સરળ અને સહજ ભાષામાં મૂકી છે. હવે વાત આવે છે શ્રી અરવિંદ અને માનસિક વિકાસનું શિક્ષણ. શ્રી અરવિંદ માનસિક વિકાસને શિક્ષણનો આધાર સ્તંભ માને છે. તેમના મત પ્રમાણે મૌન અને વાણીનો સંયમ એ જીવનના ખૂબ જ અગત્યના પાસા છે. અને આ બેમાંથી એકેય આપણી પાસે નથી. આજે આપણે ગમે તે જગ્યાએ, હવે તો આપણે એટલા બધા પાવરફુલ છીએ that we can give a political statement. આપણે અને વિશ્વને કશું લેવા દેવા હોય કે ન હોય, પણ આપણે ગમે ત્યારે ગમે તે વાત કરી શકીએ. આજે એવી ઘટના છે કે આપણે આપણી જિંદગીને 2 મિનિટે આપી શકતા નથી, 2 સેકન્ડ પણ આપી શકતા નથી. સાહેબે બહુ સરસ વાત કરી હતી. યસ 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 યસ. આની માટે 3 વાત અરવિંદે મૂકી છે. એક તો વિચારો પર કાબુ રાખવો, ખોટા અને અનિચ્છનીય વિચારોનો ત્યાગ જે આપણે કરી શકતા નથી, અને ઉચ્ચ આદર્શોનો પોતાના જીવનમાં ઉપયોગ. આજે કોઈ પણ વિદ્યાર્થીને પૂછવામાં આવે કે તારા ઉચ્ચ આદર્શો છે, આદર્શોની જ ખબર નથી. બરોબર છે. પછી સ્વામી વિવેકાનંદ હોય તોય ભલે, કે અરવિંદ હોય તોય ભલે, કે મધર ટેરેસા હોય તોય ભલે, આદર્શ જ નથી. નેક્સ્ટ, મહર્ષિ અરવિંદનું આધ્યાત્મિક અને આત્મિક વિકાસ માટેનું શિક્ષણ દર્શન. મહર્ષિ અરવિંદ પ્રમાણે સત્ય દરેક માણસમાં અંદર સમાયેલું છે, અને દરેકનું સત્ય પોતાનું છે, પોતાના માપનું છે. આ અરવિંદ માને છે. તમારું સત્ય તમારા માપનું છે, મારું સત્ય મારા માપનું છે. પણ આપણે તો ત્યાં સુધી આવી ગયા છીએ that our I is capital. એટલે સત્યની શોધને જીવનનું અંતિમ લક્ષ્ય બનાવવું. કોઈ પણ વ્યક્તિના સાક્ષાત્કાર કરવાનો સંકલ્પ ઉદ્ભવે તે આત્માની કેળવણી છે. અને માં મીરા દ્વારા બનાવવામાં આવેલ માતૃ મંદિર, હું દરેક વિદ્યાર્થીઓ જે પાછળ બેઠા છે એને ચોક્કસ કહીશ કે જિંદગીમાં એક વખત તો ચોક્કસ ત્યાં જવું. તે એનું વિશ્વ ઉદાહરણ છે. મહર્ષિ અરવિંદ, સીધો હું સારાંશ ઉપર આવું. 3 જ વાતને અહીં પ્રસ્તુત કરીને હું પૂર્ણ વિરામ કરીશ. બાળકનો શારીરિક વિકાસ એ સંપૂર્ણ વિકાસ નથી, પણ માનસિક, સાંવેગિક, નૈતિક અને આધ્યાત્મિક વિકાસ જ તેને પૂર્ણ માનવ બનાવે છે. બીજી વાત, બાળકના જીવનમાં શિક્ષકનું સ્થાન દરેક શિક્ષકને આ લાગુ પડે છે. એ માર્ગદર્શક અને સહાયક પૂરતું જ સીમિત રહેવું જોઈએ, એનાથી વધારે નહીં. અને ત્રીજું, શિક્ષણ બાળક માત્ર માનવ કલ્યાણની ભાવના જન્માવે તેવું બનાવવું અતિ જરૂરી છે. આ સાથે મને સંશોધન પત્ર રજૂ કરવાનો મોકો આપ્યો. આપ સૌનો આભાર. ખૂબ ખૂબ આભાર. હા, તમે આગળના એક સ્લાઇડમાં વિશ્વ બંધુત્વની ભાવનાની વાત કરી. થોડો એની પર પ્રકાશ પાડશો કે શાળા હોય કે કોલેજ હોય કે મહાવિદ્યાલયમાં આપણે વિદ્યાર્થીઓમાં વિશ્વ બંધુત્વની ભાવનાનો કેવી રીતે વિકાસ કરી શકીએ, કેળવી શકીએ? બિલકુલ. શાળામાંથી અમુક જ્યાં લગભગ દરેક પ્રકારના વિદ્યાર્થીઓ આવે છે. શાળા બંધુત્વની આપણે વાત કરતા હોઈએ, વિશ્વ બંધુત્વની વાત કરતા હોઈએ, દરેકની વાતનો સહજ જ્યાં છે આપણે જ્યારે કહેતો માય ગોડ ઇઝ રિલીજન, ત્યારે માય સહી હે ये बात ये थोड़ी देर उसका विश्व બંધુત્વની વાત કરતા હોઈએ ત્યારે એનો સહજ સ્વીકાર, સારી વાતનો પણ સ્વીકાર છે, અને શું છે કહી રહ્યો છો એનો પણ સ્વીકાર. એ ત્યારે જ આવશે કે જ્યારે આપણે ઘણી રીતે આપણે સિલેબસને જ્યારે વિસ્તૃત રીતે બદલાવ લાવીએ તો એ થઈ શકશે. અને હું ઉદાહરણ સાથે કહી શકું કે મારી શાળામાં આ એક મંચ એવો નથી કે જ્યાં વાત કરી શકાય, પણ છતાંય 70% મુસ્લિમની કમ્યુનિટી છે. એ વિદ્યાર્થીઓને ઘણી બધી બાબતો એવી હોય છે કે જેનો સ્વીકાર નથી થઈ શકતો. તો હું વિશ્વ બંધુત્વની વાત કેવી રીતે કરું? બેટા જુઓ, બધું કેવી સિમિલારિટી છે, 2 જગ્યાએ કેવું ભેગું થઈ રહ્યું છે, તમારામાં એવું છે ને અમારામાં એવું છે. બરોબર છે. આપણે એનો સહજ સ્વીકાર કરવાનો. જ્યારે આવી રીતે આપણે એને કહીશું ત્યારે એ સહજ રીતે સ્વીકાર થશે અને એની અંદર પરિવર્તન પણ આવશે.
એક બીજો મુદ્દો મને તમારા પ્રેઝન્ટેશનમાંથી એક બીજા મુદ્દા એક પ્રશ્ન ઉદ્ભવ્યો છે. તમે એક જગ્યાએ એવું લખ્યું છે કે શ્રી અરવિંદજી એવું કહે છે કે વિચારો ઉપર કાબુ કરવો જોઈએ. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે વિચારો ઉપર કાબુ કરવો એ અતિશય અઘરી વસ્તુ છે. તો એના માટે કોઈ રસ્તો બતાવે છે અરવિંદજી જે તમે અમારી સાથે શેર કરી શકો? આટલી બધી વાત થઈ છે, હવે એની ઉપર કે એના ઓલા માર્ગની જે હું શું કહું, વેદવ્યાસ સર અત્રે ઉપસ્થિત છે. I'm a former student of વેદવ્યાસ sir. When I was doing MPhil, ત્યારે મેં એક પ્રોજેક્ટ થીસિસમાં નક્કી કરેલી that blueprint which is implemented by IBM કે આર્ટિફિશિયલ બ્રેન બનાવવું જ્યારે માણસ મૃત્યુ પામે તો આ વિચારો ઉપર કાબુ એટલે અતિ મને સમજવામાં આવે તો એક તુર્યાતીત અવસ્થા સુધી પહોંચવું. તુર્યાતીત અવસ્થા એટલે કેવી અવસ્થા કે જેની અંદર જે થોટ્સ મને રિલેટેડ જ નથી, એ થોટ્સ મારે શું કામ કરવા? આપણે તો એટલા એક દિવસમાં હજારો વિચારો આવતા હોય છે, એ હજારો વિચારોમાંથી આપણે પસાર થતા હોઈએ છીએ. એવા વિચારોમાંથી પસાર થતા હોઈએ છીએ કે જે બીજાને લગતા હોય અને છતાં આપણે પેશા કરતા હોઈએ છીએ. તો જે which is not related to me, which is not related to my world, અમારા આ શરીર મારું વિશ્વ છે, તો આ વિશ્વને જો કોઈ વિચાર સ્પર્શતો ન હોય તો જરૂરી ન હોય તો એનાથી દૂર રહેવું. સોશિયલ મીડિયાના જમાનામાં તો બહુ જ અઘરું છે, પણ છતાંય જો કરવામાં આવે તો ચોક્કસ અલગ દુનિયામાં છે. ખૂબ ખૂબ આભાર મેડમ. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you, Karthik Shukla-ji. Next, we have John Prashant Trilokanath for the presentation. Yes. Share camera. Gracias. पहले ही है। ठीक है। यहाँ पर उपस्थित सभी विद्यार्थी मित्र एवं प्राध्यापकों को मेरा नमस्कार। तो जिस तरह से आज चर्चा का विषय यही है कि श्री अरविंदो के विषय में उनके विचार को हम अलग अलग तरह से जो है विकसित करके उनके विचारों को शैक्षणिक लेवल पर, उनके विचारों को आध्यात्मिक एवं भौतिक लेवल पर जानने का प्रयास करते हैं। तो कुछ ऐसे ही विषयों को लेकर मैंने भी जो है अपने कुछ विचार रखे हुए हैं, क्योंकि मैं खुद शिक्षक होने के नाते मैंने खुद देखा हुआ है कि अलग अलग चाहे स्वामी विवेकानंद जी की बात करें, सभी ने अपने अपने विचार शिक्षण को लेकर जरूर रखे हुए। तो इसलिए मेरा टॉपिक ये है कि श्री अरविंद घोष जी की दृष्टि से शैक्षणिक प्रक्रिया, मानव चेतना एवं मनोविज्ञान। तो सर्वप्रथम बात करें कि मानव विकास प्रणाली में शिक्षा जो है वो उसका बहुत ही महत्व रहा होगा। समय समय पर अलग अलग महान ऋषियों एवं महान दार्शनिकों के द्वारा शिक्षा के क्षेत्रों में अलग अलग नवीनतम प्रयोग किए जा रहे हैं। उसमें से ही जो एक है हमारे महर्षि अरविंद घोष जी। तो अरविंद घोष जी का जब नाम लेते हैं तो नजर के सामने एक युद्धष्टा, एक योगी, एक दार्शनिक, एक तत्वचिंतक, एक शिक्षणविद, साथ ही साथ एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी के रूप में वो उभर कर आते हैं। तो उनके ऐसे शैक्षणिक लेवल को एवं आध्यात्मिक लेवल के जो विचार है काफी बहुमुखी हैं। तो उन्हीं के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। सर्वप्रथम हम जब बात करते हैं शिक्षा की, सर्वत्र ब्रह्मांड में व्याप्त जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों में मानव और पशु दोनों में जो है आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये चीजें कॉमन, लेकिन जो मानव को अलग बनाती पशुओं से वो ये है कि मानव अपने बौद्धिक कार्यशीलता को मतलब बौद्धिक चेतना को ऊपर ले जाकर वो ईश्वर से एकाकार हो सकता है, और इसी कारण से जो है मानव अलग है। तो मानव ये चीजें कब हो सकती हैं? जब उसके अंदर जिज्ञासा हो, उसके अंदर स्वयं को एवं ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा हो, तभी चीजें मुमकिन है।
अगर जो हम बात करें प्राचीन वैदिक कालीन पद्धति की, तो तपोवन पद्धति में सारी चीजों का ख्याल रखा जाता था। वहां पर गुरु अपने शिष्य को उनकी अनुकूलता के हिसाब उनके बिना किसी भेदभाव के अपने शिक्षार्थी का यानी कि विद्यार्थियों का ज्ञान के द्वारा पोषण करते थे। लेकिन वर्तमान समय में लॉर्ड मैकॉले द्वारा स्थापित शिक्षण प्रणाली केवल और केवल भौतिक आयामों तक ही सीमित है। वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा बोल सकते हैं कि इस शिक्षण नीति से इंसान डॉक्टर और इंजीनियर तो बन सकता है, लेकिन एक आदर्श मानव नहीं बन सकता। लेकिन अगर जब बात करें तपोवन पद्धति से, तो वो जो पद्धति है वो भावलक्षी, अध्यात्मलक्षी एवं जीवन लक्षी थी। लेकिन आज की जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो केवल वित्तलक्षी एवं सुविधा लक्षी तक ही सीमित है। इसी कारण से आज मानव बड़े बड़े प्रौद्योगिक विकास करके चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों पर तो पहुंच गया है, लेकिन वो पृथ्वी पर ही किस तरह से व्यवस्थित रूप से जीवन जिया जाए वो उसके लिए प्रश्न चिन्ह है। तो सबसे चीज ये होती है कि जो शिक्षा प्रणाली वो इस तरह से होनी चाहिए कि वो आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों रूप में जो है मानव के लिए उपयोगी हो। अगर जो हम बात करें श्री अरविंद घोष जी की, उनके अनुरूप जो शिक्षा प्रणाली थी वो कहते थे कि शिक्षा प्रणाली इस तरह से होनी चाहिए कि वो मस्तिष्क एवं आत्मशक्ति दोनों का सृजन कर सके। इसके अलावा व्यक्ति के अंदर संस्कार एवं चरित्र का सिंचन कर सके। साथ ही वो यह भी बोलते थे कि जो शिक्षा है वो मानव के भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली होनी चाहिए। इसके साथ साथ विद्यार्थियों को कर्मशील एवं अध्ययनशील बनाने वाली होनी चाहिए। तो इनके वैचारिक अनुसार है कि जो इंसान है वो भौतिक जीवन जीते जीते ही आध्यात्मिकता के अलग स्तर तक जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि वो अपने आंतरिकता के अंदर छुपे हुए जो गहन विचार हैं, जो आंतरिक आत्मज्ञान है उसको जाने, उसको पहचाने, और तभी जो है वो आत्मज्ञान के अलग अलग स्तर पर जा सकता है। इसके अलावा उनके अनुसार शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए कि हमारे उपनिषदों में दिए हुए अहम ब्रह्मास्मि की भावना को साकार करे, ताकि इंसान ये जान सके कि वो पूर्ण सक्षम है एवं सभी कार्य को वो अच्छे ढंग से कर सकता है। इसके अलावा वह विज्ञान को भी शिक्षण का एक अभूत अंग मानते थे। उनके अनुसार ब्रह्मांड एवं विश्व को जानने के लिए, उसकी क्रियाविधि को समझने के लिए विज्ञान काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, विषय है। इसीलिए उन्होंने विज्ञान को भी उतना ही महत्वपूर्ण माना है शिक्षण नीति में। इसके साथ साथ वो नैतिक एवं व्यवहारिक शिक्षा का भी काफी भार दिया है। उनके अनुसार किसी भी विद्यार्थी को अगर जो अनुशासन सिखाना है, उसके अंदर नैतिक मूल्यों की स्थापना करनी है, तो उसके लिए नैतिक एवं व्यवहारिक शिक्षा की जरूरत है। उनके अनुसार अगर जो शिक्षा में नैतिकता एवं व्यवहारिकता नहीं है और वो शिक्षा अगर जो मानव ले रहा है तो वो हानिकारक है उसके लिए। इसीलिए उन्होंने इस तरह से विज्ञान, नैतिक मूल्यों एवं अलग अलग अनुशासित विद्या पद्धतियों की जो है चर्चा की हुई है। साथ में अगर जो हम बात करें मनोविज्ञान, मानव चेतना की, तो श्री अरविंद घोष के मुताबिक मन, बुद्धि, पदार्थ ये तीनों अलग अलग नहीं है, बल्कि सारी चीजें जो है अपने अनुवर्ती पूर्वगामी आयामों से जुड़ी हुई है। और जो आत्मा है, मानव चेतना रूपी जो आत्मा है, वो इन सबके ऊपर इनका कंट्रोल कर रहा है। जिस तरह से अगर जो हम भगवत गीता की बात करें, वहां पर आध्यात्मिक शरीर की बात कुछ इस तरह से है कि जो रथ है वो पूरा शरीर है, घोड़े इंद्रियां हैं, लगाम मन है, एवं सारथी बुद्धि है, तथा उस पर चढ़ा हुआ व्यक्ति जो है वो आत्मा यानी कि जीव आत्मा है। तो जिस तरह से उन्होंने ये चीजें कही हैं कि मानव जो है अपने इंद्रियों एवं मन को संयम में रखकर जो है जीवन के हर एक आयामों तक मतलब हर एक आयामों में विकास साध सकता है। एक बार जब इंसान अपने आप को ईश्वर से एकाकार कर ले, तो सारे सृष्टि में जो है, चाहे वो निर्जीव वस्तु हो चाहे वो सजीव वस्तु हो, वो हर किसी में ईश्वर के दर्शन कर सकता है। ऐसा प्रत्यक्ष जो है श्री अरविंद घोष जी के साथ हुआ था। इसी कारण से वो इस चीज पर जो है ज्यादा भार रखते हैं। इसके साथ साथ उनके हिसाब से ज्ञान की परिभाषा यही थी कि अविद्या में विद्या, भोग में त्याग एवं संसार में संन्यास ही ज्ञान का सर्वात्मिक भौमौतिक जो है कार्य है। हाँ, इसके अलावा अगर जो हम उनके अनुसार शिक्षक की बात करें, तो वो हमेशा ये मानते थे कि शिक्षक और गुरु है उसका किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। किसी व्यक्ति विशेष को उसके जीवन में ज्ञान से पोषित करने के लिए एक गुरु एवं शिक्षक का काफी बड़ा योगदान होता है। उनके हिसाब से जो शिक्षक है वो एक केवल प्रशिक्षक नहीं है, बल्कि उसे विद्यार्थी का एक मार्गदर्शक एवं सहायक के रूप में कार्य करना चाहिए। इसके साथ ही उसका कार्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि ज्ञान कहाँ से मिल रहा है वो रास्ता बताने का भी जो
योगदान है वो शिक्षक का होना चाहिए। साथ ही साथ जो शिक्षण पद्धति है उसकी उत्कृष्टता जो है वो शिक्षक के ऊपर आधारित होती है। एक आदर्श शिक्षक का कार्य केवल अपने द्वारा अपने जीवन में उपार्जित किए हुए ज्ञान को अपने विद्यार्थियों के ऊपर थोपना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के अंदर जिज्ञासा को जागृत करना एवं तत्पश्चात उस जिज्ञासा को खुद तृप्त करना, ये शिक्षक का सबसे पहला अभिगम होता है। साथ ही शिक्षक जो है पहले स्वयं पूर्ण प्रशिक्षित होना चाहिए, तत्पश्चात वो विद्यार्थियों को ज्ञान देने योग्य हो सकता है। इसके साथ ही मैं निष्कर्ष पे आता हूँ। तो श्री अरविंद घोष ऐसे अन्य कितने ही ऐसे महर्षि जो हमारे भारतवर्ष में हुए हैं, उन सब के पीछे का यही कारण था, यही गोल है कि सभी जो व्यक्ति हैं वो भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिक लेवल की जो चीजें हैं वो भी सीखें, ताकि वो केवल डॉक्टर एंड इंजीनियर और कुछ नहीं, बल्कि वो एक आदर्श इंसान भी बने और ताकि वो अपना जीवन जो है पूर्ण रूप से जी सके। इसके साथ साथ श्री अरविंद घोष जी ने अनेक ऐसे सामाजिक सुधारक कार्य किए हुए हैं जो आज आधुनिक युग में मानव के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। आज इंसान अलग अलग ओके ठीक है, तो बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद सभी का। आपने काफी कुछ बताया है जी, उसमें लिटरेचर भी तो किया ही होगा जी मैम, देखा है, और ये भी है कि आजकल एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन बहुत चल रहा है जी, डिफरेंट स्टाइल ऑफ थिंकिंग आल्सो हमें का जो बताया आपने कि आजकल की जो सिस्टम है उससे कितना अलग है। जी मैम, चीजें इसी तरह से हैं कि हम अगर जो प्रैक्टिकली देख रहे हैं, प्रैक्टिकल भी चीजें हो रही है, साइंस की बात करते हैं उसमें प्रैक्टिकल जरूरी है, थ्योरेटिकल चीजें भी जरूरी होती है, लेकिन इसके साथ साथ इंसान भावनात्मक रूप से भी जुड़े। मतलब चीजें ये है कि आज इंसान बड़ी बड़ी मशीनरी बना रहा है, जैसे मैंने आगे बोला कि चंद्रमा पे चला गया, ग्रहों पे चला गया, लेकिन हम पृथ्वी को दूषित कर रहे हैं, जहां पर हमारे स्थान हम उसे दूषित कर रहे हैं। इसके अलावा कोई बड़े लेवल पे, लेकिन वो घर में, उसके घर में अशांति पड़ी हुई। मतलब जब तक इंसान अपने मन को कंट्रोल नहीं करता, वो चाहे जितनी बड़ी मशीनें बनाए वो उसके लिए काम की नहीं। तो सबसे पहले अपने मन को काबू करना आवश्यक है, और सभी विद्यालयों में शिक्षा ये देनी चाहिए कि वो मशीनरी पे तो कंट्रोल करे, लेकिन इसके साथ साथ खुद पर भी नियंत्रण करे। Thank you, Karthik Shukla ji. It was so nice. It's so nice to hear students also speak so much about Aurobindo. Next, we have Dr. Ved Vyas Dwivedi ji, and he'll be giving the paper presentation. थैंक यू मैडम। लो मुझे दे दो, मुझे दे दो, कोई चिंता नहीं। माउस है किधर? माउस इधर। नहीं यार, लो ये माउस नहीं चल रहा था। ये फोन कर दो ना। अरे छोड़ दो, छोड़ो। नहीं क्यों हो नहीं रहा है? स्क्रीन शेयरिंग हो तो रहा है। अभी शेयर कर दो। ये है कहाँ पे? नहीं वो डाउनलोड में ही करो तुम। चलेगा नहीं मेरे इधर रख दो, इधर ये ओपन कर, ये ओपन कर ना, ये रख दो बस। छोड़ दो लीव इट। अरे उधर आना चाहिए। अरे नहीं आ रहा तो छोड़ दो। टाइम जा रहा है। हाँ ये रख दो, एक मिनट ना, एक मिनट रख दो। ये फोन कर दो। धन्यवाद। ये क्लिक कर दो। इनका कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट में छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं, इससे हमें बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो भी श्री अरविंदो थे, और जब टेक्नोलॉजी है तो भी श्री अरविंदो हैं, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको छोड़, कहाँ गया, ऐसे छोड़, ठीक है।
हमारा टॉपिक भले दृश्यमान नहीं है, लेकिन ये भारतीय उच्च शिक्षा पर आधारित है। उच्च शिक्षा कैसी होनी चाहिए, आज के जमाने में, मॉडर्न जमाने में उच्च शिक्षा का क्या रोल है, और उच्च शिक्षा की उत्पादकता बढ़ाने के लिए दो शब्द हैं यहाँ पे। एक है उत्पादकता, हो गया, एक है उत्पादकता जिसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं, और दूसरी है क्रिएटिविटी। तो मॉडर्न जमाने में प्रोडक्टिविटी पे ज्यादा महत्व दिया जाता है। उदाहरण के लिए मैंने एक टेबल बना दिया, टेबल मार्केट में बिक रहा है और तो उसकी प्रोडक्टिविटी हो गई। सभी मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं, इसलिए जानबूझ के हमने यह टॉपिक आर.के. शाह साहब के आदेश से लिया था। दूसरा है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के लिए कोई टेबल की जरूरत नहीं है। जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ विद्वान बैठे थे, ज्ञानी जन, उन्होंने आपको यह परामर्श दिया, यह आदेश दिया, यह शिक्षा दिया, यह दीक्षा भी दिया कि मैं बहुत अच्छा संगीतज्ञ। यह क्रिएटिविटी क्यों? क्योंकि संगीत, मैं स्वयं संगीत बन जाता हूँ, क्रिएटिविटी है। लेकिन जब मैं टेबल बना रहा हूं तो मैं टेबल नहीं बनता हूं, टेबल अलग है और मैं अलग, इसलिए वो प्रोडक्टिविटी में चला जाता है, उसको उत्पादकता कहते हैं। और क्रिएटिविटी सर्जनात्मकता, अर्थात आप सर्जन के साथ जुड़ जाते हो और सर्जक के साथ जुड़ जाते हो। तो मैंने टॉपिक ऐसा कुछ लिया था जिससे आपको कुछ मैसेज दे सकूं। सर हमारा ये पेपर प्राइज के कंपटीशन में नहीं आता है, राइट, इसलिए इसका इवेल्युएशन उस तरह से ना करें, इसको केवल ग्रहण करें। इसलिए हमने एक पेपर लिखा जिसका टाइटल है 21वीं सदी के परिप्रेक्ष्य में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों का संचालन और संवर्धन। ध्यान रखिएगा, संचालन तो बहुत आसान है, आपने ये सब टेबल अरेंज कर दिया, अच्छा हॉल कर दिया, संचालन चल रहा है, लेकिन इसका संवर्धन, यहां से जब आप बाहर जाएंगे, जब इसको जीवन में उतारेंगे तो उसका संवर्धन होगा। इसलिए इसका मैं केवल जो एब्स्ट्रैक्ट है वो आपके सामने थोड़ा सा पढ़ दे रहा हूं, श्री अरविंदो जी की दृष्टि में। आत्माओं को, मैं यहाँ शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन के दो भाग होते हैं। पहला भाग है उसका आंतरिक भाग और दूसरा है उसका बाह्य भाग। आंतरिक भाग की मैं बात कर रहा हूं, बाह्य भाग की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आत्माओं को लिंग, जाति, देश, विश्वास, यहाँ विश्वास यानी बिलीव्स, फेथ या ट्रस्ट नहीं, विश्वास। विश्वास जो है पूरी तरह से श्रद्धा से अलग है। मैं आंख बंद करके सुबह, जब आप शायद सूर्योदय से पहले उठते होंगे तो शायद जब हम नल खोलते हैं और पानी नहीं आ रहा है तो आपका विश्वास डगमगा जाएगा, लेकिन माँ के चरण छुओगे तो आशीर्वाद अवश्य आएगा। यह श्रद्धा है। तो श्रद्धा और विश्वास की यहाँ दो बातें हैं, इसलिए शब्द का उपयोग किया गया है विश्वास, और इस पर आधारित जो संबंध हैं, व्यवहार हैं, उनका परिचय नहीं होना चाहिए। क्यों? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम किसी आंतरिक संरचना की बात करते हैं, जहां पे संवर्धन और जहां पे सर्जनात्मकता आती है, वहां पे प्रोडक्टिविटी नहीं आती। और चूंकि प्रोडक्टिविटी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, इसे हमें बाहर से आंतरिक यात्रा और अंदर से वापस बाहर की यात्रा करने पर बाध्य होना पड़ता है। दूसरा इसका जो परिप्रेक्ष्य है इस पेपर का, वो ये है कि जो गवर्निंग बॉडीज हैं, जो पेरेंटिंग है, जो अथॉरिटीज हैं, जो प्रशासन है, उसकी गुणवत्ता। यहाँ गुणवत्ता अर्थात क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि गुणवत्ता के आधार पर ही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जो हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूलभूत एक सिद्धांत है। इसके बाद हमने इस पेपर में सारा परिचय दिया है, ये सभी के लिए वेबसाइट पर रखा जाएगा, जिसे आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर दो बातों की चर्चा की गई है। एक इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दूसरा है क्वालिटेटिव प्रोडक्टिविटी ऑफ द लर्नर्स, नॉट स्टूडेंट्स। इस पूरे पेपर में कहीं विद्यार्थी नहीं है, लर्नर्स, सीखने वाले। हम सब सीखने में, चाहे वो शिक्षक क्लास में सिखा रहा हो वो भी शिक्षक है, और विद्यार्थी क्लास में सीख रहे हैं वो भी शिक्षक है, वो भी लर्नर है, सीख रहे हैं। इसलिए लर्नर्स की व्यवस्था की गई है, लर्नर्स के बारे में चर्चा की गई है।
आदरणीय श्री अरविंदो जी के सिद्धांत में। इसके बाद आपके पारिवारिक संरचना को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के अंदर क्या परिवर्तन किए जाने चाहिए, उसके बारे में भी एक पैराग्राफ जो आपका साइकोलॉजी इवेल्युएट करता है, जो आपका इंटरनल इवेल्युएशन करता है, इसके बारे में बताया गया है। वर्तमान जो परिदृश्य है, जो प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस हैं, उनके बारे में भी चर्चा की गई है कि किस तरह से राधा कृष्णन जी से लेकर के और आज की NEP 2020 तक कि किस तरह की भारतीय शिक्षा की प्रोडक्टिविटी रही है, किस तरह से उन्होंने अपने अपने समय में अलग अलग पॉलिसीज बनाए, उस पॉलिसीज में एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के, इंटरडिसिप्लिनरिटी को लेकर के, ह्यूमन वैल्यूज को, इंक्लूसिव एजुकेशन को, या किसी भी अदर एस्पेक्ट्स को किस तरह से कवर किया गया है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की हुई है। हिंदी में लिखने के पीछे अगेन आर.के. शाह साहब का ही निवेदन था, तो इसको हिंदी में लिखने का प्रयत्न किया। कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है टाइपिंग में। 21st सेंचुरी के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या प्रावधान होना चाहिए, उसके बारे में चर्चा यहाँ पे की गई है। उसके लिए किस तरह से एंट्री क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस तरह से एग्जिट का होना चाहिए, और इंटरनल प्रोसेसेस में इम्बैलेंसेस कैसे कैसे हैं, किस तरह से बायसिंग है, लॉबिंग है, किस तरह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, किस तरह से उनको खत्म किया जाए, उनको समाप्त किया जाए, उसकी भी चर्चा की करने का प्रयत्न किया गया है। यहाँ पे सॉफ्ट स्किल, टेक्निकल स्किल दोनों की चर्चा की गई है, जिससे कि विद्यार्थी का चहुंदिश विकास संभव है। इसके बाद एक एनालिसिस प्रेजेंट की गई है शब्दों के माध्यम से। एनालिटिकल स्टडी है ये। बहुत सारे लोगों पे सर्वे किया गया था, लगभग 524 लोगों पे सर्वे किया गया था, जिसमें 28 से ज्यादा वाइस चांसलर उनकी स्टडी की गई है। लगभग 12 या 14 रजिस्ट्रार हैं और लगभग 100 से ज्यादा प्रिंसिपल्स एंड डायरेक्टर्स हैं भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों के, चाहे वो ओपन यूनिवर्सिटी हो, रेगुलर यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, या इंस्टीट्यूशन ऑफ इम्पोर्टेंस है, किस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी में से डेटा लेकर के यहाँ पे हमने शब्दों में दिया है। मैंने स्टैटिस्टिक्स यहाँ जानबूझ करके आपको नहीं दिखाया गया है। SPSS सॉफ्टवेयर के थ्रू उसका एनालिसिस किया गया है, तो जो इस फील्ड के ज्ञाता हैं वो समझ सकते हैं इसमें क्या दिया गया है। इन संस्थाओं HEI अर्थात हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो 21st सेंचुरी के लिए अपने आप को बताते हैं कि हम क्वालिटेटिवली बहुत ही एक्सीलेंट हैं, उनके लिए एक चैलेंज है यहाँ पे। उनके इंटरनल चैलेंजेस क्या क्या हैं, उनको कैसे कैसे सरपास करना है, उनको कैसे अवॉइड करना है, सॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है, उसके लिए भी कुछ यहाँ पे सजेशंस दिए गए हैं। और ये सारे सेंटर्ड हैं श्री अरविंदो जी की विचारधारा से, उनकी विचार शैली से मेल खाते हुए। HEIs हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का ध्येय क्या होना चाहिए और उनकी भविष्यगत दृष्टि कैसी होनी चाहिए। विजन नहीं, उनकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए। विजन तो बहुत ही छोटा शब्द बन जाता है, लेकिन भविष्यगत दृष्टि, फार साइटेडनेस भी नहीं, दृष्टि स्वयं में अलग है। तो दृष्टि कैसी होनी चाहिए, जैसे मेरी दृष्टि में यह बहुत सुंदर है। अगर आपको मैं बोलूं कि अगले 5 मिनट तक ग्रीन कलर कितने हैं, तो आपको रेड कलर दिखाई नहीं देगा, आप ग्रीन कलर देखना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपकी दृष्टि जो है ना बहुत ही कुंठित हो गई। तो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की दृष्टि कैसी है, कुंठित है या अकुंठित है, इसके बारे में यहाँ पे बताने का प्रयत्न किया है। भविष्य में उनकी कैसी होनी चाहिए, सोच कैसी होनी चाहिए, दिशा कैसी होनी चाहिए, दशा के हिसाब से दिशा परिवर्तन कैसे किया जाना चाहिए, इसके ऊपर भी कुछ दिए गए हैं, जिसमें जेंडर बायस को भी सम्मिलित किया गया है। टाइमलाइन दिया है कि अगले 35 सालों में 15 वर्षों में अर्थात 2035 तक किस तरह से हम भारतीय शिक्षा पद्धति को इंप्लीमेंट करके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को आगे की ओर ले जा सकते हैं। और कुछ चुनौतियां जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ट्राई किया है 8 से 10 भागों में डिवाइड करने के लिए। आप पढ़ सकते हैं, इसके अंदर सारा विवरण हमने दे रखा है। आपको पता है अभी रिसेंटली दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी में 56 वर्षों के बाद एक महिला वाइस चांसलर हुई, इतने वर्षों के बाद।
क्या आप कह सकते हैं कि भारत में सशक्तिकरण है? ये कटाक्ष यहाँ पे किया गया है और इसमें उदाहरण के साथ हमने दिया है। केवल 6% महिलाएं आज भारतवर्ष की यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर। कितनी प्रतिशत? मैं डिक्लेयर करता हूं, आप मेरा नाम भी लेकर के कह सकते हैं, केवल 6%। भारत में 1000 से ज्यादा, लगभग 1072 विश्वविद्यालय। अभी आप गूगल करके चेक कर लो कितने प्रतिशत महिलाएं वाइस चांसलर। क्यों? ये हम भारत की दशा की बात कर रहे हैं, लेकिन श्री महर्षि अरविंदो इस से सहमत नहीं है। सारांश में पढ़ना चाहूंगा। शिक्षाविदों में बहुआयामी रचनात्मक अनुसंधान और नवाचार, प्रशासन, परीक्षा, शैक्षिक मामलों में प्रवेश, गवर्नमेंट से पब्लिक टू प्राइवेट टू मॉडल में प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार, इस पेपर में चर्चित किया गया है। स्मृति भोसले ने 2014 में कहा था कि किस तरह से हम आईसीटी का इम्प्लीमेंटेशन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कर सकते हैं, और ये अभी आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, उस समय उन्होंने बताया कि आज लगभग 90 वर्षों पहले अरविंदो आश्रम में भी कहा गया था कि किस तरह से सोलर से हमारा सिस्टम चलेगा, तो हम किस तरह से फार साइटेडनेस में जा सकते हैं। फिर ई एजुकेशन के ऊपर भी हमने थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताने का प्रयत्न किया है। वैश्वीकरण अर्थात इंटरनेशनलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन किस तरह से अचीव किया जा सकता है, किस तरह से कोर्सेज में प्रोविजन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह से एडॉप्ट करनी चाहिए और हमें उसके लिए किस तरह से एडेप्टेबल होना चाहिए, इसके बारे में भी यहाँ पे लिखा है। बस इन्हीं शब्दों के साथ समय पूरा होता है। संदर्भ सूची यहाँ लिखी हुई है। आप सभी को बहुत बहुत जी। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए कोई भी प्रश्न
एक सेकंड बेटा, एक सेकंड बेटा। हाँ बस एक सेकंड बेटा। तो सेकंड लिखा हुआ है। सर तीन लोग चार सामने कर सही है ना? हाँ बस बोली मैंने। We begin. A warm welcome to one and all. We have now reached the valedictory session, and for the session, I would like to call upon few dignitaries on the dais. Executive President, Indus University, Dr. Sandeep Chakravarti. Executive Vice President, Indus University, Dr. Ved Vyas Dwivedi ji. Registrar, Indus University, Dr. R.K. Singh ji. Conference Secretary, Dr. R.K. Shah ji. IMS HOD and Conference Secretary of today's National Conference, Dr. Neera Verma. Yes. I request Sharad Joshi sir also to please come on the dais. We move on to the much awaited moment, that is the prize distribution, and I'm sure prize and certificate distribution, I'm sure all must be awaiting with a lot of hope. This conference, national conference, we had around 250 papers, 250 papers which were received.
We really appreciate the work of all the research scholars and the doctorates, academicians who joined and wrote papers for this national conference. Today we had around 70 papers for presentation, which was on online mode as well as offline mode. Offline mode we witnessed over here, and online mode was at Bhavat building at Indus University in 4 or 5 rooms. And post that, now we have come up with the final prizes. So online and offline together has been taken into consideration. We thank all the judges who were there. I would like to name the judges also: Dr. Chandni Shah, Dr. Sonali Chen, Dr. Richa Verma, Dr. Rachna Patel, Dr. Rajesh Kili, Dr. Nirali Dave, Dr. Dipesh Dasani, Dr. Dharmil Patel, Dr. Manisha Ubale, Dr. Deepti Sethi, and Dr. Rajesh Oza. These were our judges for the day. So we move on with the third prize first, right? The prize and certificate. So the third prize, I'm going to give third, second, and first. I'm going to announce like that. The third prize goes to Dr. Rajni Chaudhary. The second prize goes to Kartik Shukla. They get cash prize as well as certificate. And the first prize goes to Chauhan Prashant Trilokinath. So indeed, a commendable presentation. Congratulations to the winners, to the 3 winners. Thank you. He wins a cash prize of 5,000 rupees. So that's thank you. Thank you, sir. Would you please take a seat here, Ruby? Now I like to please. Now sir, Charan sir. We're just closing. Now we come to the closing, and just before vote of thanks, I would like to call upon one of the most popular faculty and able administrator of Indus Institute of Management Studies, none other than our HOD IMS, Dr. Neelam Verma. Yes, yes. The class says all. He's also the conference secretary of today's national conference, and his motivation and excellent supervision was seen throughout the day. I welcome him to address and say a few words to us. Thank you, gentlemen, for giving me this opportunity. Thank you all, dear my students, to be here from the morning to till evening and keeping my words with you. Thank you. This is my second conference as a conference secretary. Earlier it was, first conference was at Rawal Institute of Management in Faridabad. That was international conference. We have organized that with Ramanujan College Delhi and YMCA Delhi.
At that time, I was also conference secretary, and the motivation which I am getting from the student in the same way I am getting today. So thank you for that. And with the help of this conference, we have showcased our strength, that how much we can do, how better we can do. And this is one of the showcase through which we have shown our strength. So thank you from my side, and I would like to call R.K. Saha sir for the final vote of thanks. Please, sir. Respected sirs and students, faculty, सर वॉट ऑफ थैंक्स से पहले मुझे आपको थैंक्स कहने से पहले एक छोटी सी बात ये कहनी थी कि हमने जो सोचा था कि स्टूडेंट की तरफ से ये सब पेपर रीडिंग हो, पेपर सबमिट हो, इसकी जो शुरुआत हुई है वो देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसके लिए तो मैं आपके लिए सभी फैकल्टी और सबसे थैंक्स कहता हूँ। दो तीन दिन से बहुत कुछ काम किया है और इतना अच्छा माहौल मैंने 38 ईयर मेरी ये कैरियर हुई है, इसमें इससे अच्छा कुछ नहीं देखा है। ऑल फैकल्टी, नॉट ओनली IIMS, ऑल फैकल्टीज, पूरी यूनिवर्सिटी की सभी फैकल्टी ने बहुत ही जो सपोर्ट दिया है इस प्रोग्राम को, उसके लिए भी उनको सब मैं थैंक्स कहता हूँ। पारिता है एक हमारे ये यहाँ बैठी हुई है, उसको काफी मैंने स्ट्रेस दिया है, तो सॉरी के साथ उसे मैं थैंक्स कहता हूँ। और सर एक आपको बताएं, ऊपर से आज ही तुरंत ये सब देखा, ग्राफिक्स देखा, तो इसे बुलाया गया स्पेशली वहां से सेक्रेटरीट से कि ये लड़की को ये किसने किया। मैंने कहा ये एक लड़की है, तो जयेंद्र भाई को काम दिया कि उसको जरा मिल के आई है, वो हमारे लिए भी कर सकती है क्या। दिस इज द प्राउड फॉर द इंडस यूनिवर्सिटी। इतना हर काम को वो इतनी अच्छी तरह से, अब ये ग्राफिक्स का काम इतना तकलीफ वाला होता है कि कोई कहता है नहीं यूं करो, कोई कहता है वैसे करो। मैं इसके पास ही बैठ जाता था, इसको बहुत इरिटेट होता था कि सर हाथ बैठे, मैं मेल कर दूंगी, इसको आदत है मेल कर दूंगी। मैंने कहा नो मैं तुम्हारे पास ही बैठता हूँ। तो 2-3 घंटे तक बैठने के बाद फिर वो कहती थी अब सर मैं अप्रूवल लेने के बाद आपको भेजूंगी, तो वो भी करती थी। तो थैंक्स परिता। और मैंने सबसे ज्यादा हमें जो सपोर्ट मिला है सिंह सर एंड संदीप सर, अगर उन्होंने इस तरह से सपोर्ट नहीं दिया होता तो ये नहीं हो सकता था। कल रात को मैंने एक मैसेज किया था दोनों को कि सर एक बैड न्यूज, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं आ सकते हैं। तो संदीप सर ने मुझे जो 2-3 लाइन्स भेजी थी वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं आ रहे हैं तो हमारा प्रोग्राम तो रन हो गई जैसे होना था। तो मुझे लगा कि ये इतना सपोर्ट हमें मिल रहा है, कोई नहीं आ रहा है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे कैसे नहीं आ सकते हैं। अब इतना सब करके बैठे हैं और फिर कहें कि नहीं आ रहे हैं ये तो थैंक यू सर ये सब चीजों के लिए। आप लोग कभी भी आके कह देते हैं डोंट वरी हम सब है। और वेद व्यास सर के लिए उनको थैंक यू कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, और वे सपोर्ट में होते हैं। मनीषा मैडम को सर मैं अलग से इसलिए याद करना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत मनीषा मैडम से हुई है इस प्रोग्राम के। उन्होंने कहा कि सर ऐसा यहाँ एक सिस्टम है, हम कहीं से एक एजेंसी लाए ये सब करें। वो भी साथ में जुड़ना चाहती थी पहले से, हमारा प्लान तो ऐसा ही था कि सब लोग साथ में एक ये कार्यक्रम करें, प्रोग्राम करें और इसके बाद इसके बेस पे काफी वो करें। तो आप सभी को मैं ये जितेन भाई और जो IT सेल ने हमें सपोर्ट दिया है, जितेन भाई आपने ये तो मुझसे परेशान हो गए तो थैंक यू जितेन भाई। ऐसा कभी इसलिए हुआ है कि मेरी नॉलेज कम है और जिसकी नॉलेज कम है उस आदमी के साथ काम करना होता है तो ऑब्वियसली आपको तकलीफ ज्यादा होती है, तो आपको ज्यादा तकलीफ हुई होगी इसके लिए। तो इसके लिए भी आपको मैं सॉरी भी कहता हूँ और थैंक्स भी कहता हूँ। और सर एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि आज सुबह जैसे जयंती रवि मैडम ने ये कहा था कि पहले भी उन्होंने कहा था कि मैं इंडस यूनिवर्सिटी के साथ काम करना चाहती हूँ। एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए इच्छा चांस था ये, और आज ये हुआ कि उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स फैकल्टी नागेश्वर को भी उन्होंने इनवाइट किया हुआ है
बहुत सुंदर जगह है अरोविले, मतलब एक स्वर्ग है अलग से, जैसे वो बता रहे थे वो मुझे भी पता है कि वहाँ, और हमारे स्टूडेंट को जैसे हमने नॉर्थ ईस्ट में भेजा था वैसे स्टूडेंट को भी हम वहाँ थोड़ा तैयार करके भेजेंगे। ये मेरी भी प्रॉमिस है आप लोगों को कि मैं आपको जरूर लेके जाऊंगा वहां पर। फैकल्टी को भी सर मैंने 98 में एक वो मुझे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने तमिलनाडु में भेजा था इस काम के लिए, जैसे वो सर इस सर बता रहे थे कि वहाँ का टीचिंग सिस्टम क्या है। तो वहाँ एक अलग सिस्टम है सर, पौंडीचेरी में तो अलग है, और पूरे तमिलनाडु में, पौंडीचेरी के बाद तमिलनाडु में पूरा ये इम्प्लीमेंट किया गया है। आप सभी टीचर को, वो मैडम वहां गई थी वाडिया मैडम, उसको मैंने सजेस्ट किया था जस्ट एक स्कूल को जरूर जाना, आप वहां जा रहे हैं तो। बिल्कुल एएलएम मेथड है वहाँ, एएलएम एक्टिव लर्निंग मेथड, और उसमें वहां मैं करीबन 1 वीक रहा था। बहुत सारी 20,000 स्कूल में इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, और मैंने भी बहुत जगह बहुत ही स्कूल का विजिट किया था। उस सिस्टम को समझ के एक पेपर तैयार हुआ था, एक पॉलिसी बनी थी कि यहाँ गुजरात में भी हम इम्प्लीमेंट करें। फिर चेंज हो गया, गवर्नमेंट चेंज होती है तो सब कुछ चेंज हो जाता है, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ क्या होता है। पर हम लोग भी टीचर्स एक आध बार जाएंगे सब वहां पर, और थोड़ी स्कूल का विजिट करेंगे, चाहे वो तो अपने हमारे यहाँ से, और मैडम ने कहा है तो आप फिक्र ना करें कि कोई और प्रोजेक्ट में तकलीफ होगी या वहां से नहीं होगा, मैं उनको जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से। दिस इज माई ऑल्सो एक प्रॉमिस है कि आप सबको स्कूल देखनी है, और ये बच्चों को इसलिए दिखाना है कि इनके बाद वाली जनरेशन को कैसे पढ़ना चाहिए वो उन्हें पता चले, और हमें तो पता चले कि हमें कैसे पढ़ाना चाहिए। एक्टिव लर्निंग मेथड एएलएम फेमस सिस्टम है, सभी प्राइमरी स्कूल्स, हायर सेकेंडरी 12th तक इम्प्लीमेंट हो गया है। अब हायर एजुकेशन में वो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो यहाँ भी हम कुछ कर पाएंगे। तो आप सबको फिर से सभी का कहीं मेरा मैं नहीं पहचानता हूँ और नाम रह गया है तो मुझे माफ कर देना, और आप सबका मैं फिर से थैंक्स कहता हूँ। मैडम सब फैकल्टी का, अरे वो तो सब फैकल्टी तो हम लोग एक दूसरे को क्या थैंक यू कहेंगे, पर फिर भी एक लास्ट, आप सबके हृदय में जो परमात्मा है उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए, ये थैंक यू का सबसे बड़ा वर्ड है। That was a very humble vote of thanks by Dr. R.K. Shah sir. And I would like to add only just 1 or 2 lines, that because of his meticulous planning and coordination, this program was successful. He coordinated with all the dignitaries, and today it was a very great success. Thank you, Shadi. Thank you very much. Now we move on. The last part, that is the national song. I would like all of you to stand, please. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujala Sufala, Malayaj Sheetala, Sasya Shyamala Mataram, Vande Mataram, Shubhrajyotsna Pulakitayamini, Pullakusumita Drumadala Shobhini, Suhasini Sumadhura Bhashini, Sukhadam Varadam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Thank you very much to all the dignitaries, faculty members, and to all the students for your presence. Thank you.
Recording stopped.